इस चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। चलिए नए भारत के निर्माण में आपको साथ में आना है, आइए हम सब साथ में मिलकर 140 करोड़ की जनसंख्या नया भारत का निर्माण करें और विकसित भारत बनाए। माननीय समीरुल इस्लाम। Sir, I have a question for Honorable Minister. Will the Minister be pleased to share the unemployment rate in the country? Will he inform this House about the challenges the government facing to control unemployment? Thank you. Thank you. साहब, बेरोजगारी को नियंत्रण करने का एक ही रास्ता है, देश में रोजगारी का सर्जन करो। और जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट रोजगारी के सर्जन के लिए एफर्ट ले रही है, इसलिए ही पिछले 5 साल में देश में बेरोजगारी कम हुई है। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी की बड़ी पैनी नज़र है, कौन कितना खाता पीता है सब कुछ। मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सवाल है, इसलिए भी कि इनका प्रेशर कुकर अद्भुत है आंकड़ा पकाने का। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप एम्प्लॉयड की बात करते हैं, इज द गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेटिंग टू हैव अ डेटा अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? थैंक यू। थैंक यू। मनोज झा साहब, उसमें कोई टेम्परेचर प्लस नहीं होता है। हम सरकार है, मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना हमारी जिम्मेवारी होती, यही मोदी जी ने हमें सिखाया है। देश में बहुत क्लियर है, फिगर जो आता है वो सिस्टम से आता है, मैकेनिज्म से आता है, और हमने बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाई है। सिस्टम से ही फिगर निकल के आते हैं। आप भी जाके हमारा LFPR डेटा देख सकते हो, आप भी VPR डेटा यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी देख सकते हो। सब डैशबोर्ड पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैसे गिरावट आई, ये सारा पब्लिकली उपलब्ध है। मनोज जी भी उसको जाके देख सकते हैं, और हम उसके लिए हमारा कमिटमेंट को व्यक्त करते हैं। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, माननीय श्री एस सेल्वागन बेथी। ऑनरेबल एस सेल्वागन बेथी। सर, क्वेश्चन नंबर 182। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. My first supplementary is the recent tragedy in Wayanad is an example of neglecting the recommendation of the Godgill Committee. The report recommended the complete ban on the use of genetically modified crops in the eco-sensitive zone 1 and 2 areas, and also stop to construct the railway projects and major road projects. The ecologically sensitive zones are filled with loose and red soil. If there had been a tree cover, the calamity could have been arrested or lesser. My question is, will the government formulate a device mission scheme to establish tree cover in such zones? Please be brief. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य का संबंध जो प्रश्न था वो फॉरेस्ट कवर को लेकर के था। जहाँ तक फॉरेस्ट कवर में डेवलपमेंट एक्टिविटी का विषय है, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने की एक प्रक्रिया है, और उस निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी फॉरेस्ट कवर का अगर में या वाइल्ड लाइफ एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है तो उसके अंतर्गत ही ये परमिशन दी जाती है। दूसरा, देश में लगभग 647 से ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन है, जिसके इको सेंसिटिव जोन निर्धारण करने की प्रक्रिया और राज्य सरकार के दिए गए सुझाव के आधार पर ये इको सेंसिटिव जोन की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा विषय मैं सदस्य को क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में वायनाड में कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस केवल एक दी गई, वो भी सैद्धांतिक स्तर पर 17 हेक्टेयर ज़मीन में कैनाल की दी गई, जिस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ, और केंद्र सरकार के द्वारा कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति पिछले 10 वर्षों में वायनाड के उस एरिया में नहीं दी गई जहां पर ये घटना घटी। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, in the Union Territory of Puducherry,
there is a land constraint to develop forest cover. Many government lands and temple lands available are not maintained. Therefore, will the government identify the vacant lands belonging to the government and the temples to establish tree cover with a native species and also provide special fund for such development and maintenance? Honorable Minister. जहाँ तक भूमि के संबंध में विषय है, भूमि राज्यों के स्वामित्व का विषय होती है और अगर किसी भी क्षेत्र का फॉरेस्ट डाइवर्जन होता है तो उसके संबंध में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और एनपीवी जो है उसके निर्धारण के आधार पर ही डाइवर्जन की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, पांडिचेरी में जहाँ तक फॉरेस्ट कवर की बात है, पांडिचेरी में 2017 में 53.67 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर था, जो 2019 में घटकर 52.41 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था, परंतु वहाँ पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और अन्य गतिविधियों के कारण फॉरेस्ट कवर बढ़कर के अब 53.30 ये 2021 में हुआ है और ये जो चिन्हित करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों के द्वारा अगर कोई नगर वन भी चिन्हित किया जाता है तो कैंपा के द्वारा फंडिंग की जाती है। Thank you. Third supplementary, Honorable Jairam Ramesh ji. Question to the Honorable Minister comes from Annexure 1 of his reply. Andaman and Nicobar Islands, the total area is 8,260 square kilometers. 83% of it is forest area. Now, we've been reading in the newspapers over the last couple of months that there is a huge mega project in Great Nicobar which is going to lead to a loss of thousands of hectares of good, rich forest, which is ecologically very sensitive. I'd like to ask the Honorable Minister, what is the status of this and what steps are going to be taken to prevent the loss of forest cover in an ecologically fragile and sensitive area of the country? माननीय उपसभापति महोदय, अंडमान निकोबार के जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा क्षेत्र सघन वन से आच्छादित है, वहाँ पर जो स्वीकृति दी गई है वो पर्यावरणीय जो स्वीकृति है उसके अनुकूल दी की गई है और स्वीकृति देने से पहले सभी विशेषज्ञों से वार्ता करके कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की ज़मीन का निर्धारण करके और विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र में बीएसआई, जेडएसआई जैसे जो हमारे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हैं जो वन्य जीवों के प्रजनन और बाकी विषयों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पे दी गई है, जिसका विवरण भी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार, fourth supplementary. Forest fire is one of the major factors for the depletion of forest cover in our country. As for the Forest Survey of India data, last year in FY 23-24, there were 12,114 major forest fires in the country. So I would like to know from the Honorable Minister, what is the government doing to prevent such forest fires which contributes to the depletion of forest cover? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, जहाँ तक फॉरेस्ट फायर का विषय है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सैटेलाइट सेंसर्स के द्वारा उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और सैटेलाइट बेसिस सर्वे के द्वारा हम फॉरेस्ट फायर का निर्धारण करते हैं। फॉरेस्ट फायर लगने के काफ़ी कारण हैं। स्थानीय स्तर पर जो मवेशी चराने हमारे लोग जाते हैं, उनके कारण, तापमान के कारण, कभी कभी दुर्घटना के कारण, कभी कभी कुछ जगहों पर इस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया है जो आग के लिए बड़े संवेदनशील तंत्र के रूप में काम करते हैं। इसके लिए हमने लगातार फॉरेस्ट एरिया में जहां पर ये फॉरेस्ट फायर लगती हैं पिछले 3 सालों में, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। इवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भी हम एक फायर लाइन का निर्धारण करने का निर्देश देते हैं। अगर फॉरेस्ट में फायर भी लगती है तो जो फायर लाइन क्षेत्र है वो 2 क्षेत्रों को अलग करने का कार्य करता है। हम इसकी सघन रूप से निगरानी करते हैं और आवश्यक जितने भी साधन हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। थैंक यू। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल एम थम्बी दुरई। Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Minister has given the list of the annexure. The forest areas is increasing and decreasing at a, especially small states, northern states, all the states, the decrease is there.
And also, if you take Pondicherry also, as he said, less is going on. Sir, in Tamil Nadu also, the increase is very less. The increase you have shown plus point, but it's less. I want to know from the Honourable Minister, what are the actions are going to take, especially Tamil Nadu like that? Deforestation is taking place in many places. There are illegal activities going on. That is what we have seen that. If the timbers are cutting in Tamil Nadu area, Please. it is the rain we are not able to get. Some floods are Be coming. brief, please. Whether government will take any action, advise the state Tamil Nadu government to take the action to increase the forest Thank you. area. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट क्षेत्र के बढ़ने के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो देश में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है वो मुख्य रूप से उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक उत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, 90%, 80% तक का फॉरेस्ट कवर है, वहाँ निश्चित रूप से विकास परियोजनाओं के कारण थोड़ी कमी दिखाई देती है। उसका कोई कारण अवैध रूप से फॉरेस्ट को काटना नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई के लिए हमने सख्त कानून बनाए हैं और अब हम उसकी मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से भी करते हैं। अगर कोई विशेष जगह या उदाहरण माननीय सदस्य को तमिलनाडु के संदर्भ में लगता है तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे संज्ञान के अंतर्गत लेकर के आए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 183 ऑनरेबल श्री हरीश बीरन। माननीय मंत्री जी। जी उत्तर सभा पटल पर रखें। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। So the convenience of movement and deployment of forces is one of the reasons why the elections are held in several phases, particularly even in state assembly elections. Now, sir, my question to the Honourable Minister through you is how is the deployment possible when elections are held simultaneously, and what are the costs involved in the said process? Thank you. उपसभापति जी, वन नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर के एक HLC गठित की गई। उसके करीब हाई लेवल कमेटी में 191 दिन में 65 मीटिंगें हुई। उसमें कई रीजन आए कि अपने को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने चाहिए। उसमें एक रीज़न ये आया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगने से डेवलपमेंट का काम रुकता है, और एक विषय ये आया कि खर्चा भी अधिक होता है और सुरक्षाकर्मी भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं बार बार। जो अभी सप्लीमेंट्री पूछा माननीय सदस्य ने, ये फोर्सेस कितनी लगेगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये विषय भी हमारी कमेटी के सामने आया। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर इस दिशा में देश को बढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी गई है और इसके जो क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है, जिनमें कई संविधान संशोधन और होने हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. Sir, the Honourable Minister in his reply has said that there are a number of constitutional amendments which might be required if one nation, one election is to be implemented. My question to the Honourable Minister is whether the government is planning to delete Article 356 from the Constitution of India for the said purpose. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, ये आर्टिकल 356 का इस क्वेश्चन से संबंध नहीं है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री पूछा माननीय सदस्य ने, उसका जो पहला पार्ट था उसमें हमारी हाई लेवल जो कमेटी रिपोर्ट ने 83 जो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करता है, आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, आर्टिकल 82A और आर्टिकल 3 to 4A और आर्टिकल 3 to 5, आर्टिकल 3 to 7
सेक्शन 5 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट 1991, ये ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एनसीटीडी की बात करता है। सेक्शन 5 ऑफ द गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, सेक्शन 17 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जैसे कुल 18 कॉन्स्टिट्यूशनल और रिलेवेंट कानूनों के संशोधन के रिकमेंड किए हैं। 356 इसमें इस कमेटी ने इसमें विचार नहीं किया। थैंक यू। माननीय श्री राजीव शुक्ला, थर्ड सप्लीमेंट्री। सभापति जी, जो मंत्री जी का जवाब है उसमें संक्षिप्त जवाब है, जिसमें कि रिपोर्ट सौंप दी, इसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं उनके हिसाब से कि अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर उसको जो है चुनाव उतनी अवधि के लिए कराया जाएगा। अब सपोज 4 साल चलने के बाद विधानसभा भंग हो गई तो क्या 1 साल के लिए चुनाव कराएंगे क्या? मेरा मानना है कि इसमें आप इस तरह का संशोधन करिए कि कोई हाउस डिजॉल्व ही ना हो 5 साल के पहले, तब तो संभव है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वरना नहीं संभव। तो मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ क्या इस दिशा में भी विचार करेंगे? और दूसरा, संविधान संशोधन करें तो कैसे संविधान संशोधन? एक ही सवाल। हाँ, एक ही में कौन से संविधान संशोधन? एक ही में 2 सवाल नहीं, एक ही सवाल। हाँ ठीक है, प्लीज। डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो एचएलसी की रिपोर्ट में ही इसका समाधान है। जो हमने एचएलसी की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपी है, उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देते हुए बताया गया है कि पहले चरण में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। उसके पश्चात दूसरे चरण में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव 100 दिन के अंदर होंगे और इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ये जो बात पूछ रहे हैं वो इस रिपोर्ट में ही है, कुछ के आगे पीछे अवधि होगी, लेकिन वो संविधान संशोधन के बाद होगी। थैंक यू। माननीय संजय कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोग भी इस कमेटी में जा करके अपने पार्टी के तरफ से इसके पक्ष में ही बात रखे थे कि इसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कब आएगा और अगला जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उस समय तक उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई उनका प्लान है कि नहीं? उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी को जब रिपोर्ट सौंप दी गई कमेटी के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में ही है। एक विषय में जो आपने उठाया मैं बताना चाहता हूं कि एचएलसी की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 62 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एविडेंस इनके सामने दिया, वो उपस्थित हुए। माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी पार्टी भी उपस्थित हुई। जो 47 दलों ने अपना फीडबैक दिया उसमें 32 जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में थे और 15 राजनीतिक दल ही 1 नेशन 1 इलेक्शन से असहमत रहे। पब्लिक डोमेन में ही है रिपोर्ट। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है उन पर विचार किया जा रहा है। थैंक यू। माननीय वीरेंद्र कुमार वैश्य। Thank you, Chairman, sir. 1 nation, 1 election, election reform is the call of the hour. We remember former Law Minister Dinesh Goswami Commission, Dinesh Goswami Committee, given a report regarding the election reforms long back, sir. I want to know from the Honorable Minister, his government is seriously thinking the implementation of recommendation given by the Dinesh Goswami Committee report. Thank you. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने सही कहा कि जितने भी रिपोर्टें हमारे पास आई थी, जैसे इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट 1983, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट और नेशनल कमीशन रिव्यू ऑन वर्किंग उनका इसकी रिपोर्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2018 की रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें हमने इस रिपोर्ट में अंकित भी की है, उनका उल्लेख भी किया है। इसलिए ही 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में रिपोर्ट दी गई है। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 184, माननीय श्री नारायण दास गुप्ता जी। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पे रखा गया। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे अवसर दिया आपने।
मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने दी है मेरे प्रश्न के उसमें। और एक जो आपने बताया कि जी टोटल इन 10 years 1733.97 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड जो है वो अप्रूव हुई है फॉर डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इंक्लूड्स दी हिल एरिया आल्सो। अभी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही लैंडस्लाइड हुए हैं, और इसका एक कारण है कि जो आपने लैंड जो हिल एरिया में ये जब डेवलपमेंट के लिए दी है, वहाँ पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन जब पेड़ रहते हैं जड़ें उनकी ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, और जब हटा दिए जाते हैं ज़मीन वो छोड़ देती है। उसका एक कारण है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हिल एरिया में कितना, आपने अलग फिगर नहीं दी है, हिल एरिया में कितना आपने लैंड अप्रूव करी है डेवलपमेंट के लिए, और जो लोगों को जान माल का नुकसान होता है, घर के घर बह जाते हैं इसमें लैंडस्लाइड में, उसको रोकने के लिए क्या आपने स्कीमें दी हैं, और जो लोगों को लॉस होता है, जान का भी माल का भी, घर के घर बह जाते हैं, उसका कंपनसेशन देने के लिए, हालांकि आप कहेंगे ये राज्य का विषय है, लेकिन क्या कोई सरकार, केंद्र सरकार एडवाइजरी इशू करती है कि जिनके इस तरह के लॉस होते हैं उनको कंपनसेशन किस प्रकार से दिया जाए? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जो फॉरेस्ट क्षेत्र में हम लोग फॉरेस्ट एरिया में जो परमिशन देते हैं और फॉरेस्ट एरिया की जो लैंड को डाइवर्ट करने की जब परमिशन देते हैं, तो हम दो प्रावधान लगाते हैं। एक कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की, उसके एवज में रिकवरी की ज़मीन, और दूसरा उसका एनपीवी, जो उसका एक मूल्यांकन करने का तरीका है, उस मूल्यांकन के आधार पर राशि जमा भी की जाती है। और इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने इसके उत्तर में ध्यान दिलाया है कि पिछले 10 वर्षों में 1,73,396 हेक्टर, मतलब 1,733 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है, वो इस तरह के विकास की गतिविधि के अंतर्गत गया है। पर जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में ज़मीन लेने का जो क्रम है, उसके कारण मैं माननीय सदस्य महोदय को ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 21,761 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा इंक्रीज भी हुआ है। तो इसमें हमने पूरी तरीके से ज़मीन की क्षतिपूर्ति की भरपाई करी है। जहाँ तक विकास योजनाओं में केवल हम ज़मीन ही देने के साथ एनपीवी ही नहीं रखते, हमारी जो अन्य शर्तें रहती हैं, विशेष रूप से जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा है कि जब पहाड़ी क्षेत्र में कोई ज़मीन होती है तो उसका पेड़ कटने से जो है वो नुकसान होता है। उसके लिए हम सामान्यतः इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम यूजर एजेंसी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन जो वर्क्स हैं, हम हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो उसका पूरी तरीके से यूजर एजेंसी के द्वारा ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर मिट्टी की कटाई या उसका मॉइस्चर को अगर हमने अपने विकास कार्यों के साथ नहीं रखा तो उसके लिए हम बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हैं। दूसरा, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा, चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपने जंगली जानवरों के जाने के रास्ते हैं, तो मिटिगेशन मेजर्स में हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान और विशेष रूप से उसमें पैसेजेस हम देखते हैं ताकि सड़क वगैरह बनने के कारण हमारे जो जंगली जानवर, जो हमारा वन्य जीव है, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। जो दूसरा एक सहायक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस क्षेत्र में कितनी ज़मीन जो है वो गई है, वो मैंने अपने उत्तर में ही कहा है। द स्टेट एंड यूटी वाइज डिटेल्स आर गिवन इन द एनेक्जर। तो इस प्रश्न के साथ जो एनेक्जर लगा हुआ है उसमें सभी प्रदेशों को दिया गया और उसमें जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वो भी सम्मिलित है, वो विस्तार से इस आपके लिखित उत्तर में दिए गए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, protection and sustainable management of the forest are primarily the responsibility of the state government and union territory. This is the answer you have been given. Whether the government has undertaken any survey or developed any mechanism to identify landslide-prone areas in advance so that the loss of life can be prevented well in advance, as on the lines of tsunami early warning system. Thank you.
माननीय उपसभापति महोदय, दो विषय हैं। पहली बात, जब हमारे यहाँ एक 1987 से फॉरेस्ट सर्वे की एक पूरी संगठित व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हर 2 वर्ष में हम फॉरेस्ट एरिया का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करके सबके सामने रखते हैं। जहाँ तक उसके वर्गीकरण का विषय, हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ये 3 कैटेगरी में हम सामान्यतः फॉरेस्ट का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ट्री जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है उसका भी हम लोग पूरा समीक्षा करके पूरा विषय रखते हैं, क्योंकि देश के ग्रीन कवर में को प्राप्त करने का एक 33% देश का ग्रीन कवर करने का लक्ष्य जो देश के कार्बन सिंक के योगदान के लिए आवश्यक है उसका करते हैं। जहाँ तक ये जो घटनाक्रमों का विषय है, ये पूरा विषय डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा देखा जाता है, स्थानीय राज्यों के द्वारा दिया जाता है। हमारा सर्वेक्षण जो है वो फॉरेस्ट एरिया के सर्वेक्षण का विषय है। उसकी जो पूरी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उसकी डेंसिटी है या वो ओपन एरिया है, उसकी पूरी जानकारी का रिकॉर्ड हम रखते हैं और प्रकाशित भी करते हैं। Supplementary number 3, I'm taking a time for a minute. Sorry, honorable members, I have to leave the House to take self-disciplined decisions. When a scene is created in the House, that it becomes epicenter of disruption for the entire nation, then it is our bounden duty to sometimes take tough decisions. I left my seat to introspect, having been witness to a spectacle which I found was unprecedented, indigestible, and I would be walking away from my oath if I do not take tough decisions. I called a meeting of the floor leaders at 1:30 p.m. today, and I would reflect to them all I have in mind with video evidence if they require. This House has presented in recent times, in spite of my best efforts, persuasion, patience, accessibility, pleading, prayer, requests, all have been taken not in the right spirit. Sublimity has been misunderstood as fragility. Persuasion has been misunderstood as weakness, and therefore I have thought about it. Supplementary number 3, श्री इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ कॉरिडोर बनाने के लिए तकरीबन 33,000 बड़े पेड़ और छोटे मिलाकर के 1 लाख पेड़ों को काटने की योजना है। तो क्या भारत सरकार के संज्ञान में ये बात है, और अगर है तो भारत सरकार इस पे सहमति दर्ज करा रही है? दूसरा इसी के साथ मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि उत्तराखंड का जोशी मठ लगातार दरक रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री नंबर 1/1 का उत्तर, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सप्लीमेंट्री 1/2 का उत्तर, ये विषय एनडीआरएफ देख रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, संत बलबीर सिंह जी वो नॉट हियर। सप्लीमेंट्री नंबर 4, डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, in line with our coming Montreal commitments to achieve 30 by 30, a worldwide initiative for governments to designate 30% of Earth's land and ocean area as protected area by 2030. Rampant deforestation is antithetical to the goal. The ministry has also given a nod to more than 80 projects requiring 2 to 3 million trees to be felled. The alternative has been
afforestation efforts with compensatory afforestation fund management and planning authority. My question, sir, is there any data to suggest that the afforestation of new trees is a replacement for millions of acres of untouched foreign land? Untouched forest cover, sir. Forest cover. Your last answer was brevity is the soul of wit. माननीय सभापति महोदय, But that is allowed once a day only. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो भाग हैं। पहला ये है कि जो कॉप पेरिस की कॉप के बाद हमने जो अपने 8 लक्ष्य दिए थे, एनडीसीज दिए थे, 3 उसमें क्वांटिटेटिव थे, उसमें एक लक्ष्य ये था कि हम भारत में जो ग्रीन कवर है अपने कार्बन श्रिंक के लिए उसको 33% तक बढ़ाएंगे, जो अभी 1.97 बिलियन है। माननीय सदस्य का कहना एकदम सही है और इसलिए उसको बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन का तो योजना चलाई ही जा रही है, उसके साथ ही साथ कैंपा के अंतर्गत भी योजना चलाई जा रही है। शहरों के अंतर्गत नगर वन योजना के तहत इसके विस्तार के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ट्री कवर को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम जैसा महत्वपूर्ण अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे समुद्री क्षेत्रों के और जो भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए मिष्टी जैसा कार्यक्रम जो उसको मैंग्रोव सीशोर इंटेंजिबल इनकम करके जो बड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है उसके अंतर्गत भी ट्री कवर को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस ग्रीन मिशन को बढ़ाने के लिए स्कूल नर्सरी योजना जैसे और हमारे जॉइंट जेएफएमसी के द्वारा भी कार्यक्रम और अभियान किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर को पेड़ को बढ़ाने का कार्य किया जाता है ताकि जिससे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसको प्राप्त किया जा सके। दूसरा जो 30x30 का प्रिंसिपल है, पिछले साल जब बायोडायवर्सिटी की कॉप मॉन्ट्रियल के अंतर्गत हुई थी तब ये कहा गया था कि दुनिया के जैव विविधता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को देखते हुए पूरी दुनिया सम्मिलित रूप से ये प्रयास करे कि 30x30 के एरिया को बायोडायवर्सिटी के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए। भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मुझे बताते हुए भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे पास 33 एलिफेंट रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। भारत ने अपनी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य किया है और सम्मिलित रूप से जो दुनिया के प्रयास हैं उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्रीमती रंजीत रंजन। मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि 182 और 184 में भी जो आपने दिखाया है कि लगभग किस वन तराई और पहाड़ी में कहाँ पे वन बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं, और उस डेटा में तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ले, हिमाचल ले, उत्तराखंड ले, सिक्किम ने, नॉर्थ ईस्ट ले, सब में वन क्षेत्र घट रहा है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी दोबारा से उन्हीं वन क्षेत्रों में लिए गए हैं। तो क्या ये सही है कि 1000 मीटर से ऊपर के सारे खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार वन क्षेत्र घट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपके आंसर में लगातार उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में है? फिर मैं आऊंगी कि जो भागीरथी 4 धाम वाली योजना है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसको भी जहाँ पे 6,500 देवदार के पेड़ भी हैं और दूसरा जो सिल्कवारा हुआ उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया था। तो क्या ये सही है कि एक तरफ हम वन बचाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ किसी भी बहाने से प्रोजेक्ट करने के लिए आज की तारीख में 1000 मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हम अपने ही वन क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, एक ही विषय का 2 तरीके से प्रतिपादन किया जा सकता है। ये सरकार अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती है। क्या अरुणाचल में अंतिम छोर तक सड़क पहुंचाना, क्या उनके पास प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र पहुंचाना, क्या उनके पास जल विद्युत की परियोजना पहुंचाना, क्या माननीय सदस्य Let him conclude.
Honorable member, let him conclude. Let him conclude first. Honorable member. माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः कहना चाहूँगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने 182 और 184 के संदर्भ में मेरे उत्तर के संदर्भ में कहा है, देश में जिन 5 राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है उसमें उत्तराखंड नहीं है, पहला विषय। इसलिए उत्तराखंड की परियोजना के बारे में जो आपने विषय कहा वो आपके तथ्य से रखे गए फैक्ट के आधार पर ही सही सिद्ध नहीं होता है। जो हमारे 5 राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, एक सेकंड। माननीय सदस्य, यदि अगर मंत्री जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आपकी दृष्टि से सदन के पटल पर गलत कह रहे हैं, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी का उपयोग कीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि एक जवाब देते हैं और आप इधर से कहेंगे। फिलहाल भी हमारी हालात बहुत खतरनाक है। प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल। इफ यू डिसएग्री विद द मिनिस्टर, टेक रिकॉर्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and we will take strictest action against the minister if the statement is not true. But if it is true, then also things emanate. Please bear with me. Yes, Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं जो मेरा उत्तर दे रहा हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो मेरे पूर्व के उत्तर में भी मैंने आपके सामने रखी थी, उसके पैरा 2.10 में जो चेंज इन फॉरेस्ट कवर है, उसके अंतर्गत जो समीक्षा आई है, उस पैराग्राफ के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है, और जहां पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां पर ये बहुत सीमित मात्रा में क्षेत्र घटा है। क्या उत्तर पूर्व के राज्यों को सड़क पहुंचाना, क्या बिजली पहुंचाना, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना, क्या वहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना, वहाँ के गरीब लोगों को सुविधा पहुंचाना, यही तो है विकास की समन्वित कल्पना में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के विषय हैं, उनके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसका इस तरीके से प्रतिपादन ना करें, ये देखें कि समन्वित रूप से पूरे देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि समन्वित रूप से हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और सभी क्षेत्रों में ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सदस्यों को भी अपने क्षेत्र में ट्री कवर बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान के साथ भी जुड़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी, ट्री प्लांटेशन इज वन एस्पेक्ट एंड फॉरेस्टेशन इज अनदर। मैं सहमत हूँ। So on that aspect also, no, the minister knows it more than I do. I am only inviting his attention so that he can inform the House now or in future that not only we are engaged in afforestation, but also in tree plantation. जी. And tree plantation is not a substitute of afforestation. जी, मैं सहमत। Neither compensation of it. जी. The honorable member would be happy हम to संज्ञान में मिलेंगे। Question number 185, Sri Ajay Makan. Honorable Minister. Supplementary number 1, Sri Ajay Makan. Sir, this year, Kodawa hockey tournament entered Guinness Book of World Record without any support from the union government, whereas the state government fully supported Kodawa hockey tournament. Starting in 1997, with just 60 teams, this year 360 teams with 4,834 players participated, making it the biggest tournament in the world. Kodagu district, where Kodawas come from, is considered as a cradle of Indian hockey, sir. Kodagu district has produced 50 Kodawas representing Indian hockey team. 7 of them are Olympians. Govinda, MP Ganesh, Somaya, and many others are in this list. So my question is, as a former sports minister, I know that this is very easily possible. Looking at these facts, is the government thinking of giving grants either annually
or one-time infrastructure development for this important place which has given so many Olympians, so many national players, known as a cradle of Indian hockey, given the importance of hockey in our country? Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सवाल यहाँ पे कोडावा के बारे में रखा है, और ये बात सच है कि इस बार कोडावा जो खेल हुआ है, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है, तो इस बार गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड हुआ है। और जो फंड की बात वो कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार कोई भी डायरेक्ट फंड किसी स्टेट को मतलब किसी भी टूर्नामेंट के लिए नहीं दे सकती, और राज्य की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। अगर वैसा कोई प्रस्ताव आता है तो केंद्र सरकार फंड्स उन्हें अलॉट कर सकती है। Supplementary number 2. Sir, I am asking supplementary number 2, but I myself, while asking the first question, I said I have been the sports minister myself. Kindly have a re-look into this, because there are so many avenues, so many ways by way of which you can directly fund a tournament. There are many tournaments, football tournaments, many tournaments which are directly funded. So my supplementary number 2 is... You can make that suggestion separately to the Honorable Minister. Yes, sir. She would be happy to activate that also. Sir, I know, sir. Second I have been Speaker of the Assembly also, so I know my rights and privileges. Then you share Sir, my pain. Sir. Ajay Makanji, as the Speaker of the Assembly, sir, kindly spare some time and see me in my chamber. Sir. Second supplementary. Sir, should I come at 1:30 also, sir, along with them? Sir, my second supplementary. Sir, I had set up as a sports minister a high-altitude training center in Kunnur. There is another high-altitude training center in Himachal Pradesh. I think that this district, Kodagu district, should be considered as a high-altitude training center. By way of asking a question, I am suggesting the Honorable Sports Minister, would they look into setting up a high-altitude sports training center in Kodagu? I think they should do it. This is a suggestion in form of a question. Honorable Minister. ने सुझाव दिया है, सुझाव की हम नोंद लेते हैं। Supplementary number 3, Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, thank you so much. Sir, since we had the honor of the minister being here, कल जब डिस्क्वालिफिकेशन इसके कोडागू के बारे में नहीं है, पर जब कल डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई थी विदेश फोगाट के ऊपर, Priyanka ji, one second, take your seat. Sir, just I have indicated this house is governed by rules. That's what, sir. That is why I started with you this. Please have to confine to the 1.4 question. billion people are heartbroken, sir. I'm all we are afraid. asking, all Don't I'm force my asking hands. is, what Take is your the seat, government of India doing? Take your seat. What steps are Take they your seat, taking take your to seat. challenge Take the your seat. disqualification, sir? Take your That is seat. all, sir. Please that take was your all, seat. sir, because Please, your 1.4 objection. billion people are Nothing looking is- towards the government of Please India take your to seat. fight for the Bharat. Please take your seat. Dinesh Fogart, sir. That was Take the your only seat, question, Priyanka sir. Chaturvedi. Honorable members, Minister is expected to be fully informed of the question that is before the House. If we use that opportunity for something else, we are sending two signals. One, we are not focusing on the question, and secondly, we are not following rules. Ask question limited to the issue involved. Please, for heaven's sake, 4 don't wait. billion people are heartbroken about this. What is our government doing, sir? That is all. Is the government going to challenge this disqualification? And what are the steps being taken to ensure that Bharat ki beti Vinesh Fogart gets justice? Dr. Fozia Khan, I hold the supplementary not relevant. Fozia Khan, supplementary number 4. Yes. Thank you very much, sir. Sir, what specific measures is the government taking to support and promote grassroots development in field hockey? How does the ministry plan to address challenges such as infrastructure availability, funding, and access to facilities at the grassroots level? Yes. Additionally, sir, what steps are being taken to ensure that regional initiatives like the Kodawa tournament receive consistent support and contribute to the broader growth of hockey? Honorable Minister. चेयरमैन सर, ये कोडावा
फैमिली के द्वारा कोडागू डिस्ट्रिक्ट में हॉकी टूर्नामेंट के संदर्भ में प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं कोडावा फैमिली को भी अभिनंदन करता हूँ। वो उत्साह से अपने यहाँ कंपटीशन कराई और 1997 से वो कंपटीशन कराते हैं और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस टूर्नामेंट को नामांकन करवाया, बहुत बड़ी बात है। और देश में हॉकी के अलावा सभी स्पोर्ट्स आगे बढ़े, उसके लिए देश में टैलेंट आइडेंटिफाई करें, टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 3 इनिशिएटिव लिया गया है। एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया का सेंटर बनाया गया है और एक खेलो इंडिया के सेंटर के द्वारा जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे 40 इयर्स एबव है उसकी कंपटीशन आयोजित करनी और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर उसमें कंपटीशन आयोजित होती है। उसमें से एक सब सेक्शन है कीर्ति प्रोजेक्ट। कीर्ति प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खेलो इंडिया के तहत देश में बाल्यकाल में युवावस्था में स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे में टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। अभी सारे देश में एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। उसके मुताबिक 1 लाख ऐसे टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी, उसको अच्छा कोचिंग की व्यवस्था करनी और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हम मोदी गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम चलाई है। टॉप स्कीम मीन्स टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्कीम के तहत जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको उसमें प्रवेश मिलता है। जिसको उसमें प्रवेश मिलता है ये सारे प्लेयर की सारी आर्थिक व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा होती है। वो खेलने के लिए जाते हैं, उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन में जाना है, भारत सरकार उसका खर्च बेयर करेगी। उसको अच्छा कोच चाहिए, कोच का सारा खर्च भारत सरकार बेयर करेगी। उसको कोई जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसका खर्च भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1050 ऐसे खिलाड़ियों के पीछे भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है ताकि उसकी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरा, जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है और खेलो इंडिया में निखर के आया, ऐसे प्लेयर के लिए भारत सरकार की स्कीम के द्वारा उसको हॉस्टल में रखा जाता है, उसके पर निगरानी रखी जाती है। हॉस्टल फी, खेलने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा देश में स्पोर्ट्स को महत्व मिले, हमारे देश में रही टैलेंट उसको अपॉर्चुनिटी मिले, देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। इस तरीके से हम स्पोर्ट्स को मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. उद्देश्य अभी देखा गया है कि बुंदेलखंड के किसानों द्वारा
इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया गया, लेकिन उसका अनुभव इतना उत्साहवर्धक नहीं है। सोलर प्लांट के लिए लीज पर ज़मीन देने वाले किसानों को आकर्षक लाभ नहीं मिल पा रहा है, न फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है और न ही सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। मूल समस्या सोलर प्लेट की है। सरकार को सोलर प्लेट की इस प्रकार की प्रणाली खेतों में लगाने की आवश्यकता है, जिससे फसल का भी भरपूर उत्पादन हो, पर्याप्त ऊर्जा का भी उत्पादन हो। किसानों के हित में मेरा सरकार से सुझाव है कि जो सोलर प्लेट ज़मीन पर लगाया जाता है, जिससे किसान खेती नहीं कर पाता है, उसी को खेत में पिलर्स के ऊपर लगाया जाए तो उसे लगाने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि कृषि और किसानों के हित में जुड़े मामले का जल्दी से जल्द निदान किया जाए। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Wakf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally, this is an attack on Constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on Constitution. Sir, see, sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Wakf Council, basically, the Central Wakf Council, where the Wakf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers, those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Wakf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage this own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple Devasam board. Anybody can believe that that temple Devasam board can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Wakf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. Sir, that we are talking about, you are telling we are the Constitution. When we are showing the Constitution, you are telling you people are protecting the Constitution. This is a fundamental attack on Constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jains. Next, you will go for Parsi. Next, you will go for... Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. Sir, in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? We are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith.
I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. Yeah. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Wakf properties, there's actually the nitty-gritty of that things, dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir, basically the 3. Sir, clearly, Wakf by use. There is a concept of Wakf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody knows that how it became, what was actually the property deed of that mosque itself. You are removing the clause of Wakf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. Therefore, traditionally it is one. My point is every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill-motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. Shri Mohi Bulla. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूँकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहाँ कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत हैं उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ सर। इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर लोग कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेव नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी सर। रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। श्री सुधीर बंदोपाध्याय, आपका नंबर। Sir, I will be brief. My constituency is City Kolkata. I have huge number of Muslims and full of Wakf properties and everything. I am little aware, I will speak only few points, that it is a violative of Article 14, which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution, which talks about right to freedom of religion. It is opposing that right. It is against federalism, as land as stated, the 7th schedule of the Constitution is a state subject. In Sardar Sayyidana Tahir Saifuddin Sahib versus State of Bombay, 1962, the Supreme Court ruled that states should not interfere in the matters of religion. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional. The bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of the bill. Srimati K. Kanimoji. Thank you, sir. It's a very sad day in Parliament today. This year, when we came back to the Parliament, many of the members took their oath with the Constitution in hand. That was to protect the Constitution, to imply that the Constitution is supreme and it has to be protected. But today, we see that this government is blatantly going against the Constitution. This bill is just not against the Constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes. It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which says we have the right to follow a religion and the rights of the religion to follow and manage its own religious affairs. The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Yes. Would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs? Parsis? Would you allow that? No.
But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? Is this not unfair? Is this not against the law of justice? And it is a direct violation of Article 30 of the Constitution, which deals with the minorities to administer their own institutions. You're bringing others, now you're giving the right to decide whether the property belongs to the government or the work board, the collectors, and then another committee above them will be deciding whether the land or the property belongs. And we know already many old mosques are in danger today. Yes. Suddenly, there is a PIL and people are sent, archaeologists are sent there, and they discover that it was a temple before this. And then there is hate, division, issues among the people of the country. It is happening. Don't answer him. Don't answer him. It is happening. And this bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group. And it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law. And it is omitting Section 40 of the existing bill, which deals with the powers of the work board to decide whether a property is the work board property or not. So this bill is completely against the Muslims, the minorities, and it does not believe that this country is made of people. It's a secular country. It is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicity, and different religions. This bill will destroy what our forefathers dreamt India should be. I oppose this bill. Thank you. Rajiv Ranjan ji. अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से वक्फ बोर्ड कैसे बना?
वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। बाहर है वाह। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my kid, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा? तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media, is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट नहीं, वो संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल को, इसलिए वो कल But it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। It came in the media. मैं ये जस्ट क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ, मीडिया के पास कैसे पहुँचा? ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें लिख का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सही बताता हूँ, अभी आपको एक मिनट में तारीख सही बताता हूँ। सर्कुलेट किया, एक मिनट मेरी बात सुने, सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर सब दल के नेता थे। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, the only concern is this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I am raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. Now, Wakf is there or is not there is clearly needs to be told. You have deleted section 40, sir. It is
not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting Section 40 is my question to this. Then the Wakf Tribunal, it's completely weakened. The tribunal has no powers, because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's Section 108, Section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states, cooperative federalism, to ye sarkar bhool hi gayi. Har cheez mein, sir. Yesterday in the GST, we had the same issue. The Honorable Finance Minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. But she's saying that nothing is, don't bring issues here, go back to the states. So then why are we elected here? Why do we have a parliament if for everything we have to go back to the states? And states ka koi sune to na. That is the other problem. They say write to the states, then why are we writing to ministers here? It has no value. How can you undermine the central government? This is supreme, all state subjects. State GST, sir, I agree with you. But if in the GST council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen, sir? So my request is in 108 Section B, the rules, states need to have their powers. Please do not take powers away. And equity before law. Sir, this country is about unity with diversity. Any country, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. Let's have more detailed discussions. There are committees which are forming. Let's discuss it and only then bring a bill which is fair and which is just in this country. Because in this constitution, every citizen matters and counts. That's what rightfully is given to every citizen, sir. Thank you. माननीय सदस्यगण, एक बार फिर चेक कर लें. इस बिल को 6 तारीख को सर्कुलेट कर दिया था. आप पोर्टल पे चेक कर लें. क्योंकि आप सदन के बारे संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं विषय को क्लियर कर रहा हूँ. मैं आपने कहा कि ये बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको. मीडिया में क्या क्या बात आती है इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है. हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है. एमपी अब्बू समदानी. इटी मोहम्मद बशीर. नहीं, आप बोलेंगे, बोले दोनों में से एक बोलेंगे, कोई बोलना. Myself. अच्छा. Sir, thank you very much, sir. I vehemently oppose the very presentation of this bill. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you. Yes. Shame. Sir, if this bill is passed, the entire box system will be collapsed, sir. Shame. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, Wakf Board and Wakf Council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers vested with these bodies are captured by the government and handed over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Yes. Muslims cannot donate to the Hindu system and they cannot donate to Wakf system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? You have forbidden that kind of thing, sir. At the same time, this will jeopardize all the system. Now, Wakf Board and Council, if you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act,
Collector is superior than the chairman of the Wakf board, sir. That is the system we can see in this, sir. Sir, the funny thing is not that, sir. Once this bill is passed, the evacuation of the encroached property will become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that once government is an encroacher in this, government building is situated in the Wakf land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Wakf land. That is another thing, sir. Sir, another thing, we can very well understand powers of the Wakf administration. They will have no, this chairman and the Wakf board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? From various constituency, members are there. There was a stipulation that they should be Muslims. But here, you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this, sir. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. And we have to understand one more thing, sir. Government is trying to create a lot of injustice, sir. Because we had a lot of work. I have participated in 50 in the Loksatta. A JPC was constituted under Mr. Rahman, our leader, community leader, Umar Khan. He made a wonderful report, sir. It was very clear. There was a lot of good things. You are repealing all these clauses. After a lot of study, Rahman Khan's committee recommended certain things, and amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is, you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, that work system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country's communal unity. What you are doing is, you are putting Hindus and Muslims in watertight compartment. You may have that desire, but we will not allow this country to go in that direction. Sir, with this word, I conclude. Thank you very much. K. Radhakrishnan. Sir, I strongly oppose the Wakf Amendment Bill on behalf of Communist Party of India Marxist. Sir, this is against our motto, unity in diversity. This bill has breached our constitutional right of practice of religions. This bill has violated the constitutional article 25, 26, 27, 28 and 30. As per the bill, the Wakf board will become a nominated body. Only intention of this bill is to demolish the Wakf. Before bringing this bill, no consultation has been done by the government with any states or with a Muslim or other organization. So the government want to withdraw this bill. We demand, if not, don't send it to the standing committee for wide consultation. Thank you. श्री N.K. प्रेमचंदन, आप नोटिस और आप नियम के तहत ही बोलते हो? Yeah, my notice is there. Sir, नहीं, first आप of all, rules के तहत ही बोलते हो? Yes, sir. First of all, I would like to express our sincere thanks to the Honorable Speaker. This is the first time during my experience, when a bill is opposed on the ground that it is outside the legislative competence of the bill.
the Speaker has the authority to grant a full-fledged discussion. And the first time you have allowed for such a discussion, we are thankful to you. Sir, that is 72, second proviso. Rule 72.2, 72.1, second proviso. Sir, I vehemently, very strongly oppose this Wakf Amendment Bill 2024 under Rule 72.2 of the Rules of Procedure. 4 reasons I am suggesting. Number 1 is the provisions of the bill violates fundamental rights envisaged in Article 25 to 28 of the Constitution. It violates Article 13.2 of the Constitution. And the third one is the bill is against the basic feature of secularism enshrined in our Constitution that cannot be altered, because it is the basic features of the Constitution that cannot be altered or changed. And the last one is the statement and objects and reasons narrated in the statement of objects and reasons are not sufficient to bring a new legislation. These are the grounds by which I am opposing the introduction of this bill. So the sole intention of the Wakf is for the better administration of Wakf properties. Wakf is a permanent dedication by any person or any movable property or immovable property for any purpose of a recognized by the Muslim law. And it is considered as a pious, religious and charitable activity. It is absolutely a religious activity come within the purview of Article 26 of the Constitution. This is government is intruding into the religious freedom of a particular community, that too Muslim. And you are particularly targeting the community Muslim, sir. That is the real case by which, sir. So, sir, coming to see, if you go through the legislation, it is very interesting. If you go through the legislation, you are disempowering the Wakf board as well as the council, and to determine whether a property is a Wakf property or not, it is being declared by the collector or the government. And 1 or 2 seconds. And you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Wakf board. The Wakf board become totally powerless. That means you are dismantling the system. So totally it is a dismantle of the system. So, sir, it is absolutely against the principles of Constitution, and also it is lacking bona fides also. And further, I would like to quote Article 13.2 of the Constitution. Kindly see Article 13.2 of the Constitution, that is Part 3, very specific, that is the laws in consistence with or derogation of the fundamental rights. Sir, Article 13, Clause 2, I quote, "The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in connection of this clause shall not to the extent of the contravention be void." So, sir, I caution this House, I caution the government that if law is, you can very well pass. You are having absolute majority in the House. But I caution this government, if it go for a judicial scrutiny, definitely this bill will be struck down on the constitutional grounds. It is outside the legislative competence of this House. I'm very sure that is why we are strongly opposing. And finally, sir, it is nothing but, as rightly Sri K.C. Venugopal has said, the reason that coming assembly elections in the state of Maharashtra in particular and other states, we want. I'm saying that is a political. I'm saying I will reply. Piyush Goyalji, I am saying that this is the reasons and objects stated in the objects of reasons. It is lacking bona fides. It is lacking bona fides. That is my state. So it is. So sir, and a very important thing is, a person who had been practicing for the last 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction, total against equality before law and equal protection of the law. Hence, I appeal to the government, please withdraw the bill, or if you want to insist on this bill, kindly send to some committee for close scrutiny of the bill, and let us discuss with the stakeholders. Then only it will be taken into consideration. So I strongly oppose the introduction of the bill. Thank you very much, sir. Shri Thol Thiruma Balwan. அவைத் தலைவருக்கு மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். அறிமுக நிலையிலேயே இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில்
மக்களிடையே நிலவுகிற நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கிற வகையில் உள்நோக்கத்தோடு இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய உணர்வோடு வாழ்கிற இஸ்லாமியர்களை அந்நியர்களைப் போல காட்டுகிற முயற்சி மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அவர்களுக்கான சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாகும். அரசமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கிற அனைத்து சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளை எல்லாம் தட்டி பறிக்கக்கூடிய வகையில் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்ட இதில் அரசு தலையிடுகிறது. வக்ஃப் போர்டு நீண்ட நெடுங்காலமாக தனித்து இயங்கி வருவதை நாம் அறிவோம். ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது. இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் மதச்சார்பின்மையை உயர்த்தி பிடிக்கிற நிலையில் அரசு மதம் சார்ந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பது, மதங்களின் சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது மிகுந்த ஆபத்தானது, மக்களின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடியது. எனவே இந்த மசோதாவை துவக்க நிலையிலேயே, அறிமுக நிலையிலேயே நான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எதிர்க்கிறேன். இதனை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். அல்லது இதனை ஒரு குழுவுக்கு கலந்தாய்வு நிலைக்கு அனுப்ப வேண்டும், கலந்தாய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும். Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Wakf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Wakf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Wakf al-Awlad under Clause 4 and Wakf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Wakf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Wakf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Wakf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Wakf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Wakf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secondary level officers can be appointed as technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Wakf properties, sir, are not public properties. By removing Wakf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Wakf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult.
to be removed, encroachment happen. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट. Government कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है. और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते कि उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे. जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं. उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं. श्री GM बाल योगी, नहीं, श्री GM हरीश बाल योगी. थैंक यू स्पीकर साहब. 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर. मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए. मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया. इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की. अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है. आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो. मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है. हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. GM हरीश बाल योगी. Thank you, Speaker sir. We appreciate of the concern with which the government has brought this bill. Properties and lands for religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors need to be protected. Sir, Speaker sir, I would request through you that please allow me to speak. Please let me. I have heard all of your opinions. आप तो बोलें. Sir, the purpose of the donors need to be protected, but when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. There is a requirement for the government to regulate and streamline the purpose. It is with this idea the bill has been brought, and we support it, and we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. But if a wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread,
and to educate the purpose of this bill, we have no problem being sent to the Select Committee. Thank you. माननीय नोटिस आए हैं, वो एक एक मिनट में अपनी बात को कह दें। एक मिनट। अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है, और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके। कल्याण बनर्जी, I am opposing the legislation. Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land.
coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, Announcement. Honorable members, in view of the request received from the Minister of Parliamentary Affairs and Minority Affairs, the bill listed for withdrawal in the revised list of business will be taken up immediately after the disposal of the Finance Number 2 Bill 2024. Now, the Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 and Appropriation Number 2 Bill 2024 and Finance Number 2 Bill 2024 Bill for introduction and return. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024, the Appropriation Number 2 Bill 2024, the Finance Number 2 Bill 2024. As per the recommendation of Business Advisory Committee, the Honorable Minister of Finance shall give reply
to the discussion on appropriation bills and the finance bill together. Now, Srimati Nirmala Sitharamanji to move motion for consideration of the Finance Number 2 Bill 2024. Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 24-25 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Would you like to speak something, madam? No, sir, not now. Thank you. So the motion has been moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Yes. Point of order regarding this bill. Because this bill has been introduced. Sir, the point of order is on the running of the House. I'm taking a 30-second point of order. You take. The point of order does not have to be on the running of this bill. पर आप नियम अच्छी तरह जानते हैं, प्लीज नहीं। पर आप नियम जानते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस हो चुका उस पर point of order वही मैं entertain करूंगा। To speak, I'm not here to disrupt the House. Please. Sir. Please. I'll mention two rules. Look at your books. Please. Morning notice was 267. Now, 1 minute, please. I know a little about the rules. I'm still learning. Please. Sir, the discussion is going to carry on. I just want to bring to your attention that 5 members. Please, I'm not. 1 minute, no, sir. No, 1 minute. I have already introduced the bill. No. Look at the rule. 176. Sir, I'm not. I'm clear sir, about I'm the rules. not. Listen to me. I'm calling out the rule. Sir, I'm calling out the rule. 176. Please, no. Please. Sir, I know the rules. I'm telling you. Please. आप बोले. So, sir, rule number 176. There is a notice for consideration which is with you. That's all I'm saying. Please, thank on you. the Vinesh Phogat issue. You. That's all. No, That's nothing all is going on record. Acha, is Mani Vinesh... rules, Mani members, please. I know one who's please takes it. Please, no, not going. Nothing is going on record. Please. माननीय सदस्यगण, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो विषय इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर वही इंटरटेन हो सकता है, दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अब उठाना सकते हैं, वो गलत है, नहीं जाएगा, इट्स नॉट इंटरटेन, एंड आई विल रिक्वेस्ट डेरिक जी, आर ए वेरी सीनियर मेंबर, डू नॉट मिसयूज सच काइंड ऑफ थिंग्स, प्लीज। मास्टर विवेक के तनख्वाह। Thank you, Deputy Chairman, sir. Let me start with a quotation from Justice Hidayatullah while he was deciding a matter way back in the 60s about a book called Lady Chatterley's Lover. It had been proscribed. So he said, no books are good or bad. They're either well written or badly written. Taking it further, I would say any budget is neither good or bad. Some portions are good, some portions are error of judgment, and some portions, I would say, are lost opportunities. This is a world of AI. And in a world of AI, there's a very apt Hindi saying, Guru ki jagah humne Google ko de di. Guru ki jagah हमने गूगल को दे दी, जानकारी से ज़्यादा समझदारी में कमी है. We have a lot of जानकारी, but less समझदारी. Now, the positive points are, yes, ma'am, I remember I had raised the SMA issue, spinal muscular atrophy issue, many years back. You were the finance minister. I said 2,500 children die every year. The drug costs 21 crores. 16 crores is the cost and 7 crores is the excise. That issue has been largely addressed, and I say thank you for that. I also say that cancer medicines and life-saving medicines, custom duties on these has been reduced from 10% to 0%. It's a positive step. Reduction in custom duty on raw material for leather, garments, and footwear from 10 to 0 is a positive step. Although this happened after 11 budgets by this government, 7th by the Honorable Finance Minister, when India has lost the competitive edge
to Bangladesh, Vietnam, Cambodia, and China. You abolished the angel tax. It's welcome. Tax rate for foreign companies have been slashed. I'm not sure whether this will enhance the FDI, but we have nothing against it. But ma'am, the error of judgment starts when you missed the middle class. The finance minister stated in this budget is for the middle class, whereas it should have been of the middle class. Yes, you have not really addressed the middle class because in your budget, indirect taxes instead of direct taxes were how you began the budget. Knowing very well that indirect taxes are regressive, take a much larger percentage of low-income individuals. Just as a matter of some calculations, contribution of taxes, today indirect taxes in 2010 constituted 55%. In 22, it was 66%. Direct taxes in 2010 were 44%. In 22, there are 34%. Directly affects poor as they pay more tax on goods and services. Indirect taxes are non-equitous in the sense it covers the poor and the rich together. Direct taxes are people who are earning. So indirect taxes, in my opinion, should always be taken as a second step, not the first step of earning. Then you have corporate gross revenue receipts. Corporate tax was 37% in 2010. 22, it was 26. Personal income tax was 17% in 2010. It was 28 in 22. Increase in percentage of personal income tax collection, then the corporation shows that the government is collecting more from middle class households. Reduction in corporate taxes in 2019 only benefited company promoters. Ma'am, the 18% GST being charged on life and medical insurance, I would say if there is the biggest challenge that any class today faces, it is the middle class. For the poorer section, you have the Ayushman scheme. For the rich, it doesn't matter. But for the middle class, half of them, mediclaims don't work, or if they work, they are not sufficient. And it's a huge challenge and a huge burden for the middle class. And I would say today, it is a sin to fall ill in a middle class family. If somebody falls ill in a middle class family, believe me, sometimes they get wrecked, sometimes they get ruined. Coming to farmers, ma'am, custom duty on ammonium nitrate increased from 7.5% to 10%, while subsidy on fertilizers has been reduced. Farmers will get directly impacted as their input costs will increase. 2, statutory demand for minimum support price not delivered, which is the biggest demand of the farmers in the country today. And third, however, the fertilizer subsidy has been decreased by 1 lakh crore. No pro-farmer sentiment in this budget can be seen. And that is why, ma'am, I think the farming community, I'm sure, must not be very overjoyed or joyed with this budget. The Indian pharmacy. The Indian pharmacy is one of our best sectors. Drastic hike on custom duty on laboratory chemicals from 10% to 150% has now will convert this flourishing industry into a struggling industry. Indian pharmaceutical industry is estimated at around 50 billion. India ranks 3rd worldwide for pharmaceutical production by volume and export pharmaceuticals to more than 200 countries and territories. R&D will be affected, specifically pertaining to pharmaceutical and biotech industry. Research in general will be affected. India spends 0.6% of its GDP on R&D. You are killing that also. Capital gains. I would say, in short, the short-term capital gains increase from 15 to 20%, and securities transaction tax, STT, on capital gains, which when the stock market is witnessing exponential growth,
in terms of retail investors, mostly from the middle class and young people. Young India finds this fascinating. It's the young people today who are the biggest participants in the stock market. They may not be the richest people, but they may be the most enthusiastic participants. National Stock Exchange alone saw retail investors' share grow from 33% in 2016 to 45% in 2021. This shows that the government wants to fund the budget through taxing the middle class. Honorable Finance Minister, if we think deeply or we think briefly, these are the two options before us. Sometimes it is a lack of thought process. More than 2,500 amendments were incorporated in GST law since 2017. A new income tax law seems to be on the anvil. The amended criminal laws have just started troubling the law courts and the lawyers, and now the new income tax law will haunt the taxpayers. Long-term capital gains. All financial and non-financial assets will attract the long-term capital gains at 12.5% in case of equities and decreased from 20% in case of real estate. Indexation benefit removed, but now rolled back partially. I welcome that. Real estate will take a big hit. Construction sector is the biggest employer after agriculture and manufacture. More than 20% of the real estate investment is by NRI. Foreign investment will be drastically impacted because after you opened this sector to foreign investment, NRIs were the biggest participants in this. 20% of the booking is of the NRIs if you analyze the purchase. I would also say the Make in India rollout of 2014, but only after 10 years have we come up with a 6-monthly commitment to review to tackle the distorted custom duty inverted tax structure. No new tax benefits given to startups, women entrepreneurs left out of the budget. Lost opportunities. Madam Finance Minister, this is your 7th year, and the women of India look at you as an icon. You for them, represent their empowerment. But there is no tax slab for women in India. Budget allocation should have been there to promote women entrepreneurs. Every city should have a dedicated complex for women entrepreneurs to work. The need of the hour is to accommodate many micro, small, and medium enterprises, MSMEs, women entrepreneurs in one facility, providing them with big and safe office spaces to work. If you really want that pyramid of women who actually contribute to the GDP of India to do well, you need to have these complexes for them. Just putting them as part of a mudra scheme or providing them some skills is not good enough. They just can't afford to buy a property. They just can't afford to buy a house or an area for commercial utilization. So this is an important facet if you can bring dedicated complexes for women in all major tier 2, tier 3 cities at least. More women hostels for working women should have been set up in cities. Work, skill development lacks focus. This is the 7th budget by a finance minister, and the women expected much more. Employment. No scheme formulated for creation of jobs in informal sector. Limits for Mudra loan increased only for previous beneficiaries of the higher slab. Lower slab for new entrants not increased and remains the same. Only the Tarun slab increased from 10 lakhs to 20 lakhs. Ma'am, your internship scheme, I don't believe it can succeed. Internship scheme says 1 crore youth between the age of 21 to 24 years in the next 5 years will get internships in 500 companies. Top 500 companies hire around 70 lakh people. How can they have 1 crore interns? Scope. So what I'm trying to say, this is a myth. Even if you can get this figure completed in 5 years, I would salute you, because I think it's just not possible. It's an ambition, a very ambitious program, which I don't think is on the ground will even take off properly. And then you say that who are the people ineligible to participate?
candidates from IIT, IIM, IISER, CA, CMA, etc. Any member of the family is assessed to income tax. Any member of the family is a government employee. Then how many people are eligible? All these people, I mean, most people would have somebody who's assessed to tax. Most people would have a family member, a lot of people would have family members in government. Now, if all of them are not eligible, then frankly speaking, what is your pool of eligibility? Frankly, it surprises me that we're keeping out such a huge section. How does it serve the purpose at all? Education. Your own National Education Policy 2020 called for allocation of 6% of GDP to education. But allocation is only 0.38% of the GDP. Allocation for higher education has dropped from INR 47,620 crores from the revised estimates of INR 57,244 crores in the 23-24 budget. Only rebranding Nehruvian era institutes such as the IIT, the IIMs, the IIS and JNU as centers of excellence and centers of institutes of eminence would not work. Please think of granting some relief to the students who have taken education loan in a sector where you don't get employment. How are they going to repay the loans? If there's no relief given to the students, I'm sure it's a huge community whose huge problem goes unaddressed. Today, today the problem is that most of these institutions, instead of being manned by real hardcore professionals, you get them manned by people who are close to your political party or political thinking. I think that's not good for the country. Students should be taught how to think and not what to think. More than 10 lakh students choose to study abroad. Information technology. India saw IT revolution in 80s and 90s because of the least intervention from the government. India captured the imagination of the world by its IT boom. But what are we thinking about the knowledge cities? See, India lacks the knowledge cities that you find in San Francisco, Singapore, Tokyo, Stockholm, due to their strong emphasis on technology, innovation, education, and research at high premium. The concept of knowledge cities is alien to this country. Brain drain is at an all-time high, coupled with around thousands of high-net individuals leaving the country. माननीय विवेक जी, आपकी पार्टी के एक और वक्ता. Railways. One of the most exciting features of the budget used to be the railway budget. That has just disappeared. It's not there. The common man was always waiting to hear the railway budget. The facilities that would come. Madam Finance Minister, more than 6,800 train stations were shut down during citing financial viability. Many artisans, small vendors, micro businessmen and students are all affected because of this. The concept of cheap public transport is not to gain profit, but for a larger social good. Now, let me tell you by example, ticket cost for a tribal in Belgana near Bilaspur in Chhattisgarh used to be 10 to 20 rupees, but now they have to take a bus to pay around 100 rupees. In Japan, even to accommodate one student, they decided to operate a train. So my case is that unless we have an unless the railways open up to the issues of the people, and there are proper budgetary provisions for various improvements and enhancements, this opportunity is a lost opportunity. Defense. Budget allocation for defense is not sufficient. China and Pakistan increased their defense budget by 7.2% and 17.6% respectively in order to boost their defense spending. The defense allocation is 1.9% of the GDP in the present budget, which is the lowest since 1960. What happens to the dream of General Rawat of theaterization? Where is that allocation for theaterization? Defense sector needs massive upgrades and significant strides are to be taken towards the same. India has not been able to capture the market of defense manufacture because of R&D and other deficiencies. We have defense production sector and defense production industries. For example, Jabalpur, from where I come,
At one time, these factories used to employ 1.25 lakh people. Today, they employ 10,000 people. And the factories on the verge of virtual closure. I mean, there's hardly any work for the factorymen. Private sector is being stressed, but no outcome of positive results. Ma'am, I remember when you were defense minister, you called a meeting of MPs. You knew the problem of cantonments. You knew the problem that in cantonment the civilians have a huge issue. And today they have all kinds of land issues, they have all kinds of movement issues. And you said, let's try to segregate them. That never happened. You took the first step, but after that first step, the second, third, fourth step never came. So today, this issue of cantonment and army areas being separated is still in limbo. Research and space research. Ma'am, our scientists of DRDO and ISRO are the best in the world. I'm reminded of that film on Nambi Narayan, the ISRO scientist, who suffered. He epitomizes the suffering. Which film? Rocketry. Rocketry is his life story, where Supreme Court and courts intervened, gave him compensation. He got a Padma Vibhushan. But after suffering of 15, 20 years, and his brilliance was acknowledged by India at all levels. And how scientists can be framed in fake cases came out in that whole episode. What I'm trying to say, your best scientists need more hand-holding. They need better pushing. Unless and until we do more for these scientists, how are we going to go further in this whole thing? Semiconductors. I remember semiconductor industry after COVID. It was a supply chain point. We couldn't take advantage of by bringing them from Taiwan. It is Malaysia, and Cambodia and others, Vietnam, who took advantage of it. So my problem today is, ma'am, even though you have worked hard to bring a budget, but at the end of the day, the country also looks for quality workmanship. And what is this quality workmanship? When we have a leaking airport, a leaking train metro station, leaking papers, and now even a brand new leaking parliament, ma'am, I think we have lot to do, lot to change, and lot to take ahead. Thank you. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara. धन्यवाद मान्य सभापति जी। मान्य सभापति जी, सतत त्रीजी वार देशना वडाप्रधान पदे मान्य मोदी साहेब ने बेसवा बदल प्रजानो जनमत मळवा बदल आपना माध्यम थी हूँ वंदन करूँ छूँ, अभिनंदन आपू छूँ। एटलू ज नहीं मान्य सभापति जी, 140 भारतवासीओना जन विश्वास जीतनारू हमारा वित्त मंत्री जी, हमारा महिलाओं गौरव मान्य वित्त मंत्री जी ने आपना माध्यम थी हूँ वंदन करूँ छूँ, अभिनंदन आपू छूँ। आ बिल गरीबों माटेનું છે, આ બિલ ખેડૂતોને બળ આપનારું છે, આ બિલ મહિલાઓને સામર્થ્ય સશક્તિકરણ કરનારું, તાકાત આપનારું છે અને યુવાઓને રોજગારીની આકાંક્ષાઓ પૂરું પાડનારું આ બિલ છે। માન્ય સભાપતિજી, આ સમાવેશી બિલ विकसित भारतनी संकल्पने ताकत आपनारू, सामर्थ्य आपनारू बिल छे। एक रोड मैप तरीके उभरी आवनारू आ बिल छे। मान्य सभापति जी, मने कहता आनंद पण थाय अने दुख पण थाय। आ बजेटनी चर्चा होय के बीजी बाबत होय, हूँ पक्षने मान्य सांसदोने અને વિપક્ષના લોકોને પણ સાંભળતી હતી, પરંતુ આ સમાવેશી બિલ
વિપક્ષોને પણ કહેવું છે આ સમાવેશી બિલ છે, આવકારદાયક બિલ છે, પણ એમને પણ મજબૂરી છે માન્ય સભાપતિજી. ટીકા ટિપ્પણી સાથે એ પણ મનમાં કહે છે કે આ બિલ સારું છે, આ દિશા આપનારું બિલ છે, દશા બદલનારું બિલ છે, આ અવસર આપનારું બિલ છે, દેશવાસીઓને તસવીર અને તકદીર બદલનારું બિલ છે. માન્ય સભાપતિજી, ઘણા હમણાં અમારા ખેડૂતોની વાત કરું, મોદી સરકાર ખેડૂતો માટે કેટલી સમર્પિત છે, ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે કેટલી ચિંતા અને ચિંતિત છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે સત્તા સ્થાને હતા ત્યારે હું ખેડૂતોના હિતની વાત કરીશ. ત્યારે એમણે જોયું કે ખેડૂતો ખેતી છોડીને શહેર તરફ દોડ મૂકી રહ્યા છે, ખેતીને બિચારી બાપડી અને એક લાચારી અનુભવતા હતા. અને મોદીજીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હોતે હુએ સંકલ્પ કર્યો કે મારે ખેડૂતોને બે પાંદડે કરવા છે, એમની આવક ડબલ કરવી છે. માન્ય સભાપતિજી કહેતા મને આનંદ થાય છે, એમણે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોના માધ્યમથી લેબ ટુ લેન્ડ, જે વૈજ્ઞાનિકો લેબોરેટરીમાં પ્રયોગ કરતા હતા એ તમામ વૈજ્ઞાનિકોને કૃષિ રથના માધ્યમથી ખેડૂતોના ખેતર સુધી લઈ ગયા અને ખેડૂતોની જમીન કેવી છે, એને ખાતર કેવું જોઈએ છે, પાણી કેટલું જોઈએ છે, કઈ ટાઈપનું બિયારણ જોઈએ છે. અને એ વખતે જે કોંગ્રેસના શાસન વખતે જે ખેડૂતોની આમદાની 9,000 કરોડ હતી, તે આ મોદીજીના પ્રયત્નો, માર્ગદર્શન, કૃષિ મહોત્સવનો રાત, અને એના કારણે 1 લાખ કરોડ ઉત્પાદન, 10 ગણું ઉત્પાદન વધ્યું. અને એ જ મોદી સાહેબ જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન બને ત્યારે ખેડૂતો માટે શું ના કરે. અને આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે, અમારા વિત્ત મંત્રી સાહેબા પણ બેઠા છે, ખેડૂતોના કલ્યાણની વાત કરી છે. કિસાન સન્માન નિધિ ના માગે આપવામાં આવી રહી છે. એક ગરીબ ખેડૂતને પૂછવામાં આવે કે તારા ખિસ્સામાં જ્યારે 2,000 રૂપિયા આવે, એક દીકરો બાપને ના આપે, પણ દેશનો વડાપ્રધાન એક દીકરો બનીને જ્યારે ખેડૂતના બેંકમાં દર 4 મહિને 2,000 રૂપિયા નાખે. માન્ય સભાપતિજી, ખેડૂતની વેદના આપ પૂછો ત્યારે ખબર પડે કે આ 2,000 રૂપિયા વિપક્ષ તો ચૂંટણીમાં કહેતા ગયા અમને જીતાડો, 1 ઓગસ્ટથી ખટાખટ તમારા બેંકમાં અમે 8,500 રૂપિયા નાખીશું. મને સભાપતિજી, હું તો રોજ મારા બેંકનું ખાતું જોઉં છું, હું રોજ મારા બેંકના એકાઉન્ટ ચેક કરું છું કે મારા ખાતામાં ક્યારે ખટાખટ પડે. દેશની મહિલાઓ રાહ જુએ છે, ગરીબો રાહ જુએ છે. આ ખોખલા વચનો આપીને ગરીબોની છેતરનારી કોંગ્રેસની સરકાર, મિત્રો, આ ભૂતકાળ ભૂલી શકાય એવું નથી. કોકને તમે ક્યારેક એને મૂર્ખ બનાવી શકો, સોરી, એને તમે છેતરી શકો, પણ કાયમ માટે છેતરી નથી શકાતા. પણ દેશના વડાપ્રધાન મોદીજી ગરીબોના બેલી બનીને, કિસાનોના તારણહાર બનીને આજે કામ કરી રહ્યા છે. અને એટલા માટે હું ગ્રામ્ય સ્તરમાંથી આવું છું. આ ગામડાને બેઠું કરવાનું મોદી સાહેબે એક સંકલ્પ કર્યો છે. અને એટલા માટે નાના ખેડૂતોને, શ્રીમાન ખેડૂતોને, જે લોકો સામાન્ય મોટું અનાજ પકવે છે, મકાઈ, બાજરો, જુવાર, જે ગ્રામ્ય સ્તર પર લોકો ખાય છે,
અને એ નાના ખેડૂતોના આજ વિશ્વના સ્તર પર મૂકવાનું જો કોઈ કામ કર્યું હોય મિલેટ્સના રૂપે તો મોદી સરકારે કર્યું છે. આજે હોટલોમાં ડિમાન્ડ વધી રહી છે માન્ય સભાપતિજી. અહીંયા મોદી સરકાર ખેડૂતોને બમણે આવક કેવી રીતે થાય, ખેડૂતની આર્થિક સ્થિતિમાં વધારો કેવી રીતે થાય, સુખાકારી કેવી રીતે થાય, એના સતત પ્રયત્નો આ બજેટની અંદર, આ બિલની અંદર પણ આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પ્રાકૃતિક ખેતી ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કિસાનો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે અને દેશભરના 1 કરોડ ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેડૂતોને તાલીમ આપવાનું, સહાયતા આપવાની જોગવાઈ પણ આ બિલની અંદર કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, પ્રાકૃતિક ખેતીનો માર્ગદર્શન મળે અને એટલા માટે જૈવિક ખેતી ઉપર ભાર મૂકીને ખેડૂતોને એની તાલીમ આપવા માટે, એનું માર્ગદર્શન આપવા માટે, એના લગતા બિયારણોની વસ્તુ પૂરી પાડવા માટે 10,000 એના કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવાની પણ જોગવાઈ આ બિલની અંદર કરવામાં આવી છે માન્ય સભાપતિજી. એટલું જ નહીં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ગામડાના નાના ખેડૂતો તેલીબિયા પકવે છે, સરસો પકવે છે. આપ તો રાજસ્થાનમાંથી આવો છો, ટ્રાઇબલ એરિયાની નજીક પણ આપ રહો છો. ત્યાં સરસો, મગફળી, સોયાબીન આ બધું જે પકવે છે મગફળી, એનું કાચું તેલ પણ કાઢે છે. અને એ સરસો તેલીબિયા પકવનારા આત્મનિર્ભર કેવી રીતે બને એની નીતિની જોગવાઈ પણ આ બિલની અંદર કરવામાં આવી છે માન્ય સભાપતિજી. એટલું જ નહીં માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ખેતીની સાથે પશુપાલન, મત્સ્ય ઉદ્યોગને પણ જોડવામાં આવ્યો છે અને એ બધું જોડીને ખેડૂત કેવી રીતે આગળ વધે એની જોગવાઈ પણ આ બિલની અંદર કરવામાં આવી છે. એવી એની બજેટરી જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. ખેડૂત ખેતીના સાથે પશુપાલન કરે, શાકભાજી પકવે અને એ શાકભાજી પોતાના ઘર વપરાશમાં તો વાપરે અને બીજું યોગ્ય જગ્યાએ એ વેચી શકે એવી માર્કેટની વ્યવસ્થા કરવાની જોગવાઈ પણ આ બિલની અંદર કરવામાં આવી છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, બીજો પાયો છે આ બજેટની બીજી જોગવાઈ છે ગરીબ મિત્રો. ગરીબ માન્ય સભાપતિજી, ગરીબને માટેના ઘણા બધા સૂત્રોમાં આપવામાં આવ્યા, એના બુગેરા ફૂટવામાં આવ્યા. ગરીબી હટાવો, સાચા અર્થમાં ગરીબી હટી ખરી? આ દેશની આઝાદી થઈ, ગરીબોનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર વોટ બેંક તરીકે કર્યો. એમાં ગરીબ, આદિવાસી, દલિત અને ઓબીસી સમાજનો એક વોટ બેંક તરીકે ઉપયોગ કર્યો. પણ સાચા અર્થમાં ગરીબી મટે, ગરીબીમાંથી ગરીબ બહાર આવે એવા પ્રયત્નો કર્યા ખરા? અને મને આજે આ ઐતિહાસિક સદનમાં કહેતા આનંદ થાય છે, દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ એક ગરીબના તારણહાર તરીકે એક બેલી બનીને ગરીબોના વારે આવ્યા. જે બેંકના દરવાજા સુધી કદી ગરીબ ડોક્યું નહોતો કરી શકતો એવા કરોડો લોકોના બેંક સુધી પહોંચાડવાનો. એટલું જ નહીં, ડીબીટીના માધ્યમથી એ બેંકનો કસ્ટમર પણ બન્યો, પ્રત્યક્ષ રીતે બેંકનો વ્યવહારો કરવા માંડ્યો. આ વાત ગરીબોને જો કોઈ કરાવી હોય તો મોદી સરકારે કરાવી. માન્ય સભાપતિજી, ગરીબ માટે મકાન, ચોમાસાની અંદર ગરીબનું છત ના હોય, ઉપર આસમાન હોય, નીચે ધરતી હોય. એક બિચારી બાપડી માં એના બાળકો લઈને કેવી રીતે રાત ગુજારે, અને એવી ચિંતા આજ સુધી કોઈએ ના કરી. ગરીબ કેવી રીતે છત વગર રહે છે, જોગી ઝૂંપડી વાળાને પૂછ્યું કરું કોઈએ? પણ દેશના વડાપ્રધાન 2014માં આ સંસદના એક મુખિયા તરીકે આવ્યા, એક નેતા તરીકે આવ્યા, વડાપ્રધાન તરીકે બેઠા અને જેણે ગરીબાઈ જોઈ છે, જેણે ગરીબ શું છે એની વ્યાખ્યા પણ જોઈ છે, અને જેણે આવા છત નીચે જિંદગી ગુજારી છે એવા દેશના વડાપ્રધાને સૌથી પહેલા ગરીબને છત આપવાનું શરૂ કર્યું. અને મને કહેતા આનંદ થાય છે, 4 કરોડથી વધારે ગરીબોને મકાન એક પિતા બને.
મોદી સરકાર ત્યાં અટકી નથી. એમને નક્કી કર્યું છે હજી પણ મારે કોઈ ગરીબ છત વગરનું ના રહે, એ મારે છત આપવાની છે. અને આવનારા દિવસોમાં 3 કરોડ મકાન આપવાની જોગવાઈ પણ આ બિલમાં કરવામાં આવી છે. માન્ય સભાપતિજી, આ બિલની અંદર મહિલાની સશક્તિકરણની વાત પણ કરવામાં આવી છે. મહિલાઓની વાત કરવામાં આવી. ભૂતકાળમાં વડાપ્રધાન તરીકે એક મહિલા પણ હતા અને ત્યારબાદ મનમોહન સિંહના સરકારમાં પણ એક મહિલા સર્વેપરા હતા. પણ મહિલાઓ માટે એમણે કશું જ ના કર્યું. મહિલા સશક્ત બને, સર્વોપરી બને, સમોવડી બને એવું મહિલા માટે કંઈ જ ના કર્યું. પણ દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એક દીકરી ભણે, દીકરી ભણશે તો 7 પેઢીઓનું કલ્યાણ થશે, બાપનું નામ રોશન કરશે અને સાથે સાથે આવનારી પેઢીનું નામ ઉજાગર કરશે. ખુદ મુખ્યમંત્રી તરીકે મોદી સાહેબ કન્યા કેળવણી રથ લઈને નીકળ્યા અને એમણે કીધું કે હું તમારી વચ્ચે ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું. અને ભિક્ષામાં શું માગ્યું? મુझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी पढ़ाओ. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે દીકરી ભણાવવા વાત લઈને નીકળ્યા. અને મને આજે કહેતા આનંદ થાય, તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડી, વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપ્યો, સાયકલો આપી, અનાજ આપ્યું, ગમે તેમ કરીને દીકરી ભણાવવા કર્યો. આજે ગુજરાતની દીકરીઓમાં શિક્ષણ મોખરે છે. મોદી સાહેબ ત્યાં અટક્યા નહીં. દેશના વડાપ્રધાન બને, સમગ્ર દેશની અંદર મહિલા સશક્તિકરણ બને, દીકરીઓ ભણે, દીકરીઓને બચાવવામાં આવે, સમાજમાં સન્માન મળે. એટલું જ નહીં, આ ગૌરવવંતા સંસદમાં નારી અધિનિયમ પણ પસાર કરવામાં આવે. આ સશક્ત કરવાનું કામ દેશના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે કર્યું છે. એટલું જ નહીં, આ બિલની અંદર વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે, બધું એની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે બહેનની સાથે એને સાથે આવતા નાના બાળકને રાખવા માટે શિશુગૃહની જોગવાઈ પણ કરવાની અહીંયા કરવામાં આવી છે. ને એટલા માટે હું નાણામંત્રી એક મહિલા જ, મહિલાઓની વેદનીને ઉજાગર કરતું આ બિલ છે. એટલે નિર્મલાજીને પણ હું કોટી કોટી વંદન કરું છું, અભિનંદન આપું છું. માન્ય સભાપતિજી, ગ્રામ વિકાસ ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. દેશના વડાપ્રધાન ગરીબોના સમર્પિત છે, એ દર્દીઓના કેટલા સમર્પિત છે. માન્ય સભાપતિજી, દેશની અંદર અતિ પછાત લોકો રહે છે. હું જે વિસ્તાર ગુજરાતમાંથી આવું છું, માન્ય સભાપતિજી, એ વિસ્તારમાં માત્ર 128 પરિવારો રહે છે. એ બિછડા સમાજના, અવિકસિત સમાજના, આખા દેશભરની આવી નાની નાની પરિવારોના સમૂહ એકત્રિત કરીને દેશના વડાપ્રધાને પીએમ જન મન યોજના 24,000 કરોડની અમલમાં મૂકીને આજે એ ગરીબ લોકો અન્ય સમાજનો હરોળમાં આવે એ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મને સભાપતિજી, આકાંક્ષી જિલ્લા, આ દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી એવા 112 જિલ્લાઓ અવિકસિત હતા, એમનો સર્વાંગી વિકાસ નહોતો થયો. આ સર્વાંગી વિકાસ કરવો હોય અને વિકસિત ભારત વિકસિત ભારત મોડલ રોલ બનાવવાનું હોય તો દેશના વડાપ્રધાને વિકસિત ભારત આકાંક્ષી જિલ્લા તરીકે જોડીને 112 જિલ્લાને વિકાસ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું. અને આ બજેટની અંદર 63,000 ગામડાનું ચયન કર્યું છે. અને 63,000 ગામડા અને મોટે ભાગે આદિવાસી લોકો વસે છે. અને એ આદિવાસી લોકોને લગભગ 5 કરોડ પરિવારોને, જનજાતિઓને આવરીને આદિવાસીઓનો વિકાસ થાય, આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અને એટલા માટે આ બિલથી આદિવાસીઓ ખુશ છે, આદિવાસી યુવાનો, આદિવાસી સમાજ પણ ખૂબ આ બિલની અંદર ખુશ. માન્ય સભાપતિજી, યુવાનોને આગળ વધારતું આ બિલ છે. અહીંયા પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ પ્રશિક્ષણ ઉપર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. અને લગભગ 4 કરોડથી વધારે યુવાનોને 5 વર્ષની અંદર પ્રશિક્ષિત કરવા
અને પ્રશિક્ષિત કરીને એમને રોજગારી પૂરી પાડવાની, અને રોજગારી કરીને એટલું જ નહીં, એમને યોગ્ય જગ્યાએ એમને પસંદગીનો રોજગાર મળી રહે એવી જોગવાઈ પણ તાલીમ આપવાની બાબત પણ આ બિલની અંદર કરવામાં આવી છે. માન્ય સભાપતિજી, આ સમગ્ર બિલ આમ કહેવામાં આવે ને એક દિશા આપનારું બિલ છે, દેશની કાયાપલટ કરનારું બિલ છે. અને એટલા માટે માન્ય સભાપતિજી, હું આપ સૌની વિનંતી કરું છું, આપના માધ્યમથી વિપક્ષી લોકોને, કે આ જ્યારે ગરીબોને તારણહાર કરનારું બિલ છે, યુવાનોની દિશા આપનારું બિલ છે, સર્વાંગી વિકાસ કરનારું બિલ છે, ત્યારે આવો આપણે સૌ મતમતાંતર ભૂલીને આપણને જે સુવર્ણ તક ઐતિહાસિક સદનમાં મળ્યો છે, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી આ જે મોકો મળ્યો છે, અને સુવર્ણ મોકાનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને નરેન્દ્રભાઈ આ વિકસિત ભારતના જે હકીકતલક્ષી જે રોડ મેપ લઈને ચાલી રહ્યા છે, આપણે બધા જ સાથે રહીને એમને આગળ વધારીએ. ધન્યવાદ. માન્ય સભાપતિ. સુશ્રી ડોલા સેન. Thank you, Chairman, sir, for giving me chance to speak, and thanks to our party, All India Tribunal Congress, for allowing me to speak on Finance Bill. I'll try to deliver my speech in Bangla, my mother language. Sir, we are thankful to all 16 opposition parties. We all are together. Please withdraw 18% GST on LIC and medical insurance, as not only we, the opposition, but Honorable Garkarji also requested you, Madam. স্যার, এই ফিনান্স বিলের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ফিনান্সিয়াল প্রস্তাবগুলি আমরা জানতে পারি। কাদের জন্য এই প্রস্তাব? আর্থিক প্রস্তাব স্যার, শিশুদের জন্যে। ভারতে 3 কোটি শিশু বয়সের তুলনায় খর্বকায়, মানে অপুষ্টিতে তার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয়নি। 1 কোটি শিশু আন্ডারওয়েট। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে আমরা জানি সম্প্রতি নিট আর নেট এক্সাম বাতিল করতে হয়েছে, আর আমাদের কোটি 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 শিশুরা শ্রমিক হতে বাধ্য হয়, পড়ার জন্য স্কুলে যেতেই পারে না। যুবক যুবতীদের জন্যে শুধু গ্র্যাজুয়েটের মধ্যেই স্যার প্রতি 10 জনে 4 জন বেকার। শ্রমিকদের জন্যে আগে 2006 থেকে 2013 প্রকৃত মজুরিতে বৃদ্ধির হার ছিল 6%, আর এখন 2014 থেকে 21 যা অনেক কমে মজুরি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে 1.4%। আমাদের পরিবারগুলির জন্যে বাড়ি বাড়ি প্রতিটি পরিবারের সঞ্চয় এখন 50 বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম, আর ফুড ইনফ্লেশন 9%-এরও বেশি। পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্যে আমরা যদি অতিরিক্ত রেল দুর্ঘটনার কথা তুলি, তাহলে ওনারা রেগে যেতে পারেন, রেগে গিয়ে রেলমন্ত্রী লোকসভায় চিৎকারও করতে পারেন। কিন্তু ইদানিং পরপর আমরা শুধু রেল দুর্ঘটনাই নয়, ব্রিজ বা সুড়ঙ্গ, রাস্তা বা শেড, এয়ারপোর্ট বা মন্দির, পার্লামেন্ট, কত কিছুতে গন্ডগোল দেখতে পাচ্ছি। মোরবি ব্রিজ, উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গ, কত নিরীহ সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। এই দায় কি করে অস্বীকার করবেন স্যার? মানুষের জীবনে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে আমাদের 40 কোটি জনগণ স্বাস্থ্য বা জীবন বীমা করার কথা কল্পনাই করতে পারে না। এসসি এসটিদের জন্য দেশে সম্প্রতি তফসিলি জাতিদের ওপর ক্রাইম বেড়েছে 13%, তফসিলি উপজাতিদের ওপর 14%। কৃষকদের জন্য প্রতিদিন আমাদের দেশের এই অমৃতকালে কৃষক বন্ধু যারা আমাদের অন্নদাতা, তারা 30 জন করে আত্মহত্যা করেন। আর আজ প্রায় 5 বছর ধরে আন্দোলন করে 1000 জনের ওপর প্রাণ হারিয়ে, শহীদ হয়ে, মার খেয়ে, অত্যাচারিত হয়েও মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এমএসপি কৃষকরা পান না, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করার পরেও পান না। আমাদের অর্ধেক আকাশ নারীদের জন্য জীবনের কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে সমানাধিকার যাদের জোটে না, আজ এত এগিয়ে থাকা বিকশিত ভারতে 50% নয়, সামান্য 33% রিপ্রেজেন্টেশন বিল পাশ করার পরেও ট্রেজারি বেঞ্চ মাত্র 13%, 13। আমাদের পরিবেশের সুস্থতার জন্যে 1987 সালে ম্যান্ডেটারি ফুড প্যাকেজিং মেটেরিয়াল অ্যাক্ট ঘোষণা হয়েছিল। তাতে 100% ফুড গ্রেন, 100% চিনি যাতে জুটে যায়, যাতে আমাদের শরীর ভালো থাকে। কিন্তু সেটাকেও এখন আমরা 80% ফুড গ্রেন আর 20% চিনিতে নামিয়ে এনেছি, যাতে আমাদের শরীর চুলোয় যায়, জুট তো উঠেই যাবে। রেলে গরিব, শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ যাতায়াত করে, তাই রেল আমাদের লাইফ লাইন। তাকে বেসরকারিকরণ করে সব কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। হকারবাদ, ভেন্ডারবাদ, শুধু ঝাঁ চকচকে কর্পোরেটরা থাকবে। তাহলে 80-90% রেল যাত্রী কি খাবে স্যার?
कि किनबे, उसका पास तो उतना पैसा भी नहीं है। हॉकर वेंडर तो मर ही जाएगा, रेल में जो ज्यादातर जाते हैं वो पैसेंजर भी मर जाएंगे क्या? কখনো ভেবেছেন? একটু ভাবুন, কেন 303 থেকে আপনারা 240 নেমে গেলেন? এই মানুষও তো বাঁচতে চাইবে স্যার, তাই না? আগের জামানার সবই তো খারাপ ছিল, সব বিকাশ এখনই হচ্ছে, সেই জন্য আপনারা বারবার এমার্জেন্সির কথা তোলেন, কিন্তু সেই সময় ব্যাংক, কোল, ইন্স্যুরেন্স এগুলোকে জাতীয়করণ, ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল। আর এখন আপনারা ব্যাংক, কোল, বিমা, রেল থেকে ভেল, সেল থেকে বিএসএনএল সব বিজাতীয়করণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, ডিন্যাশনালাইজেশন করছেন। প্রফিটেবল পিএসইউকে প্রাইভেটাইজেশন, কর্পোরেটাইজেশন, ডিসইনভেস্টমেন্ট করছেন। ন্যূনতম মজুরি থাকার জন্য আমরা পাই কি বাঁচার জন্য? যখন শুধু 2022 সালেই 62% আনস্কিল্ড ক্যাজুয়াল কৃষি শ্রমিক, ক্ষেত মজুর আর 70% নির্মাণ কর্মী, ঠিকা শ্রমিকরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি পায় না। বরং সবচেয়ে লাভজনক কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় 800-900 টাকা মিনিমাম ওয়েজ ঠিকা শ্রমিকদের, সেটাকেও লেবার কোডের মাধ্যমে 178 টাকার নিচে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তবে হ্যাঁ, এই বিকশিত ভারতের অমৃতকালে একটা সেকশন খুবই উপকৃত, সবচেয়ে ওপরের 1% আমাদের ওয়েলথের 40%কে কন্ট্রোল করছে। থ্যাংক ইউ ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ট্রেজারি বেঞ্চ। আমরা এটা বলতে চাই স্যার, আমাদের ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বাংলা, সেই বাংলা 24টি নাট্য দলের গুরু শিষ্য পরম্পরা গ্রান্ট এক ধাক্কায় শূন্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোট 70টি নাট্য দলের এই টাকা কাটা গেছে, 24টা বাংলার, 21টা মণিপুরের। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এটা করা হয়েছে। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে এই গ্র্যান্ট পুনর্নবীকরণ করা হোক আর বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসের এই প্রক্রিয়া বন্ধ হোক। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী আমি যদি এখন কাজ করি তাহলে পরের মাসের 15 তারিখের মধ্যে আমার মাইনে পাওয়ার কথা, সেটাও 3 বছর আটকে রাখা হয়েছে বাংলায়। কেন জিততে পারেনি 21 সালে? সেই কারণে স্যার, এনসিইআরটি টেক্সট বুক থেকে সংবিধানের প্রিয়াম্বল বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমরা যেন ভুলে না যাই, কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল 1-এ আছে, ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত শ্যাল বি ইউনিয়ন অফ স্টেটস। তার মানে আমরা কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কলোনি বা উপনিবেশে বাস করি না, আমাদের স্বাধীন দেশ হলো ইউনিয়ন অফ স্টেটস। ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্টের ফেডারেল স্ট্রাকচার বারবার ভুলে যাওয়া ঠিক না। তাহলে 24 সালের মতো উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া সবক শিখাएंगे স্যার। উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া উইল টেল দেম দ্য লাস্ট ওয়ার্ড এন্ড উইল টেল দেম দ্য ওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ চেয়ারম্যান স্যার। নেক্সট Mr. Vijay Sai Reddy. Mr. Vijay Sai Reddy. And I don't think it's appropriate to do cross talkings. When somebody is speaking, you should not speak. When you are speaking, they should not speak. Both the sides should at least accept, adopt. Thank you, Vice Chairman, sir. Thank you, Vice Chairman, sir. I'm thankful to the Honorable Finance Minister and also my party President Sri Jagan Mohan Reddy Garu for giving me an opportunity to speak on this finance bill. I submit to the Honorable Finance Minister some few important issues and through Honorable Vice Chairman, sir. Stock market investments have been disincentivized. This is what my observation is, because I will elaborately explain the reasons why how they have been disincentivized. STT, Security Transaction Tax, introduced to replace long-term capital gains tax, that is LTCG, but now both are existing. It has been, the objective with which it has been introduced, it has been lost, and now both STT and also long-term capital gains are both existing. Further, securities transaction tax has almost been doubled. Short-term capital gains tax has been increased from 15% to 20%, and long-term capital gains tax has been increased from 10% to 12.5%, is also detrimental to our middle class that invest in the stock market for their retirement benefits. Sir, I request the Honorable Finance Minister, Madam, to give an assurance to this august House. At least this 12.5% in future
will not be increased to 20%, so on and so forth. Further, the second issue, sir, the public sector banks have collected 8,495 crores as fines for not maintaining the minimum balance in the last 5 years from the savings bank. This is totally unfair, those who might have suffered the financial crunch. And a simple study can tell that this amount has been collected as fines from the poor people belonging to poor class and middle class, not rich and neo-rich, sir. So I request the Honorable Finance Minister to make the savings accounts in India zero balance savings account, irrespective of the fact that there are some other accounts where zero balance can be maintained under PM scheme, sir. Sir, this is nothing but, I have no hesitation to say, because it adversely affects the poor and middle class, I have no hesitation to say that it is a daylight robbery and making the poor more and more poorer and cleaning the bad finances of the banks at the cost of the poor. So, therefore, I request the Madam to withdraw this and to whatever fines that have been collected and can be refunded and credited back to the respective accounts, and also further in future not to collect this minimum balance amount as fines. Sir, the next issue which I would like to bring to your notice is the access to insurance in India. Sir, insurance sector faces challenges in penetration and density compared to global averages. While insurance penetration in India is 4.2% in 2021, the global average was 7%. Sir, similarly, the insurance density in India was $91, whereas global average was $874. These figures indicate that significant gap in access to insurance for people in India. Sir, the Indian insurance market is skewed towards the life insurance, which constitute 76% of the total premium. This 76% of what? This 76% of 4.2% of India's average, sir. So, whereas globally the life insurance accounts for 43.7%. So, therefore, I request the Honorable Finance Minister to recognize and realize the need of awareness campaigns to educate the public on the benefits of diverse insurance products and beyond the life insurance, sir. Development of comprehensive insurance policies with the stakeholders' consultation to achieve the goal of insurance for all by 2047. The objective should be insurance for all by 2047 is the slogan which should be implemented in its letter and spirit, sir. Particularly coming to the Andhra issues, my friend is here. Yes. Non-payment of dues. Sir, there is a costliest friendship. If at all there is a costliest friendship in India, it is between NDA government of Andhra Pradesh and Congress government in Telangana. Both the chief ministers. Sir, India's costliest friendship, I have no hesitation to say, between India, NDA and Congress in two Telugu-speaking states. Sir, between 2000, Madam is fully aware of it. Between 2014 and 17, AP Genco has supplied power to Telangana discoms under Schedule 9 of AP Reorganization Act in 2014 as per the loosely drafted act by my friend, sir. Sir, Telangana has accumulated a debt of 7,788 crores to AP Genco for electricity supplied during the transitional period, sir. The August 2022, central government has issued an order directing Telangana government to pay 6,756 crores of AP dues supplied under Section 92 of AP Reorganization Act, which he has drafted, sir. What is the loosely drafted? Yes. I request the Ministry of Power and Ministry of Finance, Honorable Minister, Madam,
to deduct the pending amount of 7,788 crores from the central devolutions to the government from the government of Telangana and settle the dues to Andhra Pradesh, sir. This is what is costing, because both the NDA Chief Minister and Congress Chief Ministers are together maintaining the friendship. Of course, friendship is okay. It cannot be at the cost of the people of Andhra Pradesh. There can be friendship. Between NDA can be friendly with the Congress party. We have no objection. But it cannot be at the cost of people of Andhra Pradesh, sir. Please keep quiet. I have not intervened when you have spoken. There has been a mistake in... John Britas, let him complete. Sir, we are in between. We are neither here nor there. We are neutral. We are for the people of Andhra Pradesh. We are Indians. We are first Indians and then people from Telugu people. Vijay Realize, Mr. Vijay Sai Reddy, you are a senior person. Why are you reacting? Sir, the next issue is... Your time is running away. If you keep on reacting... There are huge concerns regarding Polavaram project. Sir, I have one more. Polavaram irrigation project. Sir, due to cost overruns, time overruns, design changes, price escalation, updated norms for land acquisition, rehabilitation and resettlement, Technical Advisory Committee of Ministry of Jal Shakti accepted second revised cost of estimates of 55,548 crores at 2017 and 18 price levels in 2019, sir, which Honorable Finance Minister Madam is aware. I request the Honorable Finance Minister Madam to give investment clearance for this second RCE, which is still pending, affecting the project progress, sir. The Finance Minister, Honorable Finance Minister budget speech has mentioned that the government is committed to financing and early completion of the project. I have not seen any allocation that has been proposed in the appropriations or in the budget, sir. I request the Madam to address this issue, sir. I urge the government to specify how, without the allocation, they will expedite the completion of the Polavaram project. An urgent clarification is required on this issue, sir. Sir, the last important issue, because of the paucity of time, Ministry of Home. I request the Madam to increase the allocations to the Home Ministry, because every day in the last 60 days of rule in Andhra Pradesh, last 60 days, there are 36 murders. Police security has to be strengthened. Who is killing? You are aware of it. See, you are aware. It need not be explained. So, therefore, sir, I request the Honorable Madam to increase the allocations to the Home Ministry so that the security aspects can be taken off. Sir, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh had made some adverse comments in Andhra Assembly. In response to that, I would like to say that there has been a takeover in view of the killings. In view of the killings in Andhra Pradesh, there has been a takeover of less sophisticated version of Wagner Group in Andhra Pradesh. You are aware of Wagner Group. Who are the people hired to commit the violence, including killing? They follow their leader without question and follow a principle, no pity, with commitment of violence, with committing violence. I am sure whoever is involved in this type of activities will meet the same fate as the boss of Wagner Group. Sir, please, sir. My time is over. My time is over. I have explained the necessity to increase the allocations, and I have requested the Honorable Finance Minister, Madam, to increase the allocations to the Home Ministry in view of the situation that has been that is prevailing in the state of Andhra Pradesh, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much.
No, in garb of discussion on finance bill, he is bringing state issues. What? John, what is your point of order? Point of order. My point of order is under Rule 176. At 12:30 p.m. today, sir, I requested a discussion on the injustice done to Vinesh Phogat at the Paris Olympics 2020. No. On Vinesh Phogat, justice to Vinesh Phogat, sir. Please allow the 176 discussion, sir. That cannot be allowed because give an explanatory note here. Then only. I've given an explanatory note with my notice, sir. So chairman I've given it. Yes, sir. I've submitted it. Chairman will decide on it. Thank you, sir. The discussion is going on about the finance bill. Let it be. Yes. Kanimoji Somu. Thank you, Honorable Chairperson, sir. Thank you for the opportunity. Sir, as a member from the medical fraternity, I would like to express my views on some pertinent issues on the healthcare and investment. Sir, first, the budget allocation for 24-25. The Honorable Finance Minister has allocated 90,958.63 crore to the Union Health Ministry, which is too low for a country with a huge population of 140 crores. A paltry amount of rupees 3,301 crores to the Health Research Department, sir. The Indian Council for Medical Research, ICMR, is the premier research institute, conducting researches on various issues pertaining to diseases. But what will the scientific officers in ICMR and its research wings do with the meager allocation, sir? Sir, rupees 7,300 has been allocated to the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This is too low for the health insurance scheme to meet the sustainable development goals and its underlying commitment, which is to say, leave no one behind. But in reality, it actually leaves most of them. So the union government is laying 18% GST on the premiums of the health insurance, which is unjustifiable. The union government collects around 20,000 crores every year from levying 18% GST on the health insurance. This cannot be called as leave no one behind, sir. Sir, in providing medical insurance, there is a huge problem. The big difference between the cost of surgeries between the government hospitals and the empaneled private hospitals. The union government should form cost evaluation committee to fix the optimum cost of surgeries and the maximum entitled amount that the insurance companies provide to empaneled hospitals for performing surgeries to insured patients. Otherwise, the insurance companies reject the amount claimed by the hospital, sir. Sir, on GST, I would like to urge the union government to withdraw GST on medical insurance and all the life-saving medicines and OTs and laboratory equipment, sir. Sir, as a doctor, I can only say it will be an uphill task for the private-run hospitals to survive due to wrong policies and taxation by the union government. The operating, managing a hospital equipped with full-fledged medical equipments, scans, operation theatre, laboratory equipment, ICU ward, 20 to 25 beds with 10 to 12 doctors, 40 nurses, and a paramedical staff, for an example, with admin and hospital management and team and the rent for the building and security services. It is not an easy job. On all these services, GST is levied at the rate of 18 to 25%. As a medical fraternity, we are not able to get the refund because services rendered by the hospital and the doctors are classified under exempt services, which debar the doctors and hospital to claim the GST paid and get refund. Sir, I urge the union government to bring hospital services also on par to the export of services and goods who have GST 0% on the goods and services, avail input tax and claim refund. The same can be allowed for the hospitals and doctors. The doctors also come under the Consumer Act as similar other vendors. On the contrary, the benefits availed by the other vendors related to GST cannot be availed by the doctors and hospital, which is very, very unfair, sir. We are not able to take the input credit, sir. Sir, since the medical services provided by us attract zero GST, there is no way the GST paid on the hospital equipment can be recovered. Considering the high maintenance expenditure incurred for making things more worse,
Therefore, I urge the government to suggest to the GST Council to include a zero GST for all important medical and laboratory equipments and medicines as an agenda to be passed by the GST Council, and further to make suitable amendment in the GST Act. Sir, whenever a member asks the government a tough question, they immediately say, health is a state subject. Yes, sir, health is a state subject. But when it comes to on decisions and other things, according to Section 51 of the National Medical Code Act, every state government may, for the purpose of addressing or promoting primary healthcare in rural area, take necessary measures to enhance the capacity of healthcare professionals. But the union government, through the introduction of NEET, has taken a detrimental step to disturb the availability of the adequate specialist doctors to serve in the PHCs located in the remote and areas of the state. This is a breach of its own law by the union government, sir. Sir, the government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin, is implicating many innovative, inclusive special initiatives, such as the Chief Minister's Comprehensive Health Scheme and the Innuyur Kapam Dittum, which can also be implemented in the central government, sir. I take this opportunity to take care of the GST levied on the medical fraternity to be passed in the GST Council. Thank you, sir. Super. Thank you, Honorable Swamuji. Now, Mr. Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, सरकार से जब देश के लोग मांग करते हैं कि महंगाई कम कीजिए, तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कीजिए, तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेहड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में हैं, मुसीबत में हैं, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, छात्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अजय यादव छात्र जो अपने हक के लिए वहां की विश्वविद्यालय के छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहा है, उस पर 35 मुकदमे आपने कर दिया। 35 मुकदमे छात्रों के ऊपर आप कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हरियाणा का नौजवान हो, चाहे पंजाब का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान हो मान्यवर, अगर वो कहता है, राजस्थान का नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना, अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं, उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से
3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। मैं उन कंपनियों के नाम पढ़ के आपके सामने बताना चाहूंगा। मान्यवर, वो कंपनियां कौन सी हैं? आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन भारत की बैंकों को आपने कंगाल कर दिया। इसलिए यहां पर प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे तो आप प्रति व्यक्ति आय के मामले में मान्यवर 142वें स्थान पे हैं। यानी हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति आय अगर उसको आप देखेंगे तो यहां का इंसान 142वें पायदान पे खड़ा है, भले ही आप अर्थव्यवस्था में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो कौन लोग हैं मान्यवर, और कितना कर्जा माफ किया, कितना हेयर कट किया, आज पूरे देश को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। मैं उन कंपनियों का नाम पढ़ के और अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मान्यवर, एक कंपनी है आधुनिक मेटालिक लिमिटेड, इसके ऊपर कर्जा बकाया था 5,371 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने कर्जा चुकाया 410 करोड़ रुपए, 4,961 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29,524 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 5,000 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 24,472 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ किया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12,641 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 2,615 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बाकी था। ऑथेंटिकेट करेंगे ऑथेंटिकेट करेंगे ना सर हाँ, तो ऑथेंटिकेट कर देना। हाँ, कंटिन्यू। मैं ऑथेंटिकेट ज्यादा लंबा नहीं सर, पहले कंप्लीट करिए। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का है जवाब, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का। सर कंटिन्यू। सर, एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 1,538 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 5,029 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी लिमिटेड, 2,780 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 730 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 2,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, 47,158 करोड़ रुपए बाकी था, 19,350 करोड़ रुपए जमा किया, 27,808 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण स्टील लिमिटेड, 56,022 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 35,571 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 20,451 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। कैटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 7,522 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 1,266 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 6,256 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। 10 एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, 4,800 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 27 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 4,773 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। डेकॉन क्रॉनिकल होल्डिंग्स, 8,181 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 358 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 7,821 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 87,000 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 37,161 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 49,922 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। दिघी पोर्ट लिमिटेड, 3,057 करोड़ रुपए बाकी था, 651 करोड़ रुपए जमा किया, 2,406 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड,
लिमिटेड 13,175 करोड़ रुपए बकाया था, 5,320 करोड़ रुपए जमा किया, 7,855 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ईएमसी लिमिटेड 6,150 करोड़ रुपए बकाया था, 5,612 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एसआर पावर लिमिटेड 12,068 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 9,568 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड 49,471 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 8,455 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। गार्डन सिल्क मिल्क्स लिमिटेड 2,090 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 1,372 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। गुप्ता इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 3,327 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,257 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड 7,454 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 6,444 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड 7,365 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,674 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। कोहिनूर सीटीएनएल लिमिटेड 2,528 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 282 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। कोबरा बेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,865 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। कुमार मेटेलिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5,607 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 5,666 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एलेंको टीस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड 2,503 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 1,625 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एलेंको थर्मल पावर लिमिटेड 33,331 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 33,195 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड 11,015 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 8,123 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,783 करोड़ बकाया था, 2,435 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उड़ीसा पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 3,387 करोड़ बकाया था, 1,034 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आर्किड फार्मा लिमिटेड 3,527 करोड़ बकाया था, 2,492 करोड़ माफ कर दिया गया। उड़ीसा मैग्नेस एंड मिनरल्स लिमिटेड 5,389 करोड़ रुपए बकाया था, 5,079 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। प्रदीप लिमिटेड प्रदीप ओवरसन्स लिमिटेड 2,650 करोड़ बकाया था, 2,524 करोड़ माफ कर दिया गया। राम स्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5,800 करोड़ रुपए बकाया था, 5,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 41,000 करोड़ बकाया था, 36,000 करोड़ माफ कर दिया गया। रिको इंडिया 1,700 करोड़ बकाया था, 1,500 करोड़ माफ कर दिया गया। रुचि सोया 9,000 करोड़ बकाया था, 5,000 करोड़ माफ कर दिया गया। साई बर्धा 4,738 करोड़ बकाया था, 4,103 करोड़ माफ कर दिया गया। SCL मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 7,242 करोड़ बकाया था, 6,192 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। स्पेलन मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 3,632 करोड़ बकाया था, 3,194 करोड़ माफ कर दिया गया। उज्जैन इंटरनेशनल लिमिटेड 3,293 बकाया था, 3,096 करोड़ माफ कर दिया गया। उत्तम गलवा मेटेलिक्स लिमिटेड 3,634 करोड़ बकाया था, 2,523 करोड़ माफ कर दिया गया। उत्तम वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड 2,479 करोड़ बकाया था, 1,661 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। जियान स्टील प्राइवेट लिमिटेड 5,367 करोड़ बकाया था, 5,352 करोड़ माफ कर दिया गया। मान्यवर ये मेरे घर में बनाया गया आंकड़ा नहीं है। मान्यवर ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है। ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है। मान्यवर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उनको चुप कराए। ये मेरे घर के बनाया हुआ कागज नहीं है, ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया कागज है। हेयर कट के नाम पर आपने गर्दन कट किया है। 5,44,000 करोड़ रुपए, 5,44,000 करोड़ रुपए जो बकाया था 43 कंपनियों का, उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए आपने माफ किया है। इसका हिसाब दीजिए। ये भारत के बैंकों पर डकैती है सरकार की, इनके दोस्तों की, इनके लोगों की। मान्यवर बस अंत कर रहा हूं। अंतिम एक लाइन ये हेयर कट सर बड़े दुख के साथ
अंतिम लाइन कहना पड़ा। एक मिनट सर, अंतिम डॉक्यूमेंट दे रहे ये हो, ऑथेंटिकेट करूंगा सर, आई विल ऑथेंटिकेट इट सर, ऑथेंटिकेट इट सर, अंतिम एक लाइन सर, ये जो सर अंतिम एक लाइन सर, आप सर अंतिम एक लाइन, एक लाइन सर दीजिएगा, ये सारा आंकड़ा मैं दूंगा, एनसीएलटी के जरिए होगा सर, ये एनसीएलटी के जरिए होगा। मान्यवर मुझे अपनी बात कहने दीजिए मान्यवर। अच्छा बैठ, एक मिनट बैठ जाओ, आप खत्म कर रहे हैं, आप खत्म करो, एक मिनट आप खत्म करो, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, एक मिनट शांत रहो, ये एक मिनट शांत रही, ये एनसीएलटी के जरिए होगा ना? ऑथेंटिकेट करूंगा सर, ऑथेंटिकेट करूं, आपने कहा ऑथेंटिकेट करूंगा, कागज रखूंगा सर, और क्लैरिफिकेशन सर कागज रखूंगा, इनके चोरी के कागज रखूंगा सर, इनके भ्रष्टाचार का कागज रखूंगा, ये देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, नौजवानों का कर्जा माफ नहीं करते, मैं कागज रखूंगा सर। नेक्स्ट स्पीकर इज देवाशीष सामंतराय, देवाशीष सामंतराय, देवाशीष सामंतराय। अरे वो बैठ गया, अभी हमें को बोलने दीजिए, अरे हमें तो बोलने दीजिए। क्या रह गया अभी? क्या है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे एक मिनट देवाशीष जी, एक सेकंड, 30 से 31 सेकंड ले लो सर। कल माननीय खेल मंत्री जी ने 17 लाख रुपए विनेश फोगाट पे खर्चा किया, बताया प्रधानमंत्री की याद। देवाशीष सामंत रहे, आप बोलिए। देवाशीष सामंत रहे, देवाशीष सामंत रहे। देखिए शांत हो जाइए। बोल दिया ऑथेंटिकेशन के लिए, बोल दिया ऑथेंटिकेशन। कौन है माइक? शांत हो जाइए प्लीज। देवाशीष बोल। हाँ देवाशीष सर, पहले हाउस को तो ऑर्डर में लाइए। शुरू करो आप। अरे उसको लाइए ना, आप तो छोड़िए। आप शुरू करो, आप शुरू करो, बोलिए ना, आप शुरू करिए। आई एम स्पीकिंग सर। आप शुरू करिए, माइक चालू है। आई एम स्पीकिंग आप सर, आप लोगों का चालू है माइक। हाँ बोलिए आप देवाशीष। Thank you, sir, for bringing the House order. And this is the opportunity to speak about the budget when the minister herself is present in this House. I hope she is listening to everybody's budget speech on this finance bill. I will be Orissa specific. They had two manifestos, like two engines, they said double engine. एक नेशनल मैनिफेस्टो था और ओडिशा ने खुद मैनिफेस्टो बनाया था। उसमें they had said that under the Subhadra Yojana, every woman in Odisha will get a 50,000 voucher. Now, one engine is going that side, one engine is going the other side. दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर जी इधर ही है, सुभद्रा योजना लागू करिए। वो नवीन जी जो 45 करोड़ छोड़ के गए थे, एमएसपी देके उसको खत्म कर दिया आपने। एंड नाउ you know you are not talking about the manifesto. Again, betrayal of Odisha. You are playing with the sentiments. Shame. Bring it. Have the guts. You need 50,000 crores to implement Subhadra Yojana. What is your promises? Jumlabaji. Jumla. मैनिफेस्टो प्रोमिसेस होते हैं मैडम, मैनिफेस्टो कोई ऐसा बातचीत नहीं होती है। सही बोले। आपने मैनिफेस्टो आपके डबल इंजन दिए थे। एक मिनट भाई, हर बात पे टोका टोकी मत करो, बोलिए।
स्पेशल बोल रहा हूं, स्पेशल पैकेज कौन सा आधार पे दिया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर शुड क्लैरिफाई दैट. आंध्र को दे दिया, बिहार को दे दिया, हमें कुछ नहीं बोलना. बिहार को मूर्ख बनाया भाई साहब बोल रहे हैं. अरे वी हैव अ जेन्युइन डिमांड सिंस लॉन्ग. नवीन बाबू इज क्लेमिंग you are taking minerals from Odisha to all the states. We have got a 22% tribal population. The minerals once finished, over the years, when the minerals will no more be there, what will happen to the state? Have you thought about it? That is why we are asking for a special package. And the budget has no mention. You give money to Polavaram. Friend was saying that it has escalated to. It's a project which needs Odisha's consent. The river emanates from Odisha. You have 20 MPs who have not yet taken up the issue of Mahanadi. And all of those MPs live along both sides of the Mahanadi, is their constituency. This hypocrisy of the budget, I don't know if my friends in the Treasury bench want to remain quiet about it, it's fine. But friends of this side have all spoken. A majority of this House is opposition today, madam. Yes. Speaker, sir. Yes. And we have voiced our concern. I hope she will go back to her drawing boards and at least give us a patient and judicious hearing. All the states who have spoken about their problems here. I'm going to a very small thing. Indexation of tax. What happens to the pensioners? What happens to the middle class? They don't get a benefit out of it. Please, madam, through you, sir, they should go to the drawing board again. Give this to the poorer sections, the benefits. You have, like all of us, we have been demanding withdrawal of GST on medical services. Yes. Yes. Repeatedly. I'm sure my friends on the Treasury bench also agree with me that they also, when they want to go and give a health insurance, 18% GST dene padega. Life insurance dene padta hai. This money goes to you, goes to the central government, and you do your projects, development projects from that money, thousands of crores. A person whose life savings he puts in a insurance, you are taking away 18%. Shame. He does 1 crore policy, 18 lakhs goes away. What is this called? I don't know what is. It's a daylight robbery of the public. I'm sure your silence, Treasury bench silence, is in a way agreeing to whatever I am saying. Yes. Please accept, this is the truth. GST Council. Minister wants to say something. Sure, madam. With pleasure. We are waiting for it. Nirmala ji, you want to respond? What about small investors? Where does the MSME stand? He's not yielding. Listen, I am also a politician in my right. I have also seen governments. And I have seen stable governments. And this is not a stable government. Yes. Take it from me. अरे भाई ठहरिए बिहार और आंध्र तब बोलना. You are forgetting 204. Don't talk to them. 204. Samantara, you talk to them. Original members are here. And out of 204, sir. Don't talk to them. 100 plus belong to DMK
SP, Tribunal Congress, they are almost 110. And if the other 100 join them, they will go. If they go to... Talk about bill. So, right? This simple calculation. Odisha के लिए तो आपका government आया है. Odisha को तो कुछ दे दो. Devashish, you finish here. Why are you addressing them? You finish yours. Yeah, if they don't want to, sir, if they don't want to listen to the truth, sir, they have to listen. Your mic is on. I am going on, sir. Sir, it is not at all. Your mic is on, so everybody is listening you. You speak and finish it in 15 seconds. These neglects that on this budget, that they have not given justice to the regional aspirations of this country. The regional aspirations of this country in this federal structure has to be addressed to all the states. And instead of that, when we ask for it, they take it otherwise. They take it offensively. Thank you. One minute, Mr. sir. Sanjay Yadav. 1 minute, sir. 1 minute, sir. 30 You're seconds, sir. wasting your time talking to them. You should speak. No, I was talking to you, Your sir. mic is on, so why don't you... I got distracted now. Sir, they have made their promises. Finish your 30 seconds more. That's it. Yes. I am only requesting through you, sir, that the promises they have made, please fulfill them. Otherwise, the writing is very clear on the wall. Thank you, sir. Mr. Sanjay Yadav. धन्यवाद महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं, लेकिन एनडीए बीते 10 वर्षों में एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का हम विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि इनकी आर्थिक नीतियां चंद उद्योगपतियों में उत्साह, आय और आशा बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर आम देशवासियों में गरीबी और निराशा का संचार करती है और निराशा को बढ़ाती है। महोदय, इनकी आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि चंद उद्योगपतियों के उत्पाद हम सब 140 करोड़ भारतवासियों के घरों में आते हैं तो उद्योगपति अमीर से अमीर हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के, किसानों के उत्पाद जैसे चीनी, दाल, गेहूं, चावल, सब्जी हम सब के घरों में जाते हैं तो वो किसान और ग्रामीण गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये इनकी आर्थिक नीतियों की विफलता है और ये विचारणीय विषय है। इन आर्थिक नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। महोदय, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक युवा आबादी वाला भी प्रदेश है। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार है और दिल्ली में बीते 10 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार है। इस एनडीए सरकार ने बिहार को गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बना दिया है। बिहार के किसानों की प्रति व्यक्ति आय देश में बिहार 28वें नंबर पे है और प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार देश में सबसे नीचे है और गरीबी में भी बिहार सबसे नीचे है। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य का रिश्ता जो है वो दिया और बाती और अंकुर और माटी का रिश्ता होता है। तो इन्होंने बजट में भी बिहार को छांट दिया, बिहार को कुछ नहीं दिया। जहाँ बिहार को स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता थी, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज की आवश्यकता थी, वहाँ इन्होंने, इस एनडीए सरकार ने हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पाटलिपुत्रा से मैक्सिमम सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन बदले में बिहार को मिनिमम सपोर्ट भी नहीं दिया। बिहार में ना तो उद्योग लगाने का जिक्र है, ना कोई इंडस्ट्री क्लस्टर लगाने का जिक्र है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि कपड़ा मंत्री भी बिहार से हैं। प्रधानमंत्री जी की एक योजना है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। पूरे देश में 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने की योजना है, लेकिन बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क का कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहीं बैठी हुई हैं, उनके संज्ञान में कुछ आंकड़े लाना चाहूँगा।
बिहार का CDR क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देश में सबसे कम है। यानी बिहार के आम बिहार वासियों से बैंक, कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा वहाँ डिपॉजिट होता है, लेकिन बदले में उनको कोई कर्ज और ऋण नहीं दिया जाता। आप KCC लोन पिछले 10 वर्षों के बिहार में आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने लोन दिए गए, अगर वो आंकड़े आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, उसके बावजूद बिहार में KCC लोन का डिसबर्सल बहुत कम है। और ये तब है तब NPA बिहार में सबसे कम है, यानी वहाँ के लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी बैंकों का बिहार के प्रति नकारात्मक रवैया है। इस बजट में बिहार के लिए ना तो कोई नई ट्रेन शुरू करने का जिक्र है और ना ही कोई कारखाना। आखिरी कारखाना बिहार में 2004 से 2009 के बीच में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने 3 रेल कारखाने बिहार को देने का काम किया था। उसके बाद से बिहार में कोई कारखाना नहीं लगा। इन्होंने बिहार में एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ विशेष नहीं दिया, ना ही बिहार के सुप्रसिद्ध दुग्ध उत्पादों मखाना, मक्का, आम, लीची, केला इत्यादि को प्रमोट करने के लिए कोई प्रावधान और आवंटन किया, और ना ही बिहार में बंद चीनी मिलों को शुरू करने का कोई जिक्र है। चुनाव में प्रत्येक भाषण में दिल्ली से जब लोग बिहार जाते हैं तो हर बार आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम चीनी मिलों को शुरू कर देंगे, लेकिन कभी भी अभी तक 10 वर्षों में एक भी चीनी मिल इन्होंने शुरू नहीं की है। महोदय, इनकी रंगीन फाइलों में किसानों का जीवन सुनहरा और कलरफुल इनको नज़र आता है, लेकिन वास्तव में वो ब्लैक एंड वाइट और कोरा है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों का वक्तव्य सुन रहा था, ये किसान के, आम आदमी के बारे में इतना कुछ कह रहे थे कि सब कुछ खुशहाल हो गया, संपन्न हो गया, किसान सर्वगुण संपन्न हो गया, उनमें इतनी खुशहाली आ गई, संपन्नता आ गई। लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आप अपने किसी परिवार में परिजनों को, बेटों को, बेटियों को किसान बनाना चाहेंगे? महोदय, इस बजट में इन्होंने ना तो कोई, बिहार के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, इन विषयों को एड्रेस नहीं किया गया। अतः मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के बारे में आप विशेष ध्यान दीजिए। आपको बिहार से विशेष समर्थन भी मिला है, आप मैक्सिमम सांसद भी आपके चुन के आए हैं। थैंक यू महोदय। Thank you. Now Mr. Ravichand Vadiraju. Mr. Ravichand Vadiraju will speak in Telugu. థ్యాంక్ యూ సార్ ఉపసభాపతి ధన్యవాదాలు సార్. मैं తెలుగు में बोल रहा हूँ. సమయాభావం వలన నా ప్రసంగం కేవలం ఒక ముఖ్యమైన సహకార రంగానికి పరిమితం అవుతున్నాను. ఇది కేవలం రైతు సబ్జెక్ట్ కాబట్టి 2021 జూలై 6న గౌరవ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి హయాంలో మన దేశంలో కొత్తగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ప్రవేశపెట్టారు. అందులో భాగంగా సుమారు 8 లక్షల సహకార సంఘాల సమగ్ర సమాచారం రూపొందించి వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి బ్యాంకులను, సహకార సంఘాలను, ఆఫీసులను కంప్యూటరైజ్ చేయడం వలన పారదర్శకత పెరిగి సభ్యులకు ప్రయోజనం చేకూరింది. గవర్నమెంట్ ప్లేస్ పోర్టల్ ద్వారా దాదాపు 559 సహకార సంఘాలను కొనుగోలుదారులుగా అవకాశం కల్పించడం మంచి పరిణామం. దీని ద్వారా దాదాపు 67 లక్షల మంది క్రయ విక్రయదారుల ప్రక్రియను స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. అట్టడుగున ఉన్న ప్రజలను వృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను. గతంలో ప్రవేశపెట్టిన పలు బడ్జెట్ అంచనాలు, వాస్తవ ఖర్చులతో పాటుగా కొత్తగా 2024 బడ్జెట్ల కేటాయింపులు నేను కొన్ని అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అందులో నేను కొన్ని అంశాలను హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అయితే సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో ప్రభుత్వం చూపిన ఉత్సాహం, అప్పుడు కనపరిచిన చిత్తశుద్ధి ప్రస్తుతం లోపించినట్లు స్పష్టమవుతుంది. గడిచిన పలు బడ్జెట్లో చేసిన కేటాయింపులు, ఖర్చు చేసిన నిధులు తీరు చూస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. 22-23 బడ్జెట్లో ఈ రంగం కింద సుమారు 900 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 2023-24 బడ్జెట్లో తొలుత కేవలం 55 కోట్లు కేటాయించి ఆ తర్వాత 300 కోట్ల అంచనాలతో సవరించారు. ప్రస్తుత 24-25 బడ్జెట్లో 500 కోట్లు అయితే కేటాయించారు. అయితే ఈ కేటాయింపులు కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనకు తోడ్పడతాయో లేదో సమీక్ష చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేసుకుంటున్నాను. గడిచిన 10 ఏళ్ల కాలంలో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతు, మహిళ, చేనేత, పలు వృత్తి కార్మికులకు ఆయా సహకార సంఘాల ద్వారా ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం వల్ల తెలంగాణ గ్రామీణ ఆర్థిక పురోగతి సాధించిందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ పథకాలైన ఒకటి సహకార శిక్షణ మరియు విద్య, 2 సమగ్ర వ్యవసాయ సహకార పథకం గురించి 2 అంశాలు మీ దృష్టికి తెస్తున్నాను. 2022-23 బడ్జెట్లో సహకార శిక్షణ విద్య కోసం 55 కోట్లు కేటాయిస్తే అందులో ₹1 కూడా ఖర్చు చేయలేదు. సహకార శిక్షణ విద్యకు ఉన్న ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పునఃపరిశీలన చేసి నిధులు కేటాయింపు పెంచాలని కోరుతున్నాను.
దీనివల్ల రైతులు, వ్యవసాయ విద్య చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు, యువకులు మరియు విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సమగ్ర వ్యవసాయ సహకార పథకం ISAC కోసం 2022-23లో 370 కోట్లు కేటాయించగా 24-25 బడ్జెట్లో ఈ పథకానికి ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించకపోవడం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. సహకార రంగంలో సప్లై వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా లేకపోవడం, మౌలిక సదుపాయాలు, రవాణా, మార్కెట్ లింకేజ్ వంటి కారణాలతో పంటలు పండించిన రైతులు తర్వాత ఎక్కువగా నష్టపోతున్నారు. పంట అనంతర నష్టాలు. ఆహారం మరియు వ్యవసాయ సంస్థ FAO ప్రకారం భారతదేశం యొక్క పంట నష్టాలు 40% వరకుగా ఉన్నాయి. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది దాదాపు 15% అంచనా వేసింది. ఈ నష్టాలకు సాంప్రదాయ వ్యవసాయ రంగంలో అసమర్థత, సరిపడా నిల్వ సౌకర్యాలు లేకపోవడం, అధ్వాన్నమైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకపోవడం వలన కారణమని చెప్పవచ్చు. ఆహార ధాన్యాల వృధా. భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం $14 బిలియన్ల ఆహార ధాన్యాలు వృధా అవుతున్నాయి. ఈ నష్టం 84% బియ్యం, 14% గోధుమలు కలిగి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 63,000 PSCSలను కంప్యూటరీకరించే ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. దీంట్లో 15,783 PSCSలు ఇప్పటికే ఆన్బోర్డ్గా పనిచేస్తున్నాయి. క్రెడిట్ యాక్సెస్ కనుక మెరుగుపరచడానికి ఈ ప్రాజెక్టును వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి తెస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి పాలనలో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూలమైన సహకార రంగం బలోపేతానికి పెద్ద ఎత్తున కృషి చేయడం జరిగింది. దీనివలన ఆర్థిక అనుబంధ సహకార రంగాలు అద్భుతంగా ప్రగతిని సాధించాయి. కొత్తగా 8,000 గొర్రెల పెంపకందారుల సొసైటీలను నెలకొల్పి సుమారు 5,000 కోట్లతో లక్షలాది యూనిట్ల గొర్రెలను పంపిణీ చేశాం. 3.78 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాలను కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం 3,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలను అందజేసింది. రైతులకు రుణాలు, పెట్టుబడి సాయం, గిట్టుబాటు ధరలు అందించడం వల్ల పంటల ఉత్పత్తి భారీగా పెరిగి వాటిని నిల్వ చేసుకునేందుకు కొత్తగా గోదాముల నిర్మాణం కూడా చేపట్టడం జరిగింది. రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలు FPOలను ప్రోత్సహించడం, మార్కెటింగ్, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, కూరగాయల ఉత్పత్తి సమూహాలకు ప్రోత్సాహం వంటి కార్యక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి. సహకార సంఘాల్లో సాంకేతికతను జోడించడం, సభ్యులకు సామాజిక భద్రత పథకానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ప్రోత్సహించాలి. ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో వ్యవసాయ వ్యాపార కేంద్రాన్ని నెలకొల్పాలి. ఇది గ్రామీణ యువత, మహిళల్లో ఆర్థిక సాధికారత సాధించడానికి దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సహకార రంగం పైన మాత్రమే మాట్లాడడానికి కారణం దేశానికి రైతే వెన్నెముక, దేశానికి రైతే అన్నదాత, రైతు శ్రేయస్సే ముఖ్యం. కాబట్టి మరి మన యువతకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలంటే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించి మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి, తద్వారా రైతులు, యువకులు, మహిళలు కూడా చైతన్యం పెంపొందించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు. జై తెలంగాణ, జై భారత్. Now Mr. Sanjay Seth. महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये बजट एक बहुत ऐतिहासिक बजट है और अगर इस बजट को आप ध्यान से देखेंगे तो जिस ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन सारी बातों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस बजट में दिखता है। ये बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की एक संकल्प का प्रतीक है। ये बजट कृषि से लेकर कौशल, सामाजिक न्याय से लेकर अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र और वर्गों का विकास का संकल्प है। विपक्ष ने ये एक झूठ फैलाया है कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए नहीं है, लेकिन सरकार ये समझती है कि मिडिल क्लास हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। टैक्स पेयर्स देश की अर्थव्यवस्था होते हैं और वही इस हमारी बैकबोन है, और हम कभी भी क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? वन सेकंड, किस रूल में? रूल दूर कर रही हूँ सर। व्हाट इज द रूल? सर, रूल नंबर 176 के अंतर्गत मैंने एक नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए। साकेत गोखले जी ने भी दिया विनेश फोगाट पे चर्चा करने के लिए। ये आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो भी एक आम घर से आती हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं उस पर चर्चा हो सर। 176 के अंतर्गत पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। आम आदमी की
176 मिलियन। तो बोला नहीं जाता। प्लीज जी, और मिडिल क्लास को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनके हितों को पूरा ध्यान रखते हुए हमने इस बजट में टैक्स की स्लैब में काफ़ी कमी की है। जहाँ 2014 में हमारे यहाँ 2 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, आज 2025 में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस बजट में हमने 9 प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत हमारी सरकार ने हर नीति, प्रक्रिया, नियम और कानून को सरकार केंद्रित से जन केंद्रित बनाने पर जोर दिया है। हमने इस बजट पर किसान व कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं। यहाँ 2013-14 में एग्रीकल्चर का बजट 27,000 करोड़ होता था, वहीं आज 2024-25 में इस बजट में 1,52,000 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण व कल्याण की योजनाओं के लिए इस बजट में 218% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 में 97,134 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में एक महिला है जो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जब मुद्रा योजना शुरू हुई तो उसने एक उद्यम लगाया, एक लोन लेके, और आज वो खुद आत्मनिर्भर है और 10 महिलाओं को नौकरी दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने देश के टैक्सेशन में जो रिफॉर्म किए हैं वो होलिस्टिक हैं, जिसका परिणाम ये है कि 2013-14 के मुकाबले 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में 366% की बढ़ोतरी हुई है, तथा टैक्स रेवेन्यू भी हमारा 3 गुना बढ़ा है। 1 जुलाई 2017 को सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस का कॉम्प्लेक्स के जाल को हटाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का ऐलान किया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा एक बदलाव है टैक्सेशन में। पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हर वस्तु के दाम बढ़े हुए होते थे, परंतु जीएसटी लगने के बाद इसमें काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए हैं। और इसका उदाहरण एक ये है कि अगर आप चावल, दही, लस्सी, अनपैक्ड वीट को अगर उदाहरण लेंगे तो जीएसटी लगने के पहले इसमें 2.5 से 4% टैक्स हुआ करता था, अब 0% टैक्स है। आज जीएसटी का रेवेन्यू रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है और इससे हमारे स्टेट्स को भी काफ़ी रेवेन्यू का फायदा हो रहा है। हमारे आईटी इनकम टैक्स के नियमों में भी काफ़ी सरलीकरण हुआ है। हमने फेसलेस टैक्स असेसमेंट करके जनता के लिए टैक्स फ्रेंडली माहौल दिया है, तथा इन नियमों के अगले 6 महीने तक रिव्यू करने की भी हम लोगों ने इसके अंदर एक प्रावधान रखा हुआ है। हमने इसी दशा में बजट के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एक प्रावधान था, जिसके ऊपर कई प्रक्रियाएं आई, और उसको सुझाव को मानते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने एक और दूसरा तरीका भी उसके अंदर दिया। तो आज जनता के पास 2 ऑप्शन है जिसमें उसको ठीक लगे वो उस टैक्स को भर सकता है। ये हमारी एक प्रक्रिया पूरे बजट की ऐसी है कि जिसमें जनता का ख्याल पहले है, अपना सरकार बाद में कोई चीज नहीं देख रही है, सिर्फ जनता का ध्यान दे रही है।
आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने बहुत सारे काम किए हैं। जहां 2016 में लगभग 300 स्टार्टअप्स थे, आज 1.3 लाख DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिसमें करीबन 100 यूनिकॉर्न हैं। और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एंजल टैक्स को भी हटा दिया है और इससे पूरे स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है तथा मुद्रा लोन्स में भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अब 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन आपको मिल सकता है। हमारे बैंक्स आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारे बैंक्स प्रॉफिट में हैं। उनके पास लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं है और जिसकी वजह से आज किसी भी उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए और व्यवसाय करने के लिए बैंक से बहुत आसानी से लोन मिल रहे हैं। अगर आप कोरोना का काल देखें तो जहां पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, वहीं हमारे देश में उस पीरियड में बैंकों ने सारे उद्यमियों को अतिरिक्त धन देके इस पूरी अर्थव्यवस्था को आज इतना बढ़ाया है कि आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमने इस बजट में कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म की है और इसका सबसे बड़ा फायदा कैंसर के मरीजों को हो रहा है, जिसके इंपोर्ट की ड्यूटी खत्म होने से उनकी जो दवाइयों का बिल है वो बहुत कम हुआ जा रहा है। माननीय सभापति जी, इस बजट में जम्मू और कश्मीर के लिए भी विकास के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। उनके विकास में हमने 1,51 करोड़ रुपया 1,51 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किए हैं और आज धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लो इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे रोजगार अपने आप जनरेट हो रहा है। वहाँ पे बाहर देश भर से लोग जाके वहाँ पे टूरिज्म के लिए अपने अपने होटल और व्यवसाय बढ़ा रहे हैं और वहाँ के आदमी आज पूरी तरह से खुशहाल हो रहे हैं। टेररिज्म बहुत कम हो गया है। माननीय सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत जीडीपी के लिए एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ा सहयोग देता है और उसके अंदर रोजगार के सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं लोगों को और 248 इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट सेक्टर के साथ चलती है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको इंडस्ट्री का स्टेटस अगर हो सके तो दें, जिससे कि इसके अंदर और काम बढ़ाया जा सके। लोगों का इसके अंदर इंडस्ट्री होने की वजह से उनको आसानी से लोन मिल सके और नए नए काम शुरू हो सकें, जिससे कि और रोजगार के अवसर बन सके। माननीय सभापति जी, ये बजट हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बजट के इस बिल का सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद। श्री जयराम रमेश। My party has 4 minutes and I propose to take exactly 4 minutes. Sir, in these 4 minutes, I would like to place before the Honorable Finance Minister 4 questions to which I was expecting answers from the budget, but for which I am still seeking the answers. The first question is, why is private investment still sluggish? In spite of very steep tax cuts, in spite of production-linked incentive schemes, in spite of constant encouragement by different spokespersons on behalf of the government, private investment, which is key to increasing economic growth, is still stagnating at somewhere between 20 to 25% of GDP. If you look at the trajectory, the private corporate investment used to be at this level. It fell over the last 8 years. It then started growing up, but it has stabilized at a level which is far lower
than what it used to be 10 years ago. Sir, without private investment, Indian economy will not flourish. It will not boom. We have to increase private investment. And the first question is, why is private investment simply not picking up? The rate of private investment. Private investment is, of course, increasing, but as a proportion of GDP, private investment is still very sluggish, and we are not going to hit the 8% growth target unless we are going to stimulate private investment. Now, there are various theories why private investment is not growing up. It is not growing up because of an atmosphere which is not conducive to private investment. Private investors are actually moving abroad and seeking citizenship of different countries. The economy is going through oligopolization in different sectors of the economy. But whatever the reason, I think this is a question that the Honorable Finance Minister will have to address, not today, but in the context of the next budget in February or thereabouts next year. So the second question, why is manufacturing as a proportion of GDP falling? Now, we are all in agreement. There can be no argument that manufacturing must flourish, must deepen in our country. But instead of increasing, manufacturing as a proportion of GDP has actually come down from something like 16.5% of GDP to about 14.5% of GDP. And I'll give you one simple example, which is a very telling example. In 2013-14, garment exports from India was $15 billion. In 2023-24, garment exports from India, $14.5 billion. So garment exports today is lower than the garment exports 10 years before. And today what has happened? Vietnam's exports are 2 times that of India. And Bangladesh has exported $45 billion of garments last year. So I would like the Honorable Finance Minister to ask the question, not today, in the context of the next budget, why is manufacturing as a proportion of GDP falling, particularly in labor-intensive sectors of the economy? Sir, the third question, why is private consumption not growing? Last year, private consumption grew only by about 4%. Now, private consumption is a locomotive of economic growth. Why is private consumption not growing? Private consumption is growing only at the top income levels. Sir, today, over 50% of all automotive sales in India are SUVs, the sports utility vehicles. It's no longer the entry Maruti vehicles, it's all the sports utility vehicles. Now, what does this show? It shows that there is consumption, there is purchasing power, but it is concentrated at the higher income levels. And there is no mass consumption taking place of mass consumer goods that will drive economic growth. So I would like the Honorable Finance Minister to again ponder over this question, why private consumption, private mass consumption is not growing. Finally, sir, my final question, why are wages stagnant in this country? Government's own data, economic survey's own data shows that real agricultural wages, inflation-adjusted agricultural wages, have fallen by 1% over the last 10 years. And the periodic labor force survey of the government shows that across the sectors, salaried class, self-employed, average real earnings have remained stagnant. Now, if wages remain stagnant, purchasing power will remain stagnant. If purchasing power remains stagnant, consumption will remain stagnant. So to summarize, Mr. Chairman, the economy has 4 engines of growth, not double engine. It's a quadruple engine. There's investment, there's consumption, that's government as well as private, and there's international trade. Now, all these engines of growth... Which is the fourth one? Except government investment. Which is the fourth engine? You have said only 3 so far. Look at the paper. Sorry, sir? You have named 4 engines, but referred only 3 by name. Which is the fourth engine? No. I said there is investment engine, there is consumption engine, there is government expenditure engine, and there is international trade engine. I said it. Item note, are you making the fourth engine? All engines of growth are not firing at the same speed. This finance minister has accelerated the speed of the government capital expenditure engine,
But the private investment engine is not going fast. The private consumption engine is not going fast. And of course, the international trade, over which she has little control, is not growing fast. However, the example of the garment industry shows that the problems of growth lie not so much in external markets, but in what we do internally. So I would again say, sir, the intent of the budget is one thing. The content of the budget is quite different. And the content of the budget has to address these four fundamental issues that I have raised. Thank you, sir. Prakash Chik Baraik. धन्यवाद Sir, 6 minutes. धन्यवाद सभापति महोदय। सर, फाइनेंस बिल में मुझे मेरा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एवं माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, मेरा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी मिला, मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं पार्टी को एवं मेरा लीडर को। इस बजट में जो देखा गया, चाय सेक्टर, जो टी गार्डन का जो समस्या है एवं चाय का जो समस्या है, चाय सेक्टर का एक भी बात बजट में रखा नहीं गया। पूरा भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 11 स्टेट में चाय की प्रोडक्टिविटी होती है, जहां मजदूर अपना मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हिसाब से बजट में अगर देखा जाए तो चाय बागान के गरीब मजदूरों के लिए, चाय इंडस्ट्री को बचाने के लिए 1 रुपया का भी फंड का अलॉटमेंट नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है। मैं अपना स्टेट पश्चिम बंगाल के लिए बोलता हूं। अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख वर्कर जो परमानेंट है, टेम्पोरी है एवं बीघा है, एवं 25 लाख जो डिपेंडेंट है वहाँ के नागरिक, इनके ऊपर एक घना अंधेरा छाया हुआ है। चाय बागान का मजदूर का बात कौन करेगा, व चाय के लिए कौन सुनेगा? मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो हाउस में है उनके माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री के पास बोलना चाहता हूं, इसके लिए बजट में चिंता किया जाए और स्पेसिफिक हिसाब से चाय के लिए एक पैकेज हो, नया चाय मंत्रालय शुरू हो। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो वेस्ट बंगाल करती है चाय की, इसके लिए विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। हम लोगों को देखा जाए तो 1951 अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार में जो फ्रेंच बेनिफिट कंपनी के माध्यम से वर्कर को देने का था, कंपनी ये बेनिफिट वर्कर को नहीं देता है। माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता दीदी के उद्योग से चाय सेक्टरों में कहीं पे क्रेश, तो कहीं पे हॉस्पिटल, कहीं पे बिना पैसा में राशन, तो कहीं पे बिना पैसा में जल की परिसेवा दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का अलॉटमेंट क्या है, ये कभी भी हम लोग नहीं देखे हैं। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता हूं, चाय के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया जाए। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर 2021-22 असेसमेंट ईयर में घोषणा की थी, 2021-22 में घोषणा की थी, चाय बागान के वर्करों के लिए सोशल एक्टिविटीज के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 3 साल बीत गया, 1000 करोड़ रुपया में पश्चिम बंगाल कितना पाया, अदर स्टेट कितना पाया? मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये सोशल वेलफेयर फंड का जो पैसा है, जो गरीब नागरिक एवं वहां के जो प्लकर्स हैं, जो 80% से 90% प्लकर्स, जो महिलाएं हैं जो प्लकिंग करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल के काम करते हैं, इनके लिए विचार किया जाए। हर काम रात को राज्य सरकार पश्चिम बंगाल पे कर रहा है। सोशल एक्टिविटीज देखिए या वहाँ के स्थानीय स्तर पर गरीब नागरिकों की परिसेवा देखिए, हर काम को राज्य सरकार कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी कर रही है। मैं इस बजट में देखा एरिगेशन अमेंडमेंट के लिए स्पेसिफिक तौर पे पश्चिम बंगाल को कुछ पैसा नहीं दिया गया। पैसा दिया गया किसको? सिक्किम को, बिहार को, असम को दिया जाए। अगर असुविधा है फंड अलॉटमेंट हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए क्यों? आज सिक्किम से जो तीस्ता नदी के रिवर का जो पानी आता है, सिक्किम का दूसरा सड़ाव अगर देखे तो दार्जिलिंग जिला पड़ता है जो पश्चिम बंगाल पे है, कालिम्पोंग पड़ता है, मोंगपो पड़ता है, जलपाईगुड़ी जिला का डाबग्राम फुलबाड़ी पड़ता है, जलपाईगुड़ी जिला का क्रांति पड़ता है, मालदा पड़ता है, जहां हजारों की जनसंख्या में 2023 के फ्लड में आदमी वहां पे मरे। स्टेट गवर्नमेंट गया, हम लोग खुद गए, माननीय मुख्यमंत्री के
निर्देश से हम लोग खुद वहां पे गए, लेकिन केंद्र सरकार का बजट नीति में हम नहीं देखे कि पश्चिम बंगाल को इरिगेशन अमेंडमेंट का पैसा दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बोलना चाहता हूं, इस बजट में हम लोग देखे मनरेगा का बात बोला गया, इस बजट में हम लोग देखे आवास प्लस का बात बोला गया, लेकिन 15,000 करोड़ रुपया जो मनरेगा का पैसा बंगाल पाती है एवं आवास प्लस का पैसा पाती है, एवं टोटल अगर स्कीम पे देखा जाए तो पूरा स्कीम पे अगर देखा जाए तो 1,71,000 करोड़ रुपया डिपार्टमेंटली वाइज जो बंगाल पाती है, ये गरीबों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा है। कोई 20 दिन, कोई 25 दिन, कोई 50 दिन काम करने के बाद में ये पैसा हम लोगों को दिया नहीं गया। क्यों दिया नहीं गया? करीबन 2021 के निर्वाचन हारने के बाद में आप लोग गरीब मजदूरों का पैसा को रोक दिए। जो जनजाति जनसंप्रदाय के आदमी काम किए थे वो पैसा को रोक दिए। ये पैसा रोकने का काम किसी का नहीं है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, इसको जल्द से जल्द देखा जाए। इसके बावजूद जीएसटी में 18% जो लाइफ इंश्योरेंस एवं मेडिकल इंश्योरेंस में जो जीएसटी का जो डिडक्शन है, इसको गवर्नमेंट विड्रॉल करे। ये ट्रीटमेंट का पैसा है, इसको गवर्नमेंट विड्रॉल करे। ये ट्रीटमेंट का पैसा है, मजदूरों का चिकित्सा का पैसा है, ये आम आदमियों का सुविधा का पैसा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो इंश्योरेंस एवं लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल में जीएसटी काटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, ये सभी का निर्णय है। प्रोविडेंट फंड का समस्या हम लोग बार बार बोले हैं। पीएफ केंद्र सरकार का ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार का ऑफिस है। पीएफ दफ्तर चाय बागान के मजदूरों को पीएफ पैसा देने में बहुत असुविधा करता है। स्पेसिफिक तौर पे देखिए, मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिले, गरीब आदमी का जो पैसा डिडक्शन करके पीएफ ऑफिस में हजारों हजार करोड़ रुपए जमा किया जा रहा है, ये पैसा उनका अधिकार का पैसा है, उनका पैसा है। ये पैसा उनको मिले एवं जल्द से जल्द मिले। मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। सबको मेरा जय हिंद, जय बांग्ला। धन्यवाद। Now next speaker, Mr. R. Girirajan. He will speak in Tamil. Thank you, Vice Chairman. Thank you for the opportunity to speak on finance bill. The middle class all over the country are very unhappy that they are paying the majority of taxes. They are not getting any tax reduction. Inflation has been high. The cost has been high. Student fees have gone up. Living cost has gone up. Equality of life in the cities remain more poor. வரிக்கு மேல் வரி வசூலிப்பதை மட்டுமே தொழிலாக கருதும் இந்த ஒன்றிய அரசிடமிருந்து ஏழை எளிய நடுத்தர வர்க்க மக்களுக்கு நன்மைகள் எதிர்பார்ப்பது மூட நம்பிக்கை என்று வடிகட்டிய முட்டாள்தனம் என்று மக்கள் கருதுகிறார்கள். சார், this budget திருக்குறள் missing. This budget திருக்குறள் missing. Funds for Tamil Nadu missing. Railway projects missing. Funds for railway project missing. Chennai Metro 2 project funds missing. Flood relief missing. GST compensation for Tamil Nadu missing. One junction, totally people of Tamil Nadu will miss the BJP. Mind it. Respected sir, now in Tamil Nadu, trending virally going on news regarding the Tamil Nadu railway projects. I read it on Tamil. ரயில்வேவின் ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரங்கள் அடங்கிய பிங்க் புத்தகம் இப்போது வரை வெளியிடப்படவில்லை. இது உண்மையா இல்லையா? ஆவணங்களை வெளியிடாமலேயே ரயில்வே துறையின் விவாதங்களை நடத்தி முடித்துவிட்டது இந்த ஒன்றிய அரசு. இது உண்மையா இல்லையா? பிங்க் புத்தகம் எங்கே? இந்த ஆண்டு ரயில்வேவுக்கு 2,55,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டதாக கூறுகிறார்களே, அதில் தமிழகத்தின் அகலப்பாதை ரயில் திட்டத்திற்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கினீர்கள்? இரட்டை ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கினீர்கள்? புதிய வழித்தடங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கினீர்கள்? மின்மயமாக்கலுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கினீர்கள்? இந்த ஒதுக்கீட்டு விவரங்கள் அடங்கிய பிங்க் புத்தகம் எங்கே எங்கே எங்கே? இந்த எளிமையான கேள்விகள் தான் எங்களுடையது. இதில் கட்டுக்கதைகளை மக்களை ஏமாற்றும் முயற்சியும் எங்கே இருக்கிறது? தமிழ்நாட்டிற்கு 0 மட்டுமே மிஞ்சி உள்ளது. முழுமையான ஆவணங்களை வெளியிடுங்கள். தமிழ்நாட்டு மக்கள் உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளட்டும். தமிழகத்தின் 10 புதிய பாதை திட்டங்களுக்கும்
3 முக்கிய இரட்டைப்பாதை திட்டங்களுக்கும் கடந்த காலத்தில் வெறும் 1000 ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டது. அதனை நான் சுட்டிக்காட்டிய பின் 23-24 பட்ஜெட்டில் ரூபாய் 50 கோடி, ரூபாய் 100 கோடி என்று ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் அது பாதுகாப்பு நிதி என்று கூறி திரும்ப பெறப்பட்டது. இறுதியாக கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 0. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 24-25 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டின் புதிய திட்டங்களுக்கு 150 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. அது தேர்தலுக்காக செய்யப்பட்ட வெற்று அறிவிப்பு. உண்மையான ஒதுக்கீடு என்ன என்பதை இந்த புத்தகம் வந்தால் தான் தெரியும். I would like to get reply from the Honorable Finance Minister. Sir, respected sir, this is the Union government has announced fund relief for the Bihar. Abundant cautionly, flood is not coming there. But in Tamil Nadu, cyclone Mischang devastating 5 districts of Tamil Nadu, namely Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram and Chengalpattu. But no relief has been, single naya paisa has been given by the central government. Sir, I come to on budget taxation. The poor became very poor and the middle class became the new poor. Of the total population of the 144 crore, only 5% are filing their taxes. Out of these 5% taxpayers, 70% taxpayers are having income less than 7 crore per annum. The rest 30% contributes the lion's share of total direct taxes collected by this government. India is the only country where the super rich, super taxpayers have several concessions under the individuals. Salarized class is penalized more than they bear. This is tax terrorism. The tax terrorism has impacted badly the economy of the country. It is very unfortunate the general taxpayers who contribute substantially to the development of this nation are looked down as only 1 minute, sir. They are the enemies of the state. Instead of treating them with the respect and the dignity, quite often they are subjected to harassment and harassed treatment. The power corrupts and absolute power corrupts. Absolute tax terrorism must be stopped at any cost. People of India expected a good tax reform, productive economic policies and the people-oriented schemes from the finance minister, but she has dashed their expectations. Sir, the total external debt has risen aggressive in the last 10 years. Till 2014, the total debt was 55 lakh crores only, but the 24-25, it has touched almost 189 lakh crores. That means in the last 10 years, the government has literally increased the debt burden in every Indian, a debt burden of 134 lakh crores, along with the interest and components of the people of India. This is a very bad position of the Indian economy. Sir, respected sir, I will come conclusion. The government has no mind to support the people who seek old pension scheme. The Honorable Finance Minister has conveniently forgotten the people who still, after the old tax regime, 30% of the taxpayers are still following the old tax regime. They cannot at the moment migrate the new tax regime. People have a feel that the Finance Minister neither knows economics nor politics. Maybe because she shy away from contesting the elections, she would not get the opportunity to see the expectations of the people at the ground level. Thank you, sir. Thank you, Gibson. Now, Dr. Jan Bitas. Thank you, sir. I would expect the Honorable MOS to diligently report the points which I make here on the floor of the House. The former MOS is distracting the present MOS. Please. Sir, that happens, Pankaj ji. As per the Constitution, sir, Giriraji, India is Union of States, not a colony of Delhi. Yes. Sir, we don't want any special status. Kerala doesn't want any special status. Give us some status. Yes. Some status. Consider as a state of India. That's all. Yes. So the other day, Honorable Finance Minister, while speaking, she was saying that Kerala went to Supreme Court and Supreme Court's remarks were in favor of the central government. Absolutely wrong. The Supreme Court decided to refer the matter to the constitutional bench because the court found it to be substantive enough for further perusal. Let me make it very clear. Sir,
Kerala pleaded with the union government. In an unprecedented way, Kerala contributed 6,000 crore for acquisition of land for the construction of the national highway. Sir, why we say the states are being relegated, the principles of federalism are being scuttled. I will cite you one statistic. 2019-20, Nirajbhai Suniye, Janse, the total cess and surcharges collected was 2,54,544 crore. 2023-24, the surcharges and cess collected by the sender went up to 5 lakh crore. You addressed to me, not to Neeraj. 96.81% increase happened there. That means the revenue of the central government in the form of cess and surcharges increased by 96%. Sir, every time finance minister, if the states are willing, we will put the petroleum products under GST. As though the states are blocking, the union is ever willing to help the petroleum consumers. Sir, I will dole out other statistics. Who is responsible for the hike in the retail price of petroleum and diesel? One statistics. 2023-24, the union government has amassed an astounding sum of, sir, please note this, 4,32,394 crores from petroleum sector through various taxes and cess. Sir, all the states put together, when the states garnered 4,32,000, all the states put together, you know what is the amount? 3,18,000 crore only. And last year, there has been an increase of 4,327 crores compared to the previous year, whereas the state, the share went down by 1,889 crores. This is the real picture. Sir, another thing. Now their pet project is centrally sponsored scheme. I have been always saying that if they are interested, let them come up with central sector scheme, which is funded fully by the union government. But cleverly, deftly, the central sector scheme allocation has been going down, whereas the centrally sponsored schemes, the project scheme is going up. I will tell you, sir, 23-24, it was 4,60,000 crore centrally sponsored scheme ga total amount. It went up to 5,05,978 crore in 24-25. The 40% of that amount, that tantamount to be almost 2 lakhs crore should be borne by the states. You are penalizing the states. Sir, in the budget, for how many? I will tell you. In the budget, no running commentary. Let him comment. There have been several corridors. I won't name the corridors. Several industrial corridors. We have been telling Kochi, Bangalore corridor, no mention. Now 100 industrial parks are being declared. Not even a single industrial park in Kerala. There is a natural calamity that has struck Kerala. Sir, what has happened? Yesterday I spoke about how we are being humiliated. There is a provision in National Disaster Management Policy to declare it as a calamity of severe nature. Why they are not doing it? I would request the government, the Prime Minister intends to visit Kerala, let him declare the Wayanad calamity as a calamity of severe nature. Yes. If he is not doing it, you don't have a cause to share with Kerala, and I would say that
you will continue to be anti-Kerala. Sir, railway के बारे में जितना बोला है, कवच के लिए पिछले साल इतना 17,000 crore allocate किया, ये पैसा भी खर्च किया नहीं. अभी they're quiet about it, and they talk about the safety of the railways. Are they genuinely interested in the safety of Indian railways? Sir, 1 minute. Sir, this I will show you. I will expose how this government doesn't walk the talk. In the economic survey, they said, we need to have FTA from China. Again, on 30th July, the Minister of Commerce saying that there is no rethinking at present to support Chinese investment. And again on 3rd August, the Secretary, Promotion of Industry and Internal Trade, Mr. Rajesh Kumar says that while speeding up of approvals of FDI, China should be considered. Who is the master, sir? The minister or the secretary? Is there a collective government? They are talking absolutely contradictory with regard to the policy of the government of India. At the end, I would only urge upon this government, treasury benches, please have little consideration for states like Kerala. All the states, even Bihar, Andhra, you declare a lot of projects, but I am sure that you are going to take them at the garden path. You will be repeating the bluffs and cheating which happened earlier. I would urge upon the government, be sincere to the people of India. Thank you, sir. Now, Mr. Govind Bhai Dholakia. Mr. Govind Bhai Dholakia. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्. Will you speak in Sanskrit? माननीय उपाध्यक्ष महोदय. अच्छा, हिंदी आ गई. सदन में उपस्थित सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करके इस उच्च सदन में आज मैं पहली बार मेरा बोलने का प्रारंभ कर रहा हूं. नमस्कार. सबसे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बजट पर मेरे को चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया है. मैं किसान पुत्र हूँ और गांव की स्कूल में 6 तक पढ़ा हूँ और फिर भी भगवान की कृपा से 2013 से मैं अहमदाबाद IIM में हर साल लेक्चर देने को जाता हूँ. मैंने 60 साल पहले डायमंड बिजनेस में वर्कर के तौर पर काम शुरू किया था और आज 7,000 लोगों का फैमिली मिलकर काम कर रहे हैं. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने के लिए उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं. माननीय सभापति जी, मैं बजट के बारे में अपने विचार सदन के सामने बड़ी विनम्रता के साथ रख रहा हूं. मोदी सरकार ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण पहलों की ओर कदम बढ़ाए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और राष्ट्र को विकसित एवं मजबूत करने में मदद करेगा. महोदय, इस बजट में सेवा, सुशासन और राष्ट्र कल्याण की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृष्टि को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है.
माननीय सभापति जी, एक किसान और व्यापारी होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम सब जानते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी हमारे देश के अर्थतंत्र की मजबूती पर विश्वास जताया गया है। इस बजट में हर क्षेत्र की वृद्धि के लिए ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक, कृषि क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक, हर क्षेत्र में निवेश की गति को तेजी दे जा रही है। क्षेत्र में कोई भी हो, योजनाएं बनी हैं, योजनाएं बनी रही है, शुरू हो रही है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने भारत के भविष्य के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं गुजरात और सूरत का रहने वाला हूं, इसलिए मैं आज गर्व से कहूंगा कि माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने सूरत को संवार दिया है। शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में शहरों को एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल परियोजना और कई सारी सुविधाओं के माध्यम से स्मार्ट शहर बनाने के लिए सरकार तेज गति से दौड़ रही है। माननीय श्री सभापति जी, मैं विशेष रूप से सूरत में मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यह परियोजना न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सुगम बनाएगी। 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति जी, मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि 2014 में सूरत एयरपोर्ट पर केवल 4 फ्लाइट आती थी, जो आज 2024 में 34 फ्लाइट आती है। सूरत को विश्व के साथ जोड़ने के लिए मोदी जी ने सूरत एयरपोर्ट को नया बनाकर इंटरनेशनल का दर्जा दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार के इस कदम से सूरत के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि सूरत से दुबई, शारजहां की फ्लाइट शुरू होने से सूरत शहर को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली है, उसमें सूरत को भी बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली और सूरत का 6 लेन हाईवे जो सूरत होकर गुजरता है, उससे भी सूरत का विकास को बहुत फायदा मिलेगा। महोदय, हीरा आभूषण व्यवसाय के एक प्रतिनिधि से रूप में सूरत डायमंड बुर्स की स्थापना के लिए मैं मोदी सरकार को विशेष रूप को बधाई देना चाहता हूं। महोदय, हीरा व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र सूरत है। सरकार की मदद से सूरत में डायमंड बुर्स एसडीबी का निर्माण किया गया है। वो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी गर्व की बात है, जो 67 लाख स्क्वायर फुट का बांधकाम, 4500 ऑफिस, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। माननीय सभापति जी, मैं आपसे
अनुमति चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन के सभी मेरे साथियों को सूरत डायमंड बुर्स आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सूरत डायमंड बुर्स रत्न कलाकारों, व्यापारियों और विश्व के खरीदारों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है और इसका उद्देश्य हीरा उद्योग को एक छत के नीचे केंद्रित करके रोजगार एवं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का और सूरत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सूरत को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय महोदय श्री, अंत में मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं और इस बजट के लिए उन्हें बधाई देता हूं। यह बजट हमारे सूरत के साथ साथ पूरे देश के प्रगति में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति जी, फिर से आपका धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। धन्यवाद ढोलकिया जी, आप बहुत अच्छा बोले। पहला भाषण था आपका, बहुत अच्छा बोले। लेकिन ये बताइए, आप किसान हैं या हीरा व्यापारी, क्या है? देखो, नहीं, मैं असल में किसान हूँ। मेरे को खेत में सब कुछ काम आता है, बोना, उसको लेने का, फल करना, नींदना, पारने का, कुछ भी काम। ये सब लोग का जो किसान पर बोल रहे थे ने, मेरे को हंसी आती थी कि उसको देखा नहीं खेत क्या है, काटा क्या है, और सब बात कर रहे थे। नहीं, लेकिन आप क्या, मेरा सवाल, आप किसान है या हीरा व्यापारी हैं? दोनों 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 दोनों। अच्छा, चलो नेक्स्ट स्पीकर इज पीपी सुनील। बुलाया है उन्होंने, आपको बुलाया है अहमदाबाद में। Respected Chair, sir, the Union Budget 2024-25 is a politically biased document, as has been pointed out by many of my colleagues during this discussion. While many gaps can be pointed out in government's approach towards burning issues in our country, like unemployment and price rise, due to the paucity of time, I will keep my intervention focused on my state of Kerala and the injustice BJP government is doing to our people. In financial year 24-25, Kerala will get rupees 24,008.82 crores as its share from union taxes and duties. It should be noted here that Kerala's share is only 1.925% from the total distribution of rupees 12 lakh crores, while Uttar Pradesh will receive almost 18% of the total amount and Bihar will get more than 10%. Kerala will receive less than 2% of the total amount. This is not fiscal federalism, but fiscal terrorism due to faulty policy approach. Further, no demand made by Kerala was met in this budget. While Kerala has the country's highest standards of healthcare, its demand for AIMS in Kozhikode could not be met. Coach factory in Kanjikode, Palakkad district is a long-standing demand from the Malabar region, but we only received betrayals through the budget. Demand for special financial package of 24,000 crores was not considered. It is well documented that Kerala is one of the leaders in social sector schemes. In housing sector, beneficiary in Kerala receives an additional state share of 62.5% in urban regions and 82% in rural areas, in addition to the 1.50 lakh under the PM Awas scheme, so that beneficiaries can build proper houses with rupees 4 lakhs. But funds for their critical schemes remain pending because of union government's insistence on branding their name.
Despite this financial embargo, Kerala ranked top in Niti Aayog's index on sustainable development goals with the efforts of our people and the state government, while the BJP's favorite state, Gujarat, ranked on 25th on elementary indicators like hunger. In this context, my sincere appeal to the union government is that they must stop mistreating Kerala when it comes to sharing of resources. I request that pending dues be cleared at the earliest, and serious consideration should be given to special financial package to Kerala, more so in view of the calamity this structure as in Wayanad. Thank you, sir. Thank you. Now the next speaker is Dr. Parmar Jaswant Singh Salam Singh. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on Appropriation and Finance Bill 2024. Respected sir, this is my first speech, so I am thankful to my Prime Minister Narendra Modi ji for allowing me to be a part of this august house. Respected sir, this budget is a testament to our government's commitment for inclusive growth, development, and social welfare. Firstly, I commend the increased allocation for capital expenditure, which will drive growth and will create jobs too. Outlay of rupees 11.11 lakh crore is the significant step towards building a stronger India. The 11.11% rise in capex, it's a welcome step from our government. I also appreciate the custom duty exemption on critical minerals, which will boost domestic manufacturing. माननीय सभापति जी, इस बजट में सरकार द्वारा कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती और उसको प्रोत्साहित करने के लिए देश में 10,000 से अधिक केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। विकसित भारत में किसानों को आधुनिक और विकसित करने के उद्देश्य से अगले 3 वर्षों में किसानों को उनकी जमीन के डाटा को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति जी, सरकार द्वारा वुमेन लेड डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में की शुरुआत की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो प्रोडक्ट्स होती है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनके लिए नई योजना लाने की घोषणा भी की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आर्थिक गतिविधि करने वाली हमारी माता बहनें और उनकी जो उत्पादों जो है उसके लिए एक व्यवस्थित बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इसके सिवा हमारे माननीय वड़ा प्रधान के नेतृत्व में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक स्किल डेवलपमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचा है। अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत अगले 5 साल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 1 करोड़ से अधिक घर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में देश के प्रमुख शहरों में 100 से अधिक साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड बाजारों को भी विकसित किया जाने का है। महोदय, सरकार द्वारा देश के नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली प्राप्त करने की रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बजट में लगभग
3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रिस्पेक्टेड सर, मैं गुजरात को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं गुजरात के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने गुजरात में अनेकों विकास कार्य किए हैं। गुजरात को देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रदान की है। वर्षों से गुजरात को सरदार सरोवर बांध की प्रतीक्षा थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही पूर्ण की गई है। गुजरात के पिछड़े इलाकों में से केवड़िया में, जो कि एक पिछड़ा इलाका है, ट्राइबल एरिया है, उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी अद्वितीय मूर्ति को खड़ा कर वह विकास की अनेकों संभावनाओं की विकास किया गया है। गुजरात के राजकोट को सरकार द्वारा एम्स की सौगात दी गई है। गुजरात की मुख्य भूमि बेट से द्वारका द्वीप को जोड़ने के लिए सुदर्शन हेतु का निर्माण किया गया है। महोदय, दिल्ली से मुंबई के बीच उसके बीच बने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा भाग भी गुजरात से ही गुजरता है। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत PMJY योजना के अंतर्गत करीब 1,95,00,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय सभापति जी, अपने इस बजट के भाषण में और बजट के ऊपर जो चर्चा हुई उसमें हमने अपने सदस्य प्रतिपक्ष के जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने बात की गरीबी पे, रोजगार पे, सोलर समस्या पे, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, सब पे चर्चा की। लेकिन ये गरीबी आती कहाँ से है, उसका हल क्या है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव सबको मिला के कैसे हमको इस गरीबी को देश से हटाना है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। विरोध पक्ष में बैठे हैं तो सिर्फ विरोध करना, यही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि मैं उनको एक दार्शनिक भी बताऊंगा, एक सेंसिटिव भी बताऊंगा और एक विजनरी लीडर भी बताऊंगा। उन्होंने अपने जो प्री पॉलिटिकल एज में, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं इतने एक्टिव थे, तब गुजरात के गांव-गांव में घूमे हैं, देश के गांव-गांव में घूमे हैं, वहाँ गरीब लोगों के बीच में बैठे हैं, उनके साथ खाना किया है, खाना खाया है, उनके साथ चर्चाएं की है और गरीबी की जो रूट कोज है वो रूट कोज को ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे डॉक्टर में गरीब इंसानों को करीब से करीब मैंने देखा है। जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही हमने सिकल सेल के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की। अपने 17 स्टेट्स के अंदर सिकल सेल डिसीज इज़ वेरी कॉमन, इट्स मोस्ट प्रिवेलेंट डिसीज एंड मोस्ट डेडली डिसऑर्डर। तो उसका एग्जांपल देते हैं, यदि एक फैमिली के अंदर एक मेंबर को सिकल सेल होता है और उसको क्राइसिस में चला जाता है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको बहुत सारा खर्चा होता है, कभी कभी तो उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यानी कि पूरे ब्लड को एक्सचेंज करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में यदि मिडिल क्लास फैमिली या लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाला कोई भी फैमिली चला जाता है हॉस्पिटल, तो उसके एक तो आमदनी कम हो जाती है, साथ में वहाँ से खर्चा भी आ जाता है, और तभी कभी कभी तो कोई पेशेंट अपने गहने बेच देता है, खेतर में खड़ी फसल भी बेच देता है, कभी कभी खेत भी बेचने का नौबत आ जाता है उनको। तो उसी कंडीशन को देखते हुए हमारे सेंसिटिव और विजनरी प्रधानमंत्री जी ने ये जो PMJY योजना, प्रधानमंत्री अपना जो स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसको लागू किया, और इसकी वजह से और साथ में हमारे गुजरात के अंदर माँ अमृतम कार्ड चलता है, मुख्यमंत्री अमृतम कार्ड, ये दोनों मिला के कम से कम 10 लाख रुपयों की सहाय मिलती है। तो ये जो रूट कोज है गरीबी का, तो ये जो विशियस साइकिल है, यदि वो एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में दाखिल है और वो इसी वजह से गरीब होता है और ये विशियस साइकिल चलता ही रहता है, और इसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली भी BPL में चला जाता है। तो आज मैं एक बात कहने को मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे जो 25 करोड़ लोगों को जो BPL से APL में लाए गए हैं प्रधानमंत्री के प्रयत्न से, तो उसका एक मेजर जो रूट
एडवांटेज जिससे मिला है वो है PMJY योजना। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने 55 करोड़ लोगों को PMJY के तहत ज्वाइंट किया है। तो मेरा मानना है कि BPL से APL आने वाले लोग 25 करोड़ नहीं लेकिन 55 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि इन सब के लिए ये गरीबी के गर्त में जाने से बड़ा प्रधान श्री ने उनको रोका है। तो मेरा ये मानना है कि हमें न सिर्फ इस बीमारी के बारे में, ये सिकल सेल तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ऐसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपरटेंशन जैसे अनेक बीमारी है जिससे ये लोग जो मिडिल क्लास वाले हमारे जो भाई बंधु हैं वो गरीबी में चले जाते हैं। तो हमें उनके पर भी ध्यान देना है। और पॉपुलेशन कंट्रोल ये सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको मिलके पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश को प्रगति के नए सोपान तक ले जाने के लिए हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। ऐसा बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर पमा। नाउ मिस्टर महेंद्र भट्ट। माननीय उप सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं और मैं वित्त मंत्री जी द्वारा जो विधेयक के संदर्भ के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, देश का विकास आज भाषणों से नहीं होता है। आज देश का विकास देश का नागरिक अपनी आंखों से देख रहा है और मैं कह सकता हूं कि पहली बार इन 10 वर्षों में जनता को लगा कि देश के अंदर देश का मुखिया अगर किसी बात को बोलता है तो उस कार्य का शिलान्यास भी करता है और उस कार्यक्रम का लोकार्पण भी करता है। मैं 10 वर्ष के पहले के भारत के दृश्य को भी समझता हूं। मैं उस कालखंड को भी समझता हूं जिस कालखंड में लोगों को पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं हुआ करती थी। मैं उस कालखंड को भी समझता हूं जब 1 आना 2 आना चलता था, रुपए की वैल्यू थी, लोग श्रमजीवी होते थे। उस कालखंड में अगर जिनके पास 60 वर्षों तक शासन रहा, अगर उन्हें देश के विकास के लिए कुछ करने की उनकी क्षमता होती, कुछ करने का उद्देश्य होता, तो आज जिस परिदृश्य में, जिस स्थिति में देश की आज गरीबी की चर्चा हो रही है, शायद उस दिशा से हम बहुत आगे निकल गए होते। मैं जानता हूं कि विपक्ष को भी सुझाव देने का अधिकार है और मैं इस बात को भी जानता हूं, विपक्ष ने महसूस कर लिया होगा कि जिस प्रधानमंत्री को देश ने तीसरी बार निर्वाचित किया है, एक एक सुझाव विपक्ष का इस बात के लिए द्योतक है, इस बात का संदेश है कि वो भी चाहते हैं आने वाले समय में मोदी जी लगातार देश का नेतृत्व करते रहें। इसलिए उनके सारे सुझाव भी हमारे सरकार को बल देने वाले हैं, इसलिए मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। महोदय, मैं जानता हूं कि ये देश अनेकों वर्षों तक गुलाम रहा, गुलामी के अनेकों कारण रहे होंगे, लेकिन यह भी सत्य है गुलामी के से पहले मेरे देश का जो परिदृश्य था, मेरे देश के अंदर जो भाव था, आज भी मैं कह सकता हूं कि अगर ये कहा जाता था कि दूध की नदियां बहती हैं, देश के अंदर हर प्रकार की संपन्नता है, तो मैं आज भी कह सकता हूं अगर हृदय से देखा जाए तो भारत का प्रत्येक नागरिक आज भी भावनात्मक रूप से उस दृश्य को जब ध्यान करता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, वो आज भी संपन्न है। ये ठीक है कि आज बजट के उन सारे पहलुओं पर आज वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रस्तुतियां रखी हैं वो आज के परिदृश्य में रखी हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में रखी हैं। हमने विश्व के आगे अपने को स्थापित करना है और विश्व का स्थापित करने के लिए देश की जो पॉलिसी है, देश का जो अर्थतंत्र है, उस पर एक प्रकार से गुणवत्ता सुधार होना चाहिए। देश में मैं आज कह सकता हूं कि बजट अगर सर्वव्यापी से चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उस पर बहुत ध्यान दिया गया। आज देश की सड़कों को देखिए, इसकी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने। कभी बिहार के अंदर चर्चा होती थी सड़क हमको हेमा मालिनी की गाल जैसी नहीं चाहिए, यह चर्चा थी, लेकिन मैं आज कह सकता हूं देश के अंदर अगर सड़कों का जो स्वरूप बना है उस स्वरूप की अगर चर्चा करेंगे तो अच्छी सड़कें बनाने का श्रेय अगर देश के अंदर किसी सरकार को जाता है, किसी प्रधानमंत्री को जाता है, तो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। मैं जानता हूं अनेकों बाईपास बने हैं, आजकल अच्छे पुल बने हैं, 8-8 लाइनों की सड़कें बन रही हैं और ये गति लगातार चल रही है। और मैं तो बहुत सीमावर्ती
राज्य से आता हूं, वहाँ ऑल वेदर रोड ने जो स्थान अपना बनाया है, आज उत्तराखंड की हर सड़कें इस प्रकार की हैं कि हमारी हर वर्ष की यात्रा उस दृष्टि से बढ़ रही है। दूसरा विकास का क्षेत्र होता है शिक्षा का क्षेत्र। माननीय उपसभापति महोदय, मैं बता सकता हूं आज सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछली बार से 1.3 लाख करोड़ अधिक है। इस बात का संकेत है, क्या ये ठीक है कि देश के अंदर 74% शिक्षा आज पूरे देश के अंदर हो चुकी है, उसमें कुछ 82% पुरुषों की शिक्षा है, 65% महिलाओं की शिक्षा है, और केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे राज्यों ने 90% ज़्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ाया है। लेकिन मैं जानता हूँ पहली बार देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई है। ये शिक्षा नीति जहाँ रोजगार परक शिक्षा नीति है, वहीं ये तय हुआ है कि भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसको कठोरता से लागू करने का काम किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। स्वास्थ्य एक बड़ा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ, पहाड़ का व्यक्ति हूँ। हमारे यहाँ अगर पलायन होता था, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क के लिए होता है। और आज मुझे बताते हुए खुशी है महोदय, अधिकतर जनपदों के तो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जब इस बात की चर्चा देश का मुखिया करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो दूर दराज के कोने पर रहने वाला वो नागरिक इससे कितना लाभान्वित होगा, आप सोच सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि 70 वर्षों में केवल 7 एम्स, और आज 23 संख्या हो गई है। इन 10 वर्षों में 16 नए एम्स खुलना, ये इस व्यक्ति का विजन है। इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। हम लोग जानते थे आयुष्मान कार्ड चर्चा का विषय होता था, रोज गरीब व्यक्ति में पैसा नहीं होता था, कर्जा लेकर इलाज करता था, गरीब को कोई कर्जा भी नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में अगर आयुष्मान कार्ड की योजना पूरे देश के अंदर, मेरा राज्य तो उन राज्यों में है कि हमने एक एक नागरिक को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। रक्षा बजट, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरे उत्तराखंड के एक एक गांव के अंदर एक एक सैनिक है, हर परिवार में एक सैनिक है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों के अंदर सैनिकों के सम्मान का जितना काम प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में हुआ है, वो ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज पहली बार हम अपने सारे इक्विपमेंट्स, सारे आर्मी के संसाधन अपने देश में कर रहे हैं। आज तक जितना भी सामग्री खरीदी जाती थी, एक प्रकार से भ्रष्टाचार की उसमें बू आती थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमने अगर किसी देश से सामग्री भी ली होगी तो हमने तकनीक भी ली होगी, और आज मेरा देश सैन्य सामग्री, हर सामग्री को बनाने की स्थिति में है। मैं मानता हूं कि आज अग्निवीर की बड़ी चर्चा हो रही है, और मेरे उत्तराखंड के अंदर अग्निवीर के रूप में अनेकों युवाओं ने किया है। 17 साल का युवा 21 साल तक अग्निवीर रहेगा, देशभक्ति का भाव आएगा, सेना युवाओं की दिखाई देगी। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार 21 साल के बाद ही तो सब रोजगार ढूंढते हैं। और मुझे कहते खुशी है, मेरे राज्य उत्तराखंड ही नहीं, अनेकों राज्यों ने तय किया है कि ऐसे अग्निवीर के 25% युवा सेना में सीधा भर्ती होंगे, वहीं 75% जो युवा हैं उनके लिए हर राज्य सरकार ने दरवाजे खोले। क्यों ना खोले, राज्य सरकार की हर डिपार्टमेंट क्यों ना खोले, क्यों देशभक्ति के भाव के साथ जब सेना की ट्रेनिंग लेकर आएगा, उसका राष्ट्र भाव होगा, देशभक्ति होगी, देश भाव होगा। हर राज्य चाहेगा ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे युवा को प्राथमिकता नियुक्ति दी जाए। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, वो भी कालखंड में मैंने देखा है जब बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सब बातें हम लोग समझते हैं। हर देश की सरकारें विदेशी एवं घरेलू खर्चों के आधार पर अपने विकास का तंत्र तैयार करती है, और मुझे बताते हुए खुशी है, अगर पूरे विश्व के आकलन से दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो मेरा देश कर्जे के हिसाब से 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अगर देखा जाए जो चर्चा है, क्योंकि आजकल हम सब विषय को समझते हैं, अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, और भारत आज भी कर्जे में 8वें स्थान पर है। मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमने अपनी उस स्थिति को भी कामयाब रखा है। और जहाँ जीडीपी में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी 18.7 आज हुई है, पिछली बार 19 थी। ये विकास की गति को बढ़ाने वाला विषय रहता है। इस बजट में 45,03,097 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें 35,02,136 करोड़ रुपए राजस्व खर्च है, और पहली बार 11.11 लाख करोड़ रुपया ये पूंजीगत व्यय के लिए खर्चा होगा। हम देखेंगे आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश की हर संस्थाओं को अच्छे भवन दिए हैं, अच्छे उसके जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए उसकी चिंता की है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमको मिलेगा। राजस्व प्राप्ति का विषय, आज एक एक व्यक्ति स्वेच्छा से इनकम टैक्स देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ जहाँ हम लोग आयकर से 19%, जीएसटी से 18%, निगम अन्य से 17% और गैर 9% के हिसाब से
हमने जो अपना व्यवस्था बनाई है बजट की, उसमें आज गुणात्मक वृद्धि हुई है, इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। जीडीपी का लक्ष्य 4.9% इस समय रखा गया है, और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 4.5 तक लाने का लक्ष्य रहेगा, और भारत की अर्थव्यवस्था जहाँ 11वें स्थान से 5 पर आई है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं प्रारंभ में कहा प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको क्रियान्वित करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी 30 अंक तक जाएगा। महोदय, मैं बहुत से विषय पर चर्चा नहीं करूँगा, सारे विषय आपके सम्मुख हैं। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सब्सिडी का विषय हो, सरकारी हरित गतिशीलता लाने की दृष्टि से जीएसटी भुगतान पर कम सब्सिडी देने की बात रही हो, बायोगैस की दृष्टि से और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत वाहनों से चलने वाले वाहनों का विषय हो, यह भी देश के लिए आवश्यक है, जिसकी चर्चा पूर्व में दिनों में आई है। महोदय, मैं कह सकता हूं कि आज युवाओं की दृष्टि से अगर मैं चर्चा करूंगा तो हमारे युवाओं को इसमें बहुत सुविधाएं देने का काम हुआ है। युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन लोन में 10 लाख से ज़्यादा का लोन लेने पर 3% सरकार उसको चुकता करेगी। देश की प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप में 5,000 रुपये प्रति माह और 6,000 रुपये की एक मुफ्त किस्त दी जाएगी। प्रथम बार अगर किसी नौकरी लगती है तो उसको जिसका वेतन 1 लाख से कम है उसको 15,000 रुपये 3 किस्तों में EPFO खाते में उनके जमा होगा। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की जो योजना निश्चित की है, मैं कह सकता हूं एक प्रभावशाली कदम रहेगा। और गरीब व्यक्ति से मैं किसानों की चर्चा हो चुकी है, मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा आज किसान को भी लगने लगा है कि अगर मैं अगर समृद्ध किसी राज्य में हो सकता हूँ, किसी सरकार में हो सकता हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। और मैं क्योंकि आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद, अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। श्री जोश के मणि, श्री जोश के मणि। Thank you, Madam. Towards the fag end of the discussion, almost all of my colleagues have talked about or given suggestions of the budget and also the lapses of the budget. I'm not going to repeat again and going into the details what others have said. I directly go to some of the issues or some of the demand of my state, the state of Kerala. So during the year 2014, when the NDA government came into power, my first memorandum was to the health minister, the then minister, Honorable Harshvardhan, Dr. Harshvardhan, seeking for aims in Kerala. And immediately, being a doctor, he said that on the health aspect, in the health sector, Kerala being a model for the nation, and you all deserve aims, and aims will be declared probably soon. And again, he reiterated when he came to Kerala for another function over there, and the press people asked for the aims. He said that the Kerala, they deserve aims, and that will be declared. And later on, we know that the center stage, the central politics have taken in, and the Kerala never saw aims, and it is purely, we know that it was politically motivated. And my request to the government here, that being the Kerala development, model development, especially in the health sector, is a model not only for the state, for the nation, but for the world also. The health workers are known worldwide. So please sanction an aim which is pending for years together. The second aspect, I would like to say that Honorable Finance Minister, she was the Commerce Minister earlier, being the Finance Minister now, she knows the real problem of the rubber farmers. Being a Commerce Minister, she came to Kerala and met the farmers and talked to them for hours together, knows the problem. And mainly, we know that the Kerala farmers are in distress. They are not getting a remunerative price for the natural rubber. Last year alone, there is a 5 lakh ton of rubber has been imported by the companies. But
if you look at the company's portfolio, the company's the annual report, that the turnover is growing, the profits, they're amassing the profit, the share values are going up, but you find that the poor farmers are not getting a remunerative price. It's all depend upon the policy of the central government, especially the import and export policies. Now we find that now with the natural rubber is in high demand, the government have changed, amended the policy, not for the farmers, but the policy has been changed to suit the corporate companies, generally the companies which is related to rubber. Madam, here my request is to give these farmers a minimum support price. As it is, the state government is giving a support price of 180. That should be raised to 250. A kitty should be, a corpus should be made, and the central government support is expected so that the minimum price of 250 per kilo the farmers will get. Third, I would like to raise the point many of my colleagues from Kerala have raised it already, the devastating the landslide which had happened in Wayanad. Wayanad, we know it is a hilly area, it's a tourist spot also, and you find the landslide in everywhere, in all over the country, where we don't expect, but all of a sudden, many places, severe landslides are taking place, especially in Kerala. In 2018, it happened, the flood had happened. 2019, again, flood took place in Kerala. Again, subsequently, every year, flood has taken place, natural calamities have taken place. Now, whatever name you call it, is a national disaster or a very severe disaster, we need a special package. We are given to your favorite, the government's favorite, like the states like Bihar, Assam, all these places. You are given a special package. Similar package we expect for Kerala. So we are at your mercy. See that Kerala is one of the states which in the map, and see that some help has to be given to the farmers as also for the natural calamities which had happened, and also the demand of aims should be executed. Thank you. धन्यवाद. श्रीमती सीमा द्विवेदी जी. धन्यवाद उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ. विद्वान विदुषी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो वित्त विधेयक रखा गया था, उसकी मैं सराहना करती हूँ. महोदया, यह विधेयक 2047 की नींव है. यह विधेयक विकसित भारत का प्रारब्ध है. यह विधेयक आर्थिक क्षमता का प्रतीक है और हर हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर बने, इसका एक संकल्प है. और यह तभी हो पाया जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में काम करने का अवसर आया. उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को हित में रखते हुए जो काम किए, उसका यह परिणाम है कि आज भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है. महोदया, मैं यह भी कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, सेना के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सीमा पर जाते हैं. इससे हमारे जवानों का एक आत्म उत्साह बढ़ता है. इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ. हमने महोदया, जब मैं पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि बहुत दिक्कतें थी, तमाम परेशानियाँ थी. गाँव में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, लोगों के अंदर तमाम दिक्कतें थी. लेकिन मोदी जी ने सबको देखा, किसान को देखा, नौजवान को देखा, महिला को देखा, सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक व्यापक निर्णय लिया. उससे हमारा देश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है. मुझे याद है 1971 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नारा दिया था कि देश से गरीबी हटाओ. गरीबी नहीं हटी, गरीबी बढ़ती गई. गरीबी तो तब हटी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर शपथ ली. और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है, कम समय में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं. इस बात को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. महोदया, आवास की बात अगर मैं आवास की बात करूं, इतने कम समय में इतने आवास बने. और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया
तो शपथ लेते ही उन्होंने 3 करोड़ आवास की घोषणा की, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गरीबी की बात करते थे, गरीबी नहीं हटाए, आवास प्रधानमंत्री जी ने दिया। और अभी कांग्रेस के लोग, हमारे विपक्ष के भाई तमाम आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, तो मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर तूने सोची है किश्तियाँ डुबोने की, तो हमने भी ठानी है आसियाँ बनाने की। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इसको विकसित भारत बनाएंगे। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज हमारे देश में कैंसर एक बड़ी भयावह बीमारी हो गई है। ये आम बीमारी होती चली जा रही है। हमारी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए हम जो दवाएं बाहर से आयात करते थे, खरीदते थे, वो दवाएं बड़ी महंगी होती थी। उस पर लगने वाला जो टैक्स था, हमारी सरकार ने उसको जीरो करके कैंसर की दवाई को सस्ता करने का काम किया है। इससे करोड़ों करोड़ लोगों का फायदा होगा। इस बात के लिए भी मैं सरकार की सराहना करनी चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, तब हमने पढ़ा था कि एक यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु जी, जिन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुझे कोई 100 शिक्षित माँ दे दे तो मैं उसको एक शिक्षित राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आज 100 नहीं, करोड़ों करोड़ महिलाओं को, बहनों को शिक्षित करने का जो आपने काम किया है, आज हमारे देश की आधी आबादी आपको धन्यवाद देना चाहती है। महोदया, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों को लेकर के भी बहुत चिंतित है। किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किसानों की आय में कैसे इजाफा बने, किसान कैसे अपना धन दुगना कर सकें, उसके लिए हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना से लेकर के तमाम योजनाओं को देने का काम किया है। महोदया, अब मैं आपके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमारा विनियोग विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से बढ़कर के 7% के बीच होगी। महोदय, ये भी, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है। इससे भी हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है। राजकोषीय घाटे को 5.1 से नीचे बनाए रखने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक 4.5 तक पहुंचना है। इसमें विकास पहलों का समर्थन करते हुए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन भी शामिल है। महोदया, वित्त वर्ष 25 के लिए अपेक्षित सकल उधारी 16.85 लाख करोड़ रुपए है, जबकि शुद्ध उधारी 11.1 लाख करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी महारत हासिल करी है। अमेरिका को निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में $2.2 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $5.7 बिलियन हो गया है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे इसमें हमारे देश के बहुत सारे लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति हुई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास हो रहा है। पंजीकृत पेटेंट की संख्या 17 गुना बढ़ गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महोदया, बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम, बढ़ती ब्याज दरों और अस्थिर कमोडिटी कीमतों के बावजूद भारतीय पूंजी बाजार वित्त वर्ष 24 में उभरते बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा है। यह मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। महोदय, एक सपना था, जब गांव में कोई व्यक्ति जहाज से आता था, जब कोई फ्लाइट से आता था, तो लोग उसको देखने जाते थे कि फला व्यक्ति तो फ्लाइट से आया है। कोई सोच नहीं सकता था कि गांव का गरीब आदमी भी जहाज़ की यात्रा कर सकता है। लेकिन महोदया, मुझे यह कहते हुए इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण, उनकी नीति के कारण आज हमारे हमारे जो भारत में विमानन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि दिखाई गई है। भारतीय हवाई अड्डों पर कुल यात्रियों की संख्या में
15% वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 24 में 37.6 करोड़ तक पहुंच गई है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज हमारे यहाँ आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर रहा है। आवासीय अचल संपत्ति बाजार में सकारात्मक रुझान संकेत देते हैं कि घरेलू क्षेत्र में पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महोदया, भारत का 57.3 कार्यबल स्वरोजगार में लगा हुआ है, जिसमें महिला स्वरोजगार में उल्लेखनीय बदलाव आया है। ड्रोन सखी, बैंक सखी, स्वयं सहायता समूह इसका एक सशक्त उदाहरण है कि आज हमारी बहनें अपने पैरों पर निर्भर हो रही हैं। महोदया, श्रम बल में युवाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 थी, अब वहां से घटकर 2020-23 में 10% हो गई है। यह इंगित करता है कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी घट रही है। ये हमारी इस बात को ये इंगित करता है। महोदया, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के राजकीय संतुलन में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के बावजूद उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। यह हमारी सफलता है। महोदया, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रतिक्रियात्मक सुधारों में संयम और बढ़ते डिजिटलीकरण के द्वारा संचालित कर अनुमान लाभ के भारत को यह बढ़िया संतुलन हासिल करने में मदद की है। इसमें यह कहा गया है कि वस्तुओं की कम वैश्विक मांग के कारण बाहरी संतुलन पर दबाव बढ़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफ़ी हद तक संतुलित कर दिया गया है। महोदया, सर्वेक्षण में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिन पर अमृतकाल की विकास रणनीति आधारित होगी। महोदया, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहती हूँ, ये जो हमारा वित्त का बजट पेश हुआ है, यह बजट हमको यह दर्शाता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है, बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। और महोदया, मुझे इस बात पे ताजुब होता है, सरकार हमारी है, हमारे देश के प्रधान नरेंद्र भाई मोदी हैं, और विपक्ष जब ये कहता है, संख्या बल की बात कहता है कि संख्या घट रही है, घट गया, ये हो गया, तो मेरे ये एक बात ये समझ में नहीं आती कि हमारी बहुमत की सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, इनमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मैं इनको एक लाइन इनके लिए भी सुनाना चाहती हूँ। इनको लगता है कि वो गांव में हमारे कहावत है ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूंक रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं इनको 2 लाइन बताना चाहती हूँ। कौन कहता है मेरे दोस्त जुदाई होगी, कौन कहता है ए मेरे दोस्त जुदाई होगी, यह अफवाह जरूर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मोदी जी रहेंगे शौक से जनता के दिलों में, इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। और मोदी जी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आज मोदी जी ने काम करके, महोदय मेरा लगता है मेरा समय पूरा हो गया। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इस बिल का समर्थन देती हूं और अपनी विद्वान मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने अच्छा बजट प्रस्तुत करके आपने बड़े परिश्रम से इस बजट को लाया, इससे गरीबों का भला हुआ, समाज के सभी वर्गों का भला हुआ। इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी के विराम देती हूँ। श्री हरीश बीरन। Thank you, Madam. Thank you for giving me an opportunity to participate in the finance bill. Madam, I want to present 4 specific points for the consideration of the Honorable Finance Minister through you. First is about the climate change. Madam, climate change is the biggest threat the entire planet is facing. Global warming is an international phenomenon with local consequences. We have seen local consequences in Wayanad recently. The local consequences can be cloudbursts, it can be changing the course of the river. We have seen it in Uttarakhand, we have seen it in various parts of Himachal Pradesh. Now, as far as Wayanad is concerned, there has been several news reports to discredit Kerala, saying that the environment has been damaged locally. Madam, these are symptoms of a deeper disease, which is climate change. The impact of global warming, which is happening locally. And the problem is a bigger problem, which only the government can address. Issue is global and national, and only the union government can address the same.
It is not enough, madam, to just set up the NDRF and leave it at that. The communities have to be helped. The communities are in dire need of help over there. The consequences are recurring, and therefore, I would request the Honorable Finance Minister that there should be a budgetary allocation for rehabilitation of communities affected by floods, landslides, forest fires, etc. Now, secondly, the second issue, madam, is that normally we ask for allocation of funds to particular ministries. Here, I am requesting the Honorable Finance Minister and opposing allocation of funds to the Ministry of Civil Aviation. Madam, what is the role and duty and public interest of Civil Aviation Ministry? They have got a duty, madam. Under the aircraft rules, Rule 134 actually has a duty set up on the Ministry of Civil Aviation to control the airfares if it is monopolistic, if there is cartelization. Now, madam, I got a reply from the Minister of Civil Aviation that we don't have any control over the airfares. Now, madam, airfares is directly correlated with the public at large. Now, madam, from Kerala to the Middle East, where large number of population are settled over there, for a Cochin to Dubai, 50,000 rupees one sector on one particular day, and a month later, it will be 7,000 rupees. So this is a clear case of cartelization and monopolistic practice, which under the aircraft rules, you have the duty, you have the power to control, which the ministry is not doing. It is not doing anything for public good. Therefore, I urge the Finance Minister not to have any allocation at all to the Ministry of Civil Aviation. Third issue for the Honorable Finance Minister's consideration is about the capital gains and the removal of indexation, which according to me is against the middle class. She has rolled a part of the indexation process, which is welcome, but that will not take care of the entire thing. The removal of indexation totally affects those families which are old family landholders. When they sell, they are paying higher taxes, which is against the middle class. The fourth and the final issue is about the cancer patients, the need for a comprehensive and free care. Madam, the budget actually proposed the removal of 10% import duty on 3 cancer drugs: trastuzumab deruxtecan, osimertinib, and duravilam. All these 3 medicines, interestingly, madam, are produced by one manufacturer, AstraZeneca. Now, madam, will the reduction of duty cut will bring any relief as mentioned in Finance Minister's speech? I quote her budget speech. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties, unquote. Now, madam, one of these medicines, osimertinib, is sold at 1.5 lakhs per 10 tablets, and patients need 1 tablet per day. Patient is to take 1 tablet a day and continue until disease recurrence or unacceptable toxicity. Now, for 3 years, ma'am. The second medicine, it per vial costs around 1.6 lakhs, as a patient needs, just 30 seconds, ma'am, needs it once in every 3 weeks. The third medicine is around 1.5 lakhs per vial. Now, what I'm trying to say is, instead of providing such duty cuts, the government should have encouraged the Indian pharmaceutical companies to produce a generic version of the medicines by removing entry barriers such as patent protection or amending the biosimilar guidelines in line with WHO guidelines. I urge the Finance Minister to take up these proposals. Thank you. धन्यवाद. श्री सामिक भट्टाचार्य. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to participate in this debate. But before participating in this debate, I am paying my homage to Sri Buddhadev Bhattacharya, ex-Chief Minister of West Bengal, passing away today. Ex-Chief Minister. Buddhadev Bhattacharya is known for his simplicity, his simple
lifestyle, is very affectionate to the literature, and during his period, in spite of all his party's reservation, he earnestly tried to industrialize in West Bengal. Respected Madam, I am from the state of West Bengal. When I was a student, we used to hear one slogan, the Soviet Union's economy is the strongest one. 0.45 ruble is equivalent to $1. And what happened in the early 90s, in the glasnost perestroika, after the disintegration, reality comes out. Everybody is talking about कि किसी भी कीमत से ये प्राइस हाइक को रोकना है, टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है, ये अल्पसंख्यक की सरकार है, किसी भी समय टूट सकते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर जो लोग बोलते थे कि पथ एक ही है, वो है क्रांति, हम लोग समानता रहेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। एक समय जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषा बोलते थे, वो समाजवादी आज कहां गए? आज सपा है, बहुत सारे दल। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने का बाद वो सारे का सारे क्रांतिकारी एक नया इक्वेशन में चले गए, वो कास्ट इक्वेशन। आज इतना दिन से डिबेट चल रहे हैं, एक बार भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम किसने लिया? क्या राम मनोहर लोहिया जाति का आधार पर समाज को बांटने का काम करता था? नया शब्दावली आ गया, सोशल कस्मस, सोशल इंजीनियरिंग, उसी का नाम पर सब जाति का आधार बना लिया और उसके ऊपर राजनीति का चर्चा चल रहा है। हम लोग चाहते क्या है? वेदर इट इज अ कमांड इकोनॉमी और मार्केट बोरोइंग पॉलिसी, दुनिया में ऐसा कोई अर्थव्यवस्था अभी तक तैयार नहीं है, ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जिसका पास सारे प्रश्न का जवाब है। देखिए, अर्थव्यवस्था बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारा पृथ्वी का सामने एक चैलेंज है ये, लेकिन उतना मात्रा में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। इट्स अ एकेडमिक चैलेंज टू द इकोनॉमिस्ट, एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज टू द पॉलिटिशियंस। वी हैव टू एड्रेस इट, और ये सरकार वही काम कर रहे हैं। आप लोग चाहते क्या? क्या हम लोग अर्ली 80s का बात भूल गए? कांग्रेस का बेंच से जवाब आया था, करप्शन, व्हाट्स रॉन्ग, इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। प्राइस हाइक, व्हाट्स रॉन्ग, इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। हम लोग क्या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में वापस जाना चाहते हैं? कांग्रेस के अपना पुराना दिन एकदम भूल चुके हैं। आप लोग अगर इसको पूरी नजर डालेंगे तो कौन सा इकोनॉमी का बात कर रहे हैं वो? 1973 to 75, the inflation was more than 20% and growth was 1.2%. In 1979-80, the growth was -5%. इन्फ्लेशन का बात तो आप छोड़ दीजिए। आज आपका सामने जो लोग बात बोल रहे हैं वो क्या चाहते हैं? हम लोग कौन सी अर्थव्यवस्था का तरफ जा रहे हैं आज? फॉर एग्जाम्पल, you cannot complain in the morning about too much of being taken away through taxes, and in the evening about not spending enough on various heads such as education, health and social welfare scheme. Sir, कोविड काल का बाद एक विपरीत अर्थनैतिक स्थिति पर जब ये देश गुजर रहे थे, सारे पृथ्वी का सामने ये देश और चाइना, दो देश है जो प्री कोविड सिचुएशन पे चले गए, अपना जीडीपी को उसी जगह तक पहुंचा दिया। दूसरी शब्द सर ये है
जो लोग आज इस सदन में बैठकर बोल रहे हैं ये सरकार का पास बहुमत नहीं है, चुनाव का नतीजा ये बोल रहे हैं कि आपका अर्थव्यवस्था से जनता खुश नहीं है, आप लोग गरीब विरोधी सरकार है, किसान की विरोध आप लोग कर रहे हैं, एकदम से ही बोल रहे हैं। बहन जी किसका साथ बैठे हुए हैं आप? आज जो वामपंथी लोग कांग्रेस का साथ इकट्ठा बैठ गए हैं वो लोग सारे जिंदगी भर एक ही बात बोलकर आए हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, what kind of economic activities is happening in India, it is entirely US driven. चाहे वो किसान की व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इस देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, we are under severe threat. Everything has been determined by International Monetary Fund. आज एक जगह में आकर बैठ गए हैं। देखिए ये कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इस पर सबसे सीखना पड़ेगा। हम राज्य से कुछ बात लें, सभी राज्य के पास जाए क्या हो रहे थे वहां और क्या नया होने वाला है, सबका ऊपर विषय पे चर्चा होना चाहिए। सर, ड्यूरिंग द की डेज ऑफ इंडियन सोशलिज्म इन अर्ली 1970, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was holding the charge of the Ministry of Finance in 1971. In her union budget for 1971, she increased the highest marginal rate of basic income tax applicable to the income above rupees 2 lakh from 70% to 80%. And with the surcharge of 10%, the highest marginal rate became 93.5%. Her successor, Minister was Sri Y.V. Chauhan. Finance Minister Y.V. Chauhan in his union budget for 71-72 left the basic rates unchanged, but increased the surcharge for income above rupees 15,000 from 10% to 15%. With this increase, at the pinnacle of our socialism, the highest marginal rate of personal income tax became 97.95%. It did not work. Revenue suffered. Following the Wang Chu Committee report, Y.V. Chauhan, as the Minister of Indira Gandhi's Finance Cabinet, he brought down the income tax rate along with surcharge. The highest level was 97 from 0.75% to 77%. This is the situation. लेकिन सर ये बात भी हम लोगों को समझना चाहिए, जो कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम जिस स्टेट से आते हैं पश्चिम बंगाल, ऑफनली दे डिमांड, जो वहां का जो किसान है उसका रोजगार 3 गुना हो गया। और जब आप लोग बोल रहे हैं सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गया, इसी का भीतर एक देश, एक राज्य जिसका पूरा किसानों की रोजगार 3 गुना हो गया, हमको ये चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आप एक टीम भेजिए देखने के लिए क्या हो रहा है बंगाल में, कौन सा चमत्कार कर दिया ये लोग ने। अध्यक्ष महोदय को तो पता ही है, एक बार उसको भेजिए सर, और आप और उस टीम का हेड करके आप इसको जरूर हमारा हमारा जो नेता बैठा हुआ है कांग्रेस का, मेरी तरफ देखिए। नहीं समीक जी मेरी तरफ देखिए। आप ही की तरफ देख ले, बोल रहे हैं क्या? वेरी गुड। अरे भाई 3 गुना कर दिया, हर आपको प्रेस कर रहे हैं, हमको आपको सपोर्ट पे बोल रहे हैं, आपको व्हाई आर यू अपोजिंग, हम तो आपको पास जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे देखिए कांग्रेस का नेता भी हुआ गए, राहुल जी का इतना बड़ा रैली हुआ, रास्ते में कितना बाधा आए, लेकिन एकदम पूरा चुप। हमारा जो नेता है वो सदन में जितना गर्म है, बंगाल में जब जाते हैं उतना ही नरम हो जाते हैं, उतना ही नरम। ना वो दूसरा कांग्रेस नहीं, और एक नाम सर, जयराम जी को तो एकदम आपको भेजना ही चाहिए।
लेकिन जयराम जी अगर जाएंगे तो पूरा सदन का जितना नेता है सब प्रोटेक्टेड रहेगा, कुछ नहीं होगा। जयराम जी को तो बहुत सारे पत्रकार प्रश्न भी किया था। माननीय सदस्य, ये अच्छी बात है कि आपके ऑब्जर्वेशन पर जयराम जी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नो नो, यू आर मेकिंग अ रिफ्लेक्शन ऑन अ मेंबर। हम जयराम जी हम तो जयराम जी को नहीं, because we in this, one second, we in this house are benefited by his presence, and every member of the house has to be here and is friend of everyone, Jairam ji included. So come to the more substantive point. सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जो भी जाते हैं उधर एक ही गाना गुनगुनाते हैं, जे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यही चलते सर। मार हम लोग का है, पूरा सदनों में SC/ST का बातें चल रहे हैं। 165 scheduled caste community people have been of West Bengal have been killed by Tribunal Congress। यहाँ बैठकर बातें कर, जो बजट भाषण में भाग ले रहे हैं, जो SC/ST का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल पे? One second. Yes, no, there's no there. Yes, no, over, ma'am. Oh, please. Yes, ma'am. Sir, you wanted to say something? I had raised my 267 in the morning, sir. You had not allowed. उसके बाद हम लोग 176 उसमें डाले हैं सर, प्लीज उसको अलाउ कीजिए। विनेश फोगत पर सर। Okay. Thank you. Yes. I thought you were taking exception to what he said. सर सभी प्रदेशों से जो लोग आते हैं अपने प्रदेश का बात करके चले गए। लेकिन what is happening in West Bengal right now? The flight of capital is on. जो लोग वह इंडस्ट्रियल किसी भी समिट पर खड़ा होकर बोल रहे हैं, एकमात्र डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान में, उसका नाम है पश्चिम बंगाल, जो हमारा मुख्यमंत्री का साथ बगल में बैठकर ये बातें करते हैं। अब 10 साल से उसका बैलेंस शीट देख लीजिए, सारे का सारे वो पश्चिम बंगाल का बाहर अभी निवेश कर रहे हैं। स्थिति क्यों ऐसा हो गया, इसका ऊपर समझना चाहिए। जितना भी लोग आज यहाँ आकर के SC/ST कम्युनिटी का बारे में बोल रहे हैं, सबको ये जानकारी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस समय जो हालत है, जो लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट, और सिर्फ ये नहीं है, कानूनी स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी निवेश आज पश्चिम बंगाल में संभव नहीं है। Nobody is interested to invest anything in West Bengal. This is the present situation. सर बजट पर बहुत चर्चा हुआ, लेकिन नो इकोनॉमी कैन मूव इन आइसोलेशन। आज 142 करोड़ इस देश की जनसंख्या हो गया। यू हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड इट इज माय honorable member to make a sweeping statement that no one is interested. You are going too far. The entire country is getting investment and West Bengal is part of it. That's what you want to say, ma'am? Yes. Sir, मेरा एक ही बात। She has a right because you have made a reflection of a serious nature. SC/ST की मौत पर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बोले हैं, सब के बारे में हम चाहते हैं, विनती करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट किया जाए। एक्सटेम्पोर बोला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। थैंक यू सर। Please conclude. I'll look into it. What about the population control? ये तो आपकी माध्यम से मैं हमारी देश की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास ये मेरा निवेदन है, जे they should bring a stringent law to control this population. सारी प्रदेशों को पास तो फैमिली प्लानिंग ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हम दो हमारा दो, और बहुत जगह ऐसा भी है, हम दो हमारा दो, लेकिन बाहर से रोहिंग्या को आने दो, ये कितना दिन चल सकते हैं? हम दो हमारा दो और रोहिंग्या को आने दो। पूरा पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी बदल गया।
our internal security a threat. इसका ऊपर तो चर्चा होना चाहिए। कौन सा इतना बड़ा अर्थशास्त्री भारत में आकर सब कुछ बदल देगा? अगर ये जनसंख्या का ऊपर हम लोग अंकुश नहीं लगाएगा, इसका ऊपर तो कुछ करना चाहिए और उसमें सहमत होकर कहना चाहिए। पार्टी का स्थिति का ऊपर उठकर इसके ऊपर कहना चाहिए। ऐसा दिन ज्यादा नहीं चल सकते हैं। सर, अब पश्चिम बंगाल का स्थिति बहुत खराब है। आज जो लोग इधर इस डिबेट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इस अर्थव्यवस्था का बात कर रहे हैं, एक बार जाकर हम तो इसीलिए बोला, हम सर फिर विनती करता हूं, हम जयराम जी का बारे में कुछ गलत शब्द तो नहीं बोला। हम जयराम जी का बहुत आदर करता हूं और श्रद्धा सहकर बोलता हूं, जो सभी का साथ जयराम जी भी चले एकदम। समीक जी, आपके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि आप ही जयराम जी का आदर करते हैं। नंबर 2, हम लोगों ने देखा जयराम जी का नाम ही आदरणीय है। सर एक बात बोलकर हम एक ही शब्द बोलकर हमारा खत्म, एक शब्द बोलकर सर हम ये कर रहे हैं। सर देखिए सर, एक 1 मिनट सर, ओनली सर, प्लीज सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, 7 फेज इलेक्शन था, 4 चरण का चुनाव हो गया। कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान नहीं आया, अचानक फिर में जाकर एक मिनट सर मैं प्लीज आई वांट टू नाउ ओवर प्लीज। थैंक यू, एक मिनट सर, समीक भट्टाचार्य जी, थैंक यू। डोला सेन जी will have the last word. Thank you. Yes ma'am, half a minute. सर फिर हम विनती करती हूँ सौमिक भट्टाचार्य जी को विद ड्यू रेस्पेक्ट हम बोलना चाहते हैं सर थ्रू यू कि मानी बिल पर भाषण अगर हो तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसके ऊपर वो भाषण दे रहा है, ये ठीक नहीं है सर। Bill for introduction, Shri Piyush Goyal to move for leave to introduce the Boilers Bill 2024. Respected sir, with your kind permission, I move for leave to introduce a bill to provide for the regulation of boilers, safety of life and property of persons from the danger of explosions of steam boilers, and for uniformity in registration and inspection during manufacture, erection and use of boilers in the country, and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Piyush Goyal. I move that the bill be introduced. Bill for withdrawal. Shri Kiran Rijuji to move for leave to withdraw the Wakf properties eviction of unauthorized occupants Bill 2014. Sir, with your kind permission, I rise to move for leave to withdraw the bill to provide for the eviction of unauthorized occupants of the Wakf properties and for matters connected therewith or incidental thereto. It is there. Moved? Yes. Motion moved. There are two notices. One is given by Sri Abdul Wahab and Dr. John Bittas, opposing the withdrawal of the Wakf properties, eviction of unauthorized occupants, Bill 2014. The members who are opposing the motion may make brief explanatory statement, very brief. Shri Abdul Wahab. Not present. Dr. John Bittas. Thank you, sir. Dr. John, very brief. Sir, I have submitted the objection under Rule 119. Sir, 2014, this bill was introduced in Rajya Sabha precisely because... Under Rule? 119, sir. 119. It was intended to free the encroachment of Wakf properties.
And if you look at the objectives, these are all model objectives which we should have adhered to. This government deliberately delayed getting the confirmation of the House and the Parliament. Now, sir, this bill is being withdrawn precisely to bring another bill, that is to encroach upon the Wakf properties. Diametrically opposite intentions. And the intention of the government is suspect. They want to create polarization in the society. They want to polarize the Indian people. They want to play politics. And my submission is that Wakf properties, the government has no business to get into that. And the bill which has been circulated is against the spirit of these Wakf properties. They are diluting the Wakf Act. They are trying to bring in non-Muslims into the Wakf governing. They are going to bring in collector to adjudicate on matters with regard to the Wakf properties. I would urge upon the government that at a time when we have so many examples which are coming from neighboring countries, we should be, please, we should be striving to ensure the social fabric of this country remain intact. So, my only request to this government is that, see, the government should learn a lesson from the last mandate which was given to you. The people of this country doesn't appreciate your bulldozer politics. You indulge in bulldozer politics. You try to create polarization. Please. Sir, this is my right. So, my objection to this withdrawal of the bill is that this withdrawal is being effected precisely to bring in another bill to dent the social harmony of this country. I strongly object to this. Thank you, sir. The question is, the leave be granted. Oh, sorry. One second. Leader of the House, what your member is talking by sitting in the chair? Samik, sitting in the chair, you are speaking. This is not appreciated. Never ever speak without permission, and that also after permission while standing in your own chair. Thank you. Shri Abdul Wahab. Thank you, sir. You were not here. Just gone to toilet, sir. Just. And I thought that our. But I hope you did not hurry up. Okay. And I'll tell you why. When Dr. John Brittage is on his legs, you need not hurry up. Brittage the chair has to look at the clock. Our concern is. Yes. Our concern is this withdrawal of the bill only. You are talking. He is talking about the new bill which is supposed to come. It is already gone to JPC. This one withdrawal of this one bill. Why we are opposing is the clauses which was in that bill. It was just against the bill which is supposed to come, which you are already circulated. The power to vacate or these Wakf properties, it was stringent in that bill. That is why we are opposing that one. So to get new bill, you have to withdraw the other bill. That is technical. But the recommendation in that one, the bill, previous bill, that is you are going to withdraw, which is already was in this Rajya Sabha. So that one, when you make this new bill, you should consider what was there for the benefit of those who made the property under Wakf. Why we are making our property under Wakf? To get the benefit for what is our purpose. I may be giving my land to purpose for something of my concern, my community or my family, whatever it is. But later, after some years,
it is going to somebody's hand. For some reasons, maybe maybe in our place, Hindustan, Malayalam and all, they are keeping the Wakf properties for a mere rent of 3,000 rupees, 2 acres in Calicut city. So these are all happening. Such a bill, what is happening is, before it was, now stringent action was there. We can evacuate these people and we can give somebody for the benefit of the people, those it was for Wakf. So now, in these circumstances, we fear that withdrawing that bill, that you are going some plans behind. So that plan came open when our minister circulated the bill. That in that bill, that is why we are, John Brittas is comparing with that one. So the idea of withdrawing this bill is to make a new amendments, which already we know, whether it is going to JPC or not. The intention of the bill is not clear, it is clear, but it is not for a good intention there. Niyat nahi. Whatever motives they got. But you are getting, Minister Ji, don't get provoked of all this one. You are, okay, let the chairman interfere in that. Through you, I am just requesting our feelings to Kiran Rijiju, Minister, that in the JPC, when it is coming, you should reconsider the bill which you circulated. When you are repealing or withdrawing the old bill, you just see what is the differences. Don't give all the power to just a IAS officer. That is our sincere request to you. I am not going wild and all, telling peacefully. Our community, they got a lot of fear. That you should have to understand the feelings of 30 crore or whatever. I don't know the new census. Thank you. Whatever it is, that's why it was subject to correction by John Brittas. Thank you. Okay. Thank you. I don't know the exact number. Thank you. Please consider the question is. Thank you. That leave be granted to withdraw the bill. Those in favor, I would have accommodated, but notice was not given by you. And rules allow everyone to give notice. I had only 2 notices. Next time be careful, vigilant. Against the rules, not in a second. Within the rules, I can moderate the time. The question is that leave be granted to withdraw the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Kiran Rijiju to move a motion under Rule 117 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. I move that the debate on the Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 16 by Sri Javed Ali Khan, and the discussion be adjourned for a day allotted for private members' legislative business bills during the next session of Rajya Sabha. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Shrimati Nirmala Sitharaman to reply the combined discussion on Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 and the Appropriation Number 2 Bill 2024, which was completed yesterday, and the discussion on the Finance Number 2 Bill 2024. Honorable Finance Minister. Thank you very much, sir. So have you, just as you've rightly pointed out, it is a reply which is addressing those
points which have been raised during the debate on 3 different bills. One is the Jammu Kashmir Appropriation Bill number 3, and also the Appropriation Bill number 2, which has come from the Rajya Sabha, together with the Finance Bill 2024. So the Appropriation Bill of the Union Government and also of the Union Territory has been discussed since yesterday. I will respond to individual members who have raised their views on the subject. But broadly, keeping in line with the vote on account budget which was passed in February, the budget of 2024, presented on July 23rd, 2024, highlights and continues the feature that capital expenditure will be sustained, as was indicated earlier, at 11.11 lakh crores. And this will include 1.50 lakh crores, which will be given as capital assistance for the states, financial assistance to the states for capital expenditure, which is interest-free for 50 years. So actually 11 lakh crore itself is a big number, but if we look at the effective capital expenditure, that is, when our capital expenditure and also the money given to the state as grant and aid for creating capital assets, in our accounts it doesn't get counted as capital, whereas in the states it gets counted as capital. So if I were to look at both the capital assets, therefore, effective capital expenditure can be pegged at 15.02 lakh crores or 18% over 23-24. So we are continuously, since after COVID, emphasizing and spending higher and higher amounts in capital expenditure, partly answers the questions which was raised by Jairam Ramesh later. I have 4 issues, you answer on them. One of this, he probably implicitly agreed that this is one engine which is anyway happening. But that engine is happening in full throttle. And as a result of which, it has a bearing on the private investment, on consumption, and in a way also helps in pumping exports. So this one big engine consistently between 2020 and today, increasing more and more amounts, actual growth between one year and the other is also on a higher graph. So it is important that we've recognized that in an economy which is COVID affected, and that in an economy which requires to stand on its own, considering the global challenges which are mounting each year. Since after COVID, you had one war, then a second war, and both the wars have not abated. Then you have a problem in the Red Sea. Then you also have a problem of the global currency markets, and also the Japanese carry trade business, which has affected the trust in the global markets and so on. All of this are growing in the number of challenges that India has to face. We can always say global challenge and leave it at that. But each one of the challenge has an impact on India. And despite that, since after COVID, with this emphasis given on capital expenditure, whose multiplier effect, whose traction is so much in the economy, which is an established theory that you spend on capital and you reap the benefit of sustained growth. Whereas if you spend on revenue, you don't get that kind of a return. That is what is the multiplier effect. And that multiplier effect has sustained India as a fastest growing economy continuously since after COVID. And we shall be the fastest growing economy even this year. And that's not just me saying, global observers have said.
So this route that Prime Minister Modi has clearly identified has one of the very tested, fine route for countries like India is standing by us in not only meeting domestic challenge of reviving the economy after COVID, but meeting the global increasing number of challenges. So I want to clearly place emphasis on this. And in that, we are not doing it all on our own. We are making states also take up capital expenditure by giving them interest-free 50-year loans, which eventually will be treated probably as grants only. So states are now being able to strengthen their capital expenditure, and many states are completing long-pending projects or taking up newer projects, as a result of which economy around it is getting enough traction. So I want to, while saying that, I also want to clearly put on record that the total resources proposed for transfer to states in 24-25 is estimated to be 22.91 lakh crores. It entails an increase of about 2.49 lakh crores over 23-24. So there is an increase between last year and this is the range at which we are devolving resources to the states. Similarly, outlays for all union territories have increased from 61,118 crore last year to 68,660 crore this year. This is for all the UTs for this year. So I've also announced a slew of measures aimed at adding employment, because employment intensity to India's growth story is a very critical component, and through renewed impetus being given to manufacturing sector. I had detailed the various steps that we had taken for supporting manufacturing sector, but very clearly the manufacturing sector and its contribution, which I'll explain in a minute more, proves that these policies that we have taken up to support manufacturing is actually paying good rewards. So overall, the aim is at boosting domestic employment opportunities, ensuring high and sustainable growth in India's share to the global GDP over the next 5 years. There were a lot of concerns expressed even when we were discussing the budget speech, general discussions, about have you cut down on resources being given to the social sector? I would want to take this opportunity once again. I did it last time. I'll say it now as well. I seek your permission for it, sir. Agriculture and allied sectors. We have not cut down. On the contrary, more is being given. 1.44 lakh crores was the allocation last year. This time it's gone to 1.52 lakh crores. 8,000 crore more than the last year. And 1.22 lakh crore more than the BE of 13-14. Education, employment, and skilling, very important sector, sir. 85,000 crore was the allocation in 2013-14. Last year it was 1.20 lakh crore. This year it is 1.48 lakh crores. So 23% more allocation, that is 28,000 crores more than the last year. Women and child girls. I did hear quite a few honorable members speak saying allocation for women is not substantial. I'm afraid not, sir. It is substantial. 96,000 crore it was in 2013-14. Last year it was 2.31 lakh crore. This year it is 3.27 lakh crores. 41% more allocation, or 96,000 crores more than last year. So rural development, including infrastructure, had 87,000 crores in 2013-14, whereas last year it had 2.38 lakh crores. This year it is 2.66 lakh crore, 11.7% more allocation, that is 28,000 crore more than the last year. Urban development, sir, which is important for many of the cities which expect to grow because the population is also growing in them. 12,000 crores was the amount in 2013-14. In 23-24, 76,000 crore. Now it has gone up to 83,000 crore, 7,000 crore more than the last year.
Health and social welfare, sir, on which a lot of members have expressed concern. 72,000 crores it was in 2013-14. It was in the last year 1.43 lakh crores. Now it's gone to 1.46 lakh crore, 3,000 crore more than last year. So in a nutshell, the union budget this year balances several overriding imperatives: growth, employment, welfare spending, capital investments, and fiscal consolidation. We've tried to balance all these without compromising on any one sector, and I'm glad to say, eventually, even on fiscal consolidation, we've kept our word up, the word given in 21, that there will be a glide path for fiscal deficit management, and that has been kept up. We have kept the word, and therefore, the balancing of these very... Honorable members, it is now 6 p.m. If the House so agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till disposal of the appropriation bills and the Finance Bill number 2, Bill 2024, and special mentions. Do I have leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Honorable Finance Minister, please continue. Thank you, sir. So we've tried balancing all these overriding imperatives, and I think if honorable members would recognize that given our constraints, we have tried maintaining the balance, and we've, I would think, succeeded in maintaining that balance. Sir, the creation of the internship opportunities that we've brought in for first-time job seekers and the skill development, I would think, very critical this year, leading towards the first few steps leading towards Vikasit Bharat in 2047. Sir, augmentation of the social sector spending with a thrust on human development and comprehensive social security, particularly for the disadvantaged sections of our society, is something which I'll again draw your attention. So the two guiding principles, if I can summarize it that way, are social inclusivity of people from all strata and equitable development of all regions by adopting a whole-of-nation approach. And that is what I think would address the high aspirations and expectation of our people. So if I can quickly summarize on the budget for Jammu and Kashmir, sir, the important point which I would place on record, which people who have gone through the budget will realize, that the health, fiscal health of the state is coming on the groove from where it was earlier. It required a lot of management by the administration. We have definitely taken the burden of managing the state police's expenditure, and substantial financial support for a state of 17,000 crore in this budget has been extended. As a result of these kind of steps that we've taken, sitting with the UT Jammu Kashmir authorities, I can tell you that the fiscal deficit of the GSDP is estimated to fall to about 3% in 24-25, which is remarkable, I would think, and I would appreciate the officials who are managing the economy in J&K to have completely removed the legacy problems that they had and to get the economy on course. I think they have done remarkable, very detailed, going to detailed kind of a work, and J&K administration therefore requires one word of appreciation from this august House. So broadly with these summary remarks on the appropriation bill and also Jammu and Kashmir, I would like to come to the first section of responding to honorable members who have spoken on the J&K appropriation and also on the appropriation bill of our budget this year, before I talk on the finance bill related observations of honorable members. Sir, Honorable Member Digvijay Singh had raised
quite a few concerns. I can't see him here, but the issues that he raised quite a few points. Largely, I thought were coming from the political interpretation of what he sees through the budget process, but three of which I want to respond to, sir. First of all, he seemed to be impressed by the global hunger index. It is, and I've said this in this House earlier, also in the Loksatta, it's a flawed index. Their calculation is completely inexplicable. They can't stand up and say why it is so for some countries, why it is slightly different for some other countries. If I would just lay the examples before you and therefore say why I am questioning it as a flawed index, that will explain enough to answer Honorable Member Digvijay Singh. So conflict-ridden countries like Sudan, Malawi, Burkina Faso, and Mali are all higher than us in the index. Pakistan too is higher than us in the index. Nothing wrong with countries being above us if they have to be there, and I don't grudge it. But then they are higher than us, knowing very well the economies there have serious basic problems. The index does not explain as to how these countries are higher. And when we say we've taken care of feeding the poorest of the poor and not getting into the numbers because they would say, oh, 80 crore of your people are poor. I'm not getting into that. But ensuring that nobody remains hungry, we have ensured distributing grains for 80 crore people since 2020. And it seems that the global hunger index has not taken that on board. Whereas when people are standing, the poorest of poor people are standing for corn and starch flour in Mali, in queues, and also for atta in Pakistan, that economy seems to be defeating global hunger index lower rankings and going up, whereas we are put somewhere below. So I would want to highlight to Honorable Member Digvijay Singh that you please question based on studies that you do in this country, and we are willing to answer, but this index is flawed. The global hunger index is flawed. Now, the recent report, National Family Health Survey, that is 2019-2021, the nutrition indicators for children under 5-year-old have improved compared with NFHS 4. This is NFHS 5 that we are talking about. NFHS 4, which was the period to which it relates is 2015-16, whereas this one that I'm talking about is 2019-21. Stunting has reduced from 38.4% to 35.5% in India. Wasting among children, wasting has reduced from 21.0% to 19.3%. Underweight prevalence has reduced from 35.8% to 32.1%. These are very, very riveted numbers, which if we have to remove and bring them lower, a lot of effort is required. These are very, very entrenched numbers. But now these numbers are showing that there is a clear sign of coming down. It is because of nutrition reaching these families, and therefore this hunger index has got to be reviewed, and I wouldn't want Honorable Member Digvijay Singh to rely so much on a flawed index. Sir, the next issue that he also highlighted was net financial household savings are lowest. So I want to highlight the fact that country is witnessing a lot of change in terms of smart portfolio diversification. Small savings are also finding portfolios which are giving them better returns. So they may not be sitting in a post office, or they may not be sitting in a public sector bank, a savings account, or small-time fixed deposit. They are finding different portfolios which are giving us probably better returns. Every individual decides for themselves. They're also investing
in property and property improvements. So they may be living in a small house which has a bedroom and a kitchen and so on. Now they are investing in making one more additional room to their houses. So money is going not into the deposit, sometimes it is going for asset creation. Those don't get counted at all. And even better, sir, when we were talking about rationalizing capital gains tax, the number of people who came back to say, why are you now even bringing in a small increase in the surprised when people who told me were very middle class people. I said, futures and options, you'd expect people who have that kind of a disposable income to trade in futures and options. But people have become smarter. They are able to make sense of it. They are better informed, even probably to put money there and get smaller returns for themselves. And therefore today, small saving is alone not the portfolio. People have found different portfolios which are helping them. So I need to highlight the fact that financial household savings today will have to include, when you're counting that, you will have to include the other portfolios which are available for small families. So growth in housing sales in cities has been particularly impressive, indicating that urban households are diversifying the deployment of their savings. In 2023, residential real estate sales in India were at their highest since 2013, witnessing a 33% year-on-year growth with a total sale of 4.1 lakh units in top 8 cities. So people are moving to thinking in terms of having their savings become investment into properties and also into portfolios which give them better returns. So I want that fact to be taken on board by Sri Honorable Digvijay Singh. Third, sir, he spoke about unemployment is increasing, labor-intensive sectors like textile sector is being ignored, which is not the case, sir. And he did say only in this budget you're supporting textiles and leather, but not earlier. That is not true. Quite a few years we've been sustaining our interest and making sure that support is extended through various different ways for labor-intensive sectors. While I can go about telling about what is the periodic labor force survey saying on how the employment numbers are going up, unemployment coming down, but I will use this example of supporting women in the workplace, which we have done, which is showing result. So if women's data is improving, you can safely assume that men's data equally is going up. If I were to say the reverse, it may not be holding good. But female enrollment in higher education has increased by 32% since 2014-15. Women's labor force participation has risen to 37% in 22-23 from 23.3% in 17-18. This increased participation of women in the labor force has reversed the steady decline that was observed during the UPA era. To sustain this momentum, this budget has allocated more than 3 lakh crores to schemes benefiting women and girls. Also, sir, in collaboration with industry, we will set up working women's hostels, establish creches, organize women-specific skilling programs, and promote market access for women SHG entrepreneurs. So, Honorable Member Digvijay should actually look at various different sources before he has reasons to believe what he said, sir. I would direct his attention towards that. So I've tried, therefore, to address issues raised on unemployment by very many different members. I'm not naming them. I have a list here. Social sector public spending. And also, I think even during the budget speech, I did say that concern of few members that attention is going only to some states and not other states. I think I've dispelled that, but these issues have been addressed. Now I come to talking about the finance bill, sir. I'll give a brief opening remark and then go to talking about specific issues
which honorable members have raised. So this finance bill has actually very clear route. It's ambitious. We've tried to create a taxation system that is simple, that is equitable, and easy to administer. The system that recognizes the efforts of the taxpayer in nation building. So we trust the taxpayer, and we want to give him or her a simplified taxation scheme of things. So the revenue proposals which have been brought in here focus on two areas: ease for taxpayers by simplifying tax laws and procedures, and also facilitation for growth and employment. So largely the debate on finance bill has been confined to you're not doing enough for the middle class. So I just want to highlight the specific steps in this budget and also the one before, actually also inclusive of the fiscal measures that have been taken in the finance bill. So in 2023, the slabs for personal income tax were significantly liberalized under the new regime. All taxpayers had a reduced tax liability of up to 37,500 crores last year. This government has again revised the slab in the new regime this time also. And that was explained earlier also. I will recall it. 17,500 rupees is the effective relief for the salaried class. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in this finance bill. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees in private sector, which was missing all these years. Public sector employees had it, but private sector employees will get it now. And public sector banks opting for new tax regime has been raised from 10% to 14% in this budget. So I just want to highlight the fact, sir. Compared with very many developed economies, which have actually increased the tax rates, despite the pressure from COVID times, we have actually reduced the burden on middle class substantially. Effective tax, sir, on an income of 15 lakhs is reduced to 10% in 2023 under the new regime and has been further reduced this year. So I want that number to be clear for people who are earning 15 lakhs since the last budget to this one. The effective tax is only 10%. So this is a clear middle class friendly approach by using the new tax regime. Sir, even as I was coming here, in the afternoon, I had a young journalist tell me, "Ma'am, thank you very much." I said, "For what?" She said, "I got my refund this time within a week." The former CBDT chairman is here, reporting to you, as you said yesterday, reporting to you. Refunds have been systematically in the last few years one of the biggest things which the CBDT has handled. And continuously from last 3 years, we are each year improving our performance. That today, I had this young journalist tell me, I was anyway going to tell the honorable members of this House, that from 93 days in 2013-14, the time which took for refunds to reach people, it is today only 10 days. You pay the tax within 10 days, you get the refund that is due to you. I would also like to remind, sir, from the days of tax terrorism and rent seeking, today we have a faceless regime which has infused confidence in the minds of the taxpayer. And we trust the taxpayer in that he should just fill up the pre-filled forms which comes to him and his returns are filed. We also periodically come up with Vivad Se Vishwas schemes which are aimed at reducing litigation so that all the pending litigation can be cleared and demands also can be removed.
So this has brought relief to a lot of taxpayers, particularly the MSMEs, individuals and small corporations. Sir, this budget, small, old, petty and unverified tax demands of 90 lakh taxpayers were removed from the records as announced in the interim budget 2024. 90 lakh taxpayers pending demands, unverified tax demands have all been removed. Actually, this corresponds to 1.1 crore entities. So that's the kind of relief, and this largely benefits the middle class. Angel tax was removed, sir. I don't need to go into it. It was brought in 2012. We tried doing several things to make it softer rather than that kind of a exploitative tax, which is what was the Congress party's description of angel tax was. They brought it in so they should know about it, and they said it is exploitative. We have removed it. So, sir, we've also announced in this budget a comprehensive review of the Income Tax Act in this budget. It's not going to be forever. 6 months is the time I've given them. Within 6 months, we should have a simplified version, which after due consideration will obviously be brought to this House, and members will be briefed on it, and the approval will be sought. Sir, a monetary limit for filing appeals related to direct taxes have also been enhanced so that small amounts, small demands are not getting too frequently going on appeals. So whether you're going in front of the tax tribunal, high courts or Supreme Court, the amounts have been enhanced. 60 lakh is the amount now, which was earlier 50 lakhs for the tax tribunals, 2 crore for the High Court now, earlier it was 1 crore, and 5 crores to the Supreme Court, earlier it was 2 crores respectively. So this will, I hope, reduce litigation and promote ease of doing business. Sir, there are also one very good news I want to say. As a consequence of the proposed upward revision of monetary limits in Finance Bill 2024, which is what I explained a minute ago, a total of 7,754 appeals, 1,044 appeals pertaining to indirect taxation, and about 6,710 appeals of direct tax are likely to be withdrawn from the various judicial fora, whether it is Supreme Court, High Court, or CESTAT, or ITAT. We are going to withdraw all of them. So that will directly give relief to a lot of small businesses and middle class people. This is about direct taxation, sir. Just quick 2 points on the indirect taxation. On the customs side, we aim to boost domestic production and enhance export competitiveness by reducing duties on raw materials, inputs, particularly for the labor-intensive sectors, so that their products can become cost-effective. Rate cuts on certain inputs for labor-intensive industries, such as leather and textile sector, is also noteworthy, sir. Exemption and reduction on 27 critical minerals, such as lithium, cobalt, etc., have been brought in because we want to strengthen our strategic autonomy. Duty rate cuts on precious metals. That was also one of the questions which some honorable members said, why do you want to cut duty on platinum, and whereas you're increasing it elsewhere? We're not increasing anywhere. But platinum we had to, because it is part of the gems and jewelry trade, which is of a big export earning. So it is not just the platinum, but because it moves along with precious metals, we had to deal with platinum this time. So bringing it down is along with gold, because normally because of certain blending of precious metals, platinum also goes with that basket of precious metals. So on the capital gains, I think much has been said, much has been heard. I just want to say one line. We did receive a lot of representations post our budget, which was presented on 23rd July, particularly for long-term capital gains without indexation, which is what we've brought in at 12.5%. But then, having heard a lot of inputs which have come from people, we have brought in a government amendment and changed that. So the current tax proposal for land and building assets
acquired by individuals and HUF before 23rd July 2024, it stipulates that in the case of transfer of a long-term capital asset, being land or building or both, by an individual or HUF, which is acquired before 23rd July 2024, the taxpayer can compute his taxes under the new scheme, that is 12.5% without indexation, and old scheme 20% with indexation, and pay such tax which is lower of the two. So we are giving the option to the taxpayer. You try working out the numbers through this scheme without indexation, 12.5%, or you go through with indexation at 20% and see which is going to give you the lower rate, and do pay your tax only on the lower rate. So we have given that option to the assessee, and I think this is a very progressive, looking forward kind of a approach in dealing with the inputs which we have received from people. This ensures, sir, that no one faces additional tax burden due to this change. Furthermore, rollover benefits remain unchanged from the earlier provisions. What is rollover benefit? Rollover benefits allows taxpayers to defer the payment of capital gains tax by reinvesting the proceeds from the sale of an asset into another specified asset within a specific time frame. Whether it's another 1 or 2, he can invest, and up to 10 crores that is entertained. So that rollover facility again softens the attempt of tax, the long-term capital gains tax on the middle class. This means homeowners have an option to reinvest their proceeds up to 10 crores in another property without paying the long-term capital gains tax with specified conditions under Section 54. So I'll now come to the much talked about health insurance, the GST on it. I did mention in detail in the Lok Sabha when I spoke about it, but I will say it for the honorable members who have raised it in this August House as well. Sir, it was a bit disappointing to see a matter which is entirely in the realm of GST Council is, sorry? Are you yielding? No, sir. I'm speaking, sir. Sir, actually, it is in the realm of the GST Council. No way by protesting here or telling that the finance minister should do it, the seriousness of what we are talking can be missed out. The seriousness of protest is substituted for reflecting. Sir. In this house, we reflect and contribute. And therefore, I would like to give the facts before this August House, sir. The point is, I had to say this and I will say it. Before GST 2, medical insurance premiums were taxed. I have quite a few voices which tell me, oh, so are you saying it was there then and you won't do anything about it? No. But I need to answer those issues which pretend to believe that it is all a sin which has come after GST has come in. I'm sorry, sir. It existed before GST. Let's address each one of the issues. I'm not here to justify this way or that way. Let the GST Council take a call now that they've heard all of us speak about it. But let us also not look the other way when the facts are before us. GST came in 2017. Prior to GST coming in, every state levied taxes on the premium collected on insurance. Let's concede that first. Let's have that before us. And if it is before us, would you now say, oh, because of GST and Modi brought this, how heartless are you? I'm sorry, hang on. Even in the GST Council after 2017, 3 times this issue was discussed.
31st meeting on 22nd December 2018. Again, the GST Council, which is 37th meeting, which happened on 20th September 2019, and 47th meeting, which happened in June 2022. This issue has been taken up by the GST Council. And who are the members who are sitting in the GST Council, sir? The finance ministers of every state. And together, all the states' finance ministers hold 2/3 voting power in the GST Council, and the central government, with the chair, has 1/3. So the decisions that are taken there are taken with inputs from every state finance minister. They can belong to any party. So my question is, honorable members who protested with placards here, I want to ask, did they write letters to their own finance ministers to say, hey, what are you doing? Why did you not take this up in GST Council? Much before I go to Delhi and scream about it, I want you as a representative of my party running this government in this state to make sure that the GST Council will only take a decision which we want. What stopped any one of them to do that there? To just make sure an opportunity which came by their side because some minister wrote a letter and somebody who was a part of the delegation who, without the permission of the minister, put it out in public domain. And then, with due respects, everybody comes in, inclusive of some chief ministers, to say, oh yeah, I am also supporting that. You should now withdraw it to the finance minister, who's a chair there, all right, but part of the GST Council. I wish individual states, chief ministers or members of parliament write to their respective finance minister and say, go now. Make sure the next GST Council meeting takes this up. No, they didn't do this. हिंदी में जो बोलते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इधर खड़े हो जाओ. और वो निर्मला सीतारामन, वो मोदी जी, ये क्या तरीका है? मिडिल क्लास उनके हेल्थ प्रीमियम के ऊपर अब जीएसटी कलेक्ट कर रही हो, एंड ऊपर से 25,000 crores. No, sir, I am not yielding. I heard all of them. One second. ऊपर से. One second. He has a point of order. Point of order. No. Sir, she's not yielding. She's not yielding. Sir, I'll finish this, and with your permission, I'll hear all of them. With your permission, I'll hear all of them once I finish this. Okay. आधा अधूरा नहीं चाहिए. I'll seek your permission, sir. Sir. If not all, those who are willing to make contribution. Otherwise, we have to hear all of them. I'll leave it to you, sir. Okay. Sir, then there was this whole report which was based on some kind of a parliament reply or RTI or whatever, which got carried in a newspaper also. 24,529 crores have been collected. GST was collected on medical insurance. 24,000. The center pocketed it, was the headline of that news. 24,000? 24,529 crores were collected as medical insurance premium. And this is pocketed by the center. Even today, honorable members, when they spoke, they said, this is daylight robbery. I heard 3 honorable members say, daylight robbery. I want, with due respects, to submit, sir. We may agree with a particular taxation. We may agree with a particular rate in a particular taxation which has been on a particular item, or we may not agree. But that is a constitutional body, as much as the parliament here. They have, in their wisdom, taken a call. We may agree, we may not agree, we may go and say, no, this is wrong, we will reconsider. But to call it daylight robbery, sir, in which their own finance ministers are sitting, sir, and with their signature it has been cleared, sir. Daylight robbery, constitutionally formed GST Council में daylight robbery हो रही है, sir. और वो बात इस सदन में बोला जा रहा है. I'm sorry, we need to look at what is going on. Sir, 24,529 crores have been collected. All right.
50% goes straight away to the states. The rest 50% comes to us. And the rest 50% may say, again 41% goes to the states. So, if I have to bring it down simplistically, if 100 rupees is collected, first 50 rupees goes off to the states. Mera hissa another 50%. Usme se bhi 41% is given, meaning some 21 rupees 09, whatever, let us say, round it to 21 only, if not 22. 50 plus 21, 71 rupees आपके हाथ में रखे हुए इधर बात कर रही हो मोदी सेंटर 24,000 ले लिया आपने मेडिकल इंश्योरेंस let us have some I don't know if I'm using the right word सबर रखें right थोड़ा सबर रखें जी अध्ययन करो जी उसके बाद का बात करो जी मैं जवाब देती हूं अरे आकाश में से उड़ा दिया नंबर और जीएसटी का अलोकेशन किस तरीके से होता है इसको समझना चाहिए सीधा इधर आपके ही फाइनेंस मिनिस्टर को बाईपास करते हुए पूरा पार्लियामेंट के ऊपर हमला पार्लियामेंट कैन नॉट बाईपास जीएसटी काउंसिल एंड से अच्छा they also then some people come saying bring in this finance bill an amendment that this 18% will be brought down constitutional impropriety there is a GST council उनका निर्णय करने वाले वो सब्जेक्ट के ऊपर आप इधर करने के लिए आ रहे हो भाई प्लीज थोड़ा प्रोसेस समझ लें Sir, and I'll humbly submit, sir, not only are the finance ministers of every state is sitting to take the final call on every rate which is determined on items, there is a fitment committee which looks into these things much before it comes to the council before the ministers. The fitment committee is not made up of anybody which we choose. They are officers. It's full of officers. But every state is represented in one way or the other, sometimes some states, some others. This time, the current fitment committee in the GST Council has members from several states and particularly from West Bengal, from Tamil Nadu, from Karnataka. They're all there in it. Fitment committee which decides on the matter of tax rates, before it comes to the GST Council, wherein again ministers are seated. According to you, in this committee, according to you, in this committee, the representation is not of all states, but of some. Selected, it's always in every committee selected states. Selected. And equal representation. And in the current one, they were the members. Okay. No, current one, they are members also. Sir. Okay, I'll give opportunity. So, I'll tell you, Honorable Finance Minister, this is an issue on which there is need to be clarity. You are making a point impactfully and will allow members after you have concluded that you've already and said. Then you'll have a right. That you already said, sir. So, if I've named 3 states, it's not as if I'm ignoring the others. I'll give you the example. Current representation in the current fitment committee has Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Bihar, Haryana, UP, MP, and West Bengal, Tamil Nadu, and Karnataka. Okay, they are so it is not as if it is only some states and some others. And this fitment committee, for all you know, was constituted much before the election results came of the states. That continues. We don't disrupt it. Sometimes it changes, sometimes it doesn't. So the fitment committee consisting of officers are there where every state, most states get represented. In another committee, somebody else, some other states will come in. Rotation. So in other words, sir, I just want to say, another misunderstanding. The central government collects. No, the GST Council collects it. Immediately the amounts are disbursed. And the rest of the amount is according to the tax devolution, it goes. So that is the thing about medical insurance GST. Sir, Member Tanka, who opened the speech, Vivek Tanka, spoke about
railway budget, and since after it was merged, that nostalgia of a railway budget, I can understand that. But I want to give the data for Vivek Tanka's notice that since after the subsuming of the railway budget into the main budget, allocations have not suffered. In fact, it's gone up. 2017-18, sir, post the merger, the actual expenditure budget, the capital separately, is 43,417.55 in 2017-18 crores. 52,837 crores in 18-19. And so it goes. In 2021, it crossed 1 lakh crore. Capital expenditure. I'm not talking about the other. 21-22, 11 lakh crores, something 7,270 crores. Then 15 lakh 9,256 crore. Going like that, today for 24-25, the current budget, it's 25 lakhs to 2,000 crores for capital in railways alone. So the actual is, the previous year's numbers are also there, it gets 99% utilized. So the bringing the railway budget into the general budget has not in any way made railways suffer. Sir, Vijay Sai Reddy, the honorable member, spoke about minimum bank balance. And when the balance, minimum balance has been kept, banks have been collecting penalty from account holders. So I want this to be laid clearly, that the minimum balance requirement does not apply to PM Jan Dhan account holders. It does not apply to minimum basic savings bank deposit that people hold, Jan Dhan account or the basic savings bank deposit. Both of them do not have any basic minimum balance requirement. So if they didn't have, no penalties are levied on them. No charges are applied for non-maintenance of minimum balance by the Jan Dhan accounts. In addition, banks also open basic savings bank deposit accounts where no charges are levied for opening of accounts, and in these accounts also no minimum balance is required to be maintained. Let's be clear. So not small account holders are being penalized for not having minimum balance. That should be clear. There are around 65 crore the basic savings bank account holders in this country, including of 52 crore Jan Dhan accounts. So none of them are, 65 crores are not being touched for penalizing you didn't have minimum balance in the account. So in addition to this, the minimum, the Jan Dhan account holders are also given accident insurance of 2 lakh rupees and also a RuPay card with no additional charge for the RuPay card. Overdraft facility of about 10,000 rupees is also extended to them. Not only are we not penalizing them for not having a minimum balance, but we also give them this facility. So for other types of saving accounts, of course, the banks will decide based on what their boards approve. So they are not the basic accounts, they are not the Jan Dhan accounts. So I just want to highlight it, but for whoever they collect this minimum charge breaching, meaning you didn't have a minimum balance and therefore I'm penalizing you, information on minimum balance requirement is indicated, intimated upfront to the account holder. So it's not as if I can open a non-PM Jan Dhan account, a non-basic whatever account, and then say you didn't tell me but you're collecting minimum. No. Upfront, I'm told your minimum balance requirement is this, you'll have to maintain it. If you don't, we'll penalize you. It is said upfront by the banks. The largest public sector bank, sir, State Bank of India, as per its board approved policy, does not apply any minimum balance charges at all. So let's put this in perspective. So then, Honorable Member Shakti Singh Gohil ji,
had raised this issue about you increase customs on plastic used by common citizens. On the other hand, you reduce customs duty on platinum. On platinum, I've explained as to why the duty was reduced. But I want to highlight the fact that it is not on plastic that we have raised the custom duty. It's not plastic. We have raised it on the commonly used plastic item, BCD, remains unchanged. What has been raised? The basic customs duty has been increased from 10% to 25% only on PVC flex films that are used for making flex banners. Flex banners are made with flex PVC films. Only that has been, the BCD has been increased. Why did we do that, sir? In fact, many states have already banned it. Andhra Pradesh and Maharashtra have already banned the use of PVC flex. PVC flex banners, sir, are non-biodegradable, and they are prone to leaching of PVC into the soil or water, and therefore they release toxic fumes. This we didn't want, and therefore we've raised only on that film, PVC film, which is used for flex. I've explained as to why platinum benefits from a duty decrease. Vijay Sai Reddy also, honorable member, also spoke about the STT rates and reminded that if you had capital gains, there was a promise given once, long time ago when it was introduced, that STT will be now there for some time, but if capital gains is there, STT need not be there. But today, we have kept it there because, one, we are able to trace people who are big ticket spending. It helps in tracking, and it also helps in widening the tax base. Because once you've levied a TDS or a particular tax, then when the opportunity comes to file your return, you'll anyway adjust this and file it. It's not an additional tax. But when you do this, you are able to bring people who are spending bigger amounts into the tax net. And that's why it continues. It's not for revenue considerations so much. Sir, I can't see member Sanjay Singh, honorable member, who raised a lot of issues. But one or two things which I want to highlight, sir. Recovery. He expanded on haircuts, read a list of material. They are not classified material. They come out because NCLT puts it out or the resolution professional puts it out. They come out in public. We don't waive, and these are court processes. NCLT will have to stamp after the resolution professional decides on between the two parties as to how this will be executed. So recovery proceedings are part of a judicial process. The resolution plans are approved by a transparent judicial process. The defaulting promoter are not allowed to rebid for their own company so that we don't have them coming through the back door and getting it for lesser price now. These are all preventing wrong business practices. So I would like to highlight that all the details of the various cases are already available in the IBBI portal. So over and above what he read out, Honorable Member Sanjay Singh can go to the IBBI portal and take all the detail. They are there for everybody to see. IBC actually has brought in a very big shift, paradigm shift, in the debtor-creditor relationship, sir, and it provides for a streamlined one-stop solution for resolving insolvencies, keeping in mind the spirit of IBC, which this Parliament has passed, is not take company towards liquidation, keeping them as going concerns. So when you're doing that, the resolution professional arrives at a number which is going to be helping that institution to run. And let me also say, sir, most of all these are a result of what happened through the phone banking. And we are trying to come and solve these problems so that banks which suffered, the twin balance sheet problem, which was all there between 2013-14, and to an extent even in 15, people telling us twin balance. Sorry, sir. I gave you a good relief. Regarding phone banking, yes, sir. I inquired last time,
But this time I avoided asking about oil bonds. I studied it myself. So that question was not raised, at least from the chair. Thank so you, sir. What are you saying now? This is new. Sir, I'm saying that when companies are on the verge of collapse and an IBC process brings in a resolution professional and decides the worth of the company and then puts it out for bidding or calls for tenders for the company to be taken over, the existing defaulting promoters never given a chance. After which, there are processes, like for instance, banks nowadays go through the process of giving the bad debt with a proper standard operating procedure to a company. The the name is slipping me, sir. It's a company which takes over the bad debt, gives them a paper, and after when it is all sorted out, it is put out on sale, then the bank gets the rest of its due and its account. Till then, if it hadn't happened in a RCL process, if it hadn't happened, the banks would every year have to put money in the name of provisioning till such a time that money is collected. So this myth that is being created, waving off, writing off, no, it is a process through which banks and the burden that the banks have, burden that the banks have to provide for it, will now be actually given away to the NRCL, and NARCL then takes over that company, restores it to some order, and finds a buyer. Then the money is paid back to these companies. If this is not happening, and it is actually going in the name of liquidation, then the professional sits and sorts it out, gets the NCLT to review it, and stamps the amount which has been agreed. So there is no role of the government here. It is a court process. So I want, there are studies done by IIM Ahmedabad, which has looked at 3 years of post-resolution. Their average sales rose by 76%. Employee count recovered, and nearly pre-bankruptcy levels have been reached by most of these companies which were given off like that. Average total assets rose to about 50%, and capital expenditure has increased to 130%. So the resolution that he's talking about, and claiming all this is a huge haircut, I want to please ask honorable member to study what cost this. Then he'll know whether with this resolution we are doing a better thing, or if we had left it high and dry, whether the value of these companies would have been ever realized, or they all would have become junk in a junkyard. What is going to help the economy? We need to understand that. But coming from Honorable Member Sanjay Singh, I am unable to resist the temptation, and therefore I will have to say. Ma'am, help if you can resist. Because if it is temptation, then the best and most wholesome is to resist it. To resist it, sir? Yeah. No, but I would, for the benefit of the House, say it, sir. That yes. Here's an honorable member of parliament who's saying this. I'm not even talking about the present situation in his party, but before they won the election. And I say this with a sense of responsibility and a pain in my heart. Didn't they say they had a sack full of evidence against that former Delhi chief minister, a lady chief minister? A sack full of evidence. We can send her to the jail. That much material I have on her corruption. I want to ask, where is that sack now? Where is that sack full of evidence? It was all false claims. They went on speaking about it and somehow distracted the minds of the people. Today, they are talking about those companies for whom resolution is being made possible so that the economy can benefit. I don't know whether the sack full of evidence was evidence at all. Assume they were evidence. Why are you not using it now? And this party, which Honorable Sanjay Singh represents, didn't do any of that, gave false promises. If anything, I would like to ask him, it's an allegation which is now in the court.
how much loss has the Delhi's government exchequer has faced because of the faulty liquor policy? It is a matter of the court. But I'm asking, you're worried about the haircut. You're worried about how much government of India and the public money is being lost because of the haircut. I'm asking, how much did Delhi government lose because of your faulty policy, liquor policy? So when this is there before honorable member, I would want him to have some kind of a discretion to understand what exactly is going on. Sir, finally, there's been this point about this cancer medicine, about which, of course, even the first speaker, Vivek ji, mentioned. But Harish Biran of the IU, you raised the point about the cancer drugs should be made custom duty free, and all cancer-related machines should also be exempted. I want to say, sir, our approach since 2021 has been that we progressively relieve all the life-saving drugs and medicines which are particularly imported for personal use. We've already exempted all of them. And there are many more steps taken. That particular name, I remember, Zolzengma and Viltipso have been the spinal muscular atrophy, about which Honorable Member Vivek Tanka spoke, have all been now removed from the burden of customs duty, sir. So I suppose with that, I would have addressed most of the issues, except for the 4 questions of Jairam Ramesh, sir. The 4 engines, about which 1 engine I had already spoken. Private investment is stagnating, is his feeling. I want to highlight the fact, sir. Private sector investment has been increasing since the pandemic. It is rising from 3.8 lakh crore in the pandemic year 2020-21 to 4.9 lakh crore in 21-22 to 6.1 lakh crore in 22-23. So gross fixed capital formation, which is an indicator of investment and new value added to the economy, it is expected to be the largest GDP growth driver in this year. And therefore, with a percentage contribution of 44.9%, the GFCF is a real instrument through which we are seeing faster growth since the pandemic induced contraction setting. Also, sir, by private non-financial corporations, the gross fixed capital formation increased from 24.17 lakh crore in 21-22 to 28.95 lakh crore in 22-23. 19.8% increase at current prices. So that answers about one of the engines, sir. The other engine I had already spoken about. I'll talk about the manufacturing in particular. That is by itself, not the, it is part of the engines which have to work. Gross value added at 14.3%. And in that is in February financial year 23, and an output share of 35.2% during the same period. Manufacturing gross value addition grew by 9.9% in 23-24. So the high frequency indicators performance, such as the HSBC India Purchase Manager Index PMI for manufacturing, which has been expansionary for 36 consecutive months, which is 3 years, it is expanding in the expanding territory only. This has to be contrasted, sir, with the situation under the UPA, when manufacturing activity stagnated for 8 consecutive months in 2013, that is May 13 to December 13, it was only in contraction territory. Whereas now, we are seeing for 36 months, it is only in the expansion territory. And it is therefore no surprise, sir, that in the budget speech, interim budget speech of 2014-15, the year when elections happened and the regime was changed, meaning government was changed, the finance minister then had said, and I quote, "Manufacturing is the Achilles heel of the Indian economy. The deceleration in investment in manufacturing is particularly worrying," unquote. That's the quote then. Whereas now I'm showing you
how GVA, PMI, all of them are doing well. So we've also come up with a PLI scheme for 13 sunrise sectors. Even that is bearing results. Telecom, particularly telephone manufacturing, I don't need to elaborate on that, sir. Defense production is another area in which we are really doing very well. Under our government, total defense exports during 2004-5 to 13-14, which was earlier government, was only 4,312 crores, whereas what it is now, total defense export is 88,319 crores for the period between 14-15 and 23-20. The last point, sir, is the private consumption. Is that stagnating? No, it's not stagnating. It is actually, if you take the indicators, sales of passenger vehicles increased by 8.4% year on year. Highest ever mark is 4.22 million. The Indian aviation industry has recorded its highest ever domestic passenger traffic for a half year. Between January and June 2024, Indian airlines, meaning airlines in India, carried 79.35 million passengers. It is also reported that the rural growth, sir, particularly of two-wheeler industry, domestic two-wheeler, because if I talk of passenger vehicles, they'll say, oh, you're talking of SUVs. No, I'm talking of two-wheeler. The domestic two-wheeler industry for the year 24 witnessed a total sales volume of 17.97 million units, reflecting a growth of 13%. Three-wheeler sales, which is largely used by small businesses, registered best ever sales of nearly 6,32,500 units, which is a 57% growth. All this cannot happen if the rural demand is not high. So I think I've largely answered most of his questions. Rural wages are not stagnating. Rural wages rose at about 5% every month year on year, 23-24. Agriculture's wage rates have grown it grew by 7.4% for men and 7.7% for women. So with that, I think, sir, I've answered most of the questions. No, thank you very much. I have taken note of. I'll go. Honorable members, normal practice is that after there is reply, I go to the next item. Since the Honorable Minister has volunteered to respond to the issue related to levy of GST on policies, I will give that extraordinary permission with a caveat that this will not be a precedent. Otherwise, the good gesture of the Honorable Finance Minister will always be a problem for any chair that at that point of time this was allowed. So before I call upon Derek O'Brien, sir, my request is specific pointed issue with respect to levy of GST on policies. Once, no, Arvind. Anyone disturbing, we have reached a consensus outside also. Anyone who disturbs a speaker forfeits several privileges. Please, only Derek O'Brien and the Honorable Minister to respond. No one else. I'll come to you, John Bitas, later on. Yes, sir. You're absolutely right when you said that after the minister responds, extraordinary that the member of the opposition can ask for a clarification. I didn't say that. Let me be clear. Or words to that effect. No, 1 second. Yes, because 1 second. I'll give you. What I said is very categorical. What I say is, number one, this is not a practice emanating from chair. Number two, it does not create a precedent. Number three, it has happened because the Honorable Minister has volunteered. And number four, because the chair has agreed. It does not lie with any of members here. So that is clearly understood. You may now ask
pointed question or questions? Before I ask that, sir, all of us sitting here also indulged for 1 hour, 12 minutes. We made 3 attempts to request the minister to yield, and through you, sir, because the minister did not yield, we did not press for it, we sat down. That was also a precedent that the minister would yield. But, and it's fair enough, she's more comfortable in a flow of 1 hour, 12 minutes. We did not push for the minister yielding, sir. Yes, good. One second. God. No, I love you. In this also, since we are moving in a, one second. Honorable members, since we are moving in a decorous groove, we did excellently. But the best practice still would be that if the Honorable Minister is on legs and someone wants to intervene, raising of the hand is good enough. Standing is against the rules. So you said then you took the seat. So let us follow those. Now, Derek O'Brien can ask what he seeks to ask with the Honorable Minister straight, through me. Through you, sir. Sir, 45 crore Indians, let me finish. I did not disturb anybody. No one can interrupt. I'm here. Thank you, sir. No one will interrupt you. 45 crore Indians we call are the middle class, affected by this 18% GST from health and medical insurance. This is not something which was brought here by Ms. Nirmala Sitharaman this year. I conceded that in my speech. So this is not we win, you lose, we win. No. This was there since 2017 when the shift took place. She said, Honorable Minister. Yes, it was there even before. It is not about what happened before 2014 or not. Whatever be that, it has been brought up this time in Parliament. Unfortunately, the finance minister used a phrase today, but we can maybe consider and remove it, quote unquote, some chief minister. She is more than some chief minister. Sir, some chief minister is a little dismissive, but I'm not making a point because it's not about point. Sir, hear me out. Sir, please hear me. Please. No, honorable members, please. And now please ask the question. Right, sir. Ask the question. So for these 45 crore Indians who want this to be taken out, which was there from 2017, this is our first point. We also know a little that this can't be done in Parliament. It has to be done to the GST Council, and that's my point. And that is where the minister has told us the composition of the GST Council, which we are also aware. I want to ask the minister with these 3 sentences, is there anything which I'm saying which is incorrect about the GST Council in its present form? 1, the union government has a weightage of 1/3 voting weightage in that GST Council, union government on its own. The GST Council is made up of members, one state representative per state, 1 member per state. My point is, sir, 2/3 of those states are run by the NDA government. Sir, leave these technicalities aside, leave it aside, who wrote, who didn't write. For these 45 crore Indians, please consider removing the health, because it's not only about 1 member, 2 members. Sir, that is one. And the second I'm not even making an issue about was the white paper on my state, because the white paper was not mentioned, so it will remain a blank paper. That's fine. That's all, sir. Thank you. John Bitas, you can answer both together. Yes. Like you have done on the bills. Sir. Both the bills together. Dr. John Bitas. Sir, to put the matter in correct perspective, I will segregate this into 3 points. First is that when you are talking in terms of yielding, there is a practice, sir. 1 second, sir. There is a practice here. Ministers are at liberty to intervene when members are speaking. They're at liberty. But when members wants to intervene, they will never yield. It should be even. It should be even. Take your seat. Sir, first part. One second. Part.
Derek obliged me, you do. I have never, ever interrupted a member unless he has yielded even for ministerial intervention. Intervention by minister or a member depends on the speaker, whether he is a member or a minister. John, now make your point. So you understood and the whole house understood what I meant. Good, fine. Go ahead. Second point is that, see, with regard to petroleum products, we all know that the states have to agree. But minister has made statements that if the states agree, I am ready. In that case, my question to the Honorable Minister is that, what is the perspective of the union government? And the third part, sir, third part is that she made a statement by saying that without the permission of Gadkari ji, someone put out that. Is it the version of Honorable Minister Mr. Gadkari or her version? Honorable Minister, you are requested by the chair, unless you so opt, to respond to the issue raised by Derek O'Brien. Because I had allowed issue related only to policies, and Derek has raised issues directly on policies. Please. John Bittas has digressed. Derek. Sir, the composition of the GST Council is what I said, and that's what was repeated by the honorable member. 1/3 is center, 2/3 is states, and then to say, oh, the states, 2/3 of that 2/3 is all BJP ruled. I've also named, and in the GST Council also, sir, since 2017, decisions except once were all taken on consensus basis. They have never been in a dispute. No state looks at it from the point of view, I come from this state and therefore I can't accept this particular tax proposal. In fact, there the question is, how do we deal with taxation, revenue collection, and not burdening people? That is why, if item by item, I'm willing to sit with any honorable member who wants, or even come to this house, item by item, I will compare with what prevailed as tax before GST and what it is now, to say it is lesser than what it was before GST. So there is no divergence of view in the council, except for once, sir. There has never been this issue of, oh, we all belong to BJP, we are doing one decision, others do. No, we never. And I respect the GST Council for that very good, amicable environment that they provide. So I hope that answers. I shall first put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the schedule eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the appropriation number 2 bill 2024 to vote. The question is that the appropriation number 2 bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 4 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shrimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Finance Number 2 Bill 2024 to vote. The question is that Finance Number 2 Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Motion is adopted. Honorable members, Dr. John Bittas, only one, John Bittas had given amendments to certain clauses of this bill. Yes, sir. Let me first. Since the amendments given by Dr. Bittas could be moved only with President's recommendation as required under Article, take note, 117.1 and Article 274.1 of the Constitution of India, his notices of amendments were forwarded to the Ministry of Finance with a request to obtain the President's recommendation, which is yet to be received. Therefore, the amendments cannot be moved. You can look into the provisions. I can pass on. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 168 and 1st to 6th schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 168 and 1st to 6th schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shrimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Special mentions. Shri Abdul Wahab demand for a national mission on climate change to address the consequences of climate change on people of vulnerable categories and their livelihoods. The changing weather conditions in our country is giving a strong signal to the fact that our climatic conditions are rapidly changing. My own state, Kerala, known for its pleasant weather, has observed tremendous increase in the temperature in the month of February, March and April 2024. The state of New Delhi also experienced a scorching heat wave in the month of May 24 with a high temperature of 49.9 degrees Celsius. As per the Indian Meteorological Department, the average temperature of Delhi has increased 1.5 degrees Celsius. These changes in weather conditions have significant consequences on human beings with respect to their health, well-being, and safety, with extreme events of worsening air quality, changes in the spread of infectious disease, threats to food and water qualities, and affects our mental health. The most vulnerable amongst is the poor, unprivileged, who is homeless, children, pregnant women, old people, and aboriginal tribals. It also had tremendous impact on economic activity too, as they mostly work in the unorganized sectors such as street vendors, gig workers, construction employees. I urge the Union Government to launch a national mission on climate change to study and address the consequences of climate change on people of vulnerable categories and their livelihoods.
This mission should prepare guidelines, policies, and implements welfare measures and affirmative actions for those who are most vulnerable to climatic change and its immediate events such as heat waves, floods, and bushfires. Thank you. Thank you, माननीय अब्दुल वहाब जी। माननीय श्री महेंद्र भट्ट। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिमालयी राज्यों में आपदा मोचन निधि के मानकों में अग्नि से घटने वाली घटनाओं को परिभाषित न करने से राहत सहायता अनुमन्य किए जाने में आ रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, ग्रीष्मकाल में हिमालयी राज्यों में वन अग्नि घटनाएं बढ़ जाती हैं तथा अनेकों परिवार अग्नि के इन घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। इन अग्नि की घटनाओं से जहां इनके पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है, वहीं अनेकों फलदार वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु इन परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। महोदय, अग्नि की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अग्नि को राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में अनुसूचित किया गया है, किंतु मानकों में अग्नि से घटने वाली घटनाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे राहत सहायता अनुमन्य किए जाने में कठिनाई आ रही हैं। अतः हिमालयी राज्यों के वन क्षेत्र से लगे गाँवों में निवासरत लोगों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अग्नि से घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा मानते हुए राहत सहायता अनुमन्य किए जाने हेतु मानक निर्धारित किए जाने की मांग करता हूं। श्रीमती फूलो देवी नेताम डिमांड टू सेव गथवारा, महारजन एंड लेचा द राइस वेराइटीज फ्रॉम एक्सटेंशन। महोदय, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में चावल की ऐसी अनेक प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कागार पर पहुंच गई हैं। एक और सेंटेड चावल जिनमें दुबराज, विष्णु भोग, बासमती, जवा फूल, जीरा फूल, हल्दी फूल जैसी किस्मों की खेती घटने लगी है, तो दूसरी ओर औषधि गुणों से भरपूर देसी किस्म गठवन, महाराजी और लाइचा जो गाठिया रोग, कैंसर रोधी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले और त्वचा संबंधी रोगों की उपचार में सहायक हैं, देखने को भी नहीं मिलते। केवल हाइब्रिड चावल ही बिकते नजर आ रहे हैं। महोदय, कर्ज में डूबा किसान मुनाफे के लिए हाइब्रिड चावल उगा रहा है और सेंटेड औषधि गुणों से भरपूर चावल की खेती नहीं कर रहा है। यदि समय रहते किसानों को प्रोत्साहन पर ध्यान नहीं दिया तो इनका उत्पादन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए, सेंटेड चावल और औषधि गुणों से भरपूर देसी किस्में गठवन, महाराजी और लाइचा को उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, माननीय श्री राजू शुक्ल जी ने सूचित किया उन्हें अनिवार्य काम से भी तुरंत जाना। अगर आपकी अनुमति हो तो उनको पहले हम Thank you, sir. Increase in rate of interest by the Bank of Japan can have a direct impact in Indian infrastructure companies. India has been one of the biggest beneficiaries of the near zero interest rates that existed in Japan. The strategic and friendly relationship between both the Asian powerhouses saw cheap capital available to fund India's infrastructure push in the past 10 years. Moreover, it also pushed Indian companies to raise cheap funds to fuel their capital expenditure in the area of road and highways, power sector, financing and steel. Among these infrastructure firms have been the biggest beneficiary of low cost and loans. The impact of N-carry trade will be felt through currency impact on the loans undertaken by Indian companies. The N-carry trade will also lead to an increase in the debt serving cost of India companies who have raised long-term N loans in the last 10 years, backed by near zero interest rates. It is noteworthy that India is the largest recipient of Japan official development assistance for Delhi loans. From Delhi Metro to India's first bullet train receiving generous loans at low interest rate of 0.1% to 1.8%. The Japanese bank, SoftBank, they also invested in certain companies here. That was a wrong investment for which India is getting a bad name. So that should be investigated by the Finance Ministry. वही टैक्स जाएगा जो approved है. These loans are premised on the condition that India will import technology and metal from Japan
at least 25% railway projects have been tied to these procurement mandate. A rising end would increase the cost of imports and distort the trade balance further. India is net importer from Japan. Government needs to have an action plan to deal with this challenge. I want to know how government is preparing to deal with the increase in interest rate by Bank of Japan that will have impacts on India's infrastructure projects. Thank you. Government, please, जो अप्रूव टेक्स्ट है जो वही उसी से रिलेटेड है, वो रिलेटेड आपने जो कुछ चेंज किया वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा. नहीं जाना चाहिए. As you know, approved text only can go. You know, you handle the chair. माननीय श्री मनोज कुमार झा, not present. माननीय श्रीमती संगीता यादव, demand for uniform curriculum across schools in India. माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं। मैं इस सदन के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब देश के अधिकतर स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई और राज्य बोर्डों से संबंधित हैं और मान्यता प्राप्त हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनके इतने पाठ्यक्रम और किताबें अलग अलग क्यों हैं। एक समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम और पुस्तकों की आवश्यकता है। यह कदम न केवल छात्रों के शैक्षिक अनुभव को समान बनाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। पूरे देश में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुसंगत और समावेशी इस समय बनाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और स्कूलों को किसी भी एक प्रकाशक से किताबें खरीदने के लिए बाध्य माता पिता को न किया जाए। इसके लिए एक मानकीकरण की नीति की आवश्यकता है। जो अप्रूव टेक्स्ट है वही पढ़ें, कोई अतिरिक्त नया शब्द न डालें, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ठीक है, वो गलती से माता पिता निकले। इनके लिए मानकीकरण नीति की आवश्यकता है जो सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम और पुस्तकें लागू करे। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी और राज्यों में एससीईआरटी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समान सिलेबस और किताबें लागू की जा सकती हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश चिकबाराई, कंसर्न ओवर कामाख्या गुरी रेलवे फ्लाईओवर, बीरपाड़ा रेलवे फ्लाईओवर एंड अलीपुरद्वार बारा बाजार फ्लाईओवर इन वेस्ट बंगाल. Thank you, Deputy Chairman, sir. My subject is concern over Kamakhaguri Railway Flyover, Birpada Railway Flyover and Alipurdwar Bada Bazar Railway Flyover in West Bengal. मैं आज कामाख्यागुड़ी रेलवे फ्लाईओवर, बीरपाड़ा रेलवे फ्लाईओवर एवं अलीपुरद्वार बड़ा बाजार रेलवे फ्लाईओवर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सम्मानित सदन के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हूं। ये बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। सबसे पहले कामाख्यागुड़ी रेलवे फ्लाईओवर कामाख्यागुड़ी और उनके आसपास के क्षेत्र के निवासी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस फ्लाईओवर की अधूरी स्थिति के कारण यातायात में भारी भीड़ पैदा हो गई है। इससे यात्रियों को दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित हो रही है। दूसरे तरफ बीरपाड़ा रेलवे फ्लाईओवर एक कार्यक्रम फ्लाईओवर की अनुपस्थिति न केवल स्थानीय यातायात बल्कि वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही को भी बाधित करती है। अंत में अलीपुरद्वार बड़ो बाजार रेलवे फ्लाईओवर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जो हलचल से भरे बाजार क्षेत्रों को जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति ने स्थानीय आबादी को गंभीर ट्रैफिक जाम एवं सुरक्षा के खतरों से जूझने पर मजबूर कर दिया। इस फ्लाईओवर का पूरा होना सिर्फ सुविधा का मामला नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र की सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के लिए एक आवश्यक कड़ी है। मैं सरकार से इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने एवं आवश्यक संसाधन आवंटन करने के लिए पूरे होने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद।
माननीय श्री कृष्णलाल पवार जी, demand for construction of ROB at level crossing number 47 on Panipat Jind railway lines section. धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आज इस सदन में पानीपत जिला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना का मुद्दा उठाना चाहता हूं, जो आसन कला मोड़ माजरा गोली रोड पर गांव खुगड़ाना रेलवे किलोमीटर 62/6-7 पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 47 पर आरओबी के निर्माण से संबंधित है। इस परियोजना का कार्य 21 जुलाई 2020 को आरंभ हुआ था और उसे 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना था, परंतु अभी तक इसकी संभावित पूर्णता तिथि 30 अप्रैल 2025 हो गई है। परियोजना की ए राशि 2,981.51 लाख रुपये और अनुबंध राशि 1,632.82 लाख है। पुल की कुल लंबाई 900 मीटर है, जिसमें 30 मीटर में 9 स्पैन पूरे हो चुके हैं, लेकिन रेलवे हिस्से के 140 मीटर के 4 स्पैन लंबित हैं। परियोजना की भौतिक प्रगति के अनुसार 80% कार्य पूरा हो चुका है। सामान्य स्पैन ठोस हिस्से के सड़क कार्य के शेष कार्य के लिए स्वीकृत अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया है, जिसकी राशि 699.70 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त 591.65 लाख रुपये की DNIT